Hello, hello. Mic test, mic test. Hello, I think we're live. Yeah, we are live. Okay, it's 9:47 right now. We'll wait till 9:50 and then on 9:50 we can start.
Okay, I think we can start. So first of all, welcome back to the channel. This is going to be our first live stream, and today, as we all know, that it's our Independence Day. So India is celebrating its 80th Independence Day. So on account of that, I have created this list, and I have put in around 50 questions in it. And you might be wondering if all of these questions are random. So I could have chosen random questions, but because it's our 80th Independence Day, that's why I have chosen all the Leetcode problems that are divisible by 80. So there are around 4,000 something problems on Leetcode, and I have chosen all the problems that are divisible by 80. So it comes to exact 50. So it is also a good number. So that's why we'll be following this list. Feel free to follow along. I think I have made this list public. Yeah, it is public, so you can also open it. I have already solved some problems previously, but doesn't matter. We'll be solving each and every problem here. So we'll try as many as we can. The goal is not to just solve and submit. The goal is to basically understand it, and we'll also try to do it a little bit fast manner, but also in the way that everyone else can also understand. Cool. So before starting, very happy Independence Day to all of you. If you have any queries before starting, you can put that in the comments. I can see there are some Independence Day wishes. So a very happy Independence Day to all of you. And yeah, I have also put in the link of this problem set in the pinned comment, so you can check that pinned comment, and if there is any problem in opening it, but I think I have made it public, so it should be clickable. But yeah, meanwhile I'll also check. Yeah, Kush, you are not able to open it. No is for. Can you not open it?
Okay, let me try it in incognito. Okay, I can open it in incognito, so it should be working on. Yeah, cool. So I think we can start from the first problem itself, which is the 80th problem, which will definitely be the first one, which is divisible by 80. Yeah, so we'll be reading the problem statement. So I have not prepared anything. We'll be doing all of this impromptu. It might happen that I have previously solved that problem, but I'll read it as I am reading it for the first time. Cool. And if in between you guys have any doubt, you can feel free to put that in comments. I'll be reading it in between. Okay, cool. So first one is remove duplicates from sorted array 2. So okay, before starting, do you guys want me to use English, Hindi or mixed? Can we just quickly have a language check? Like, do you want me to do it Hindi? Do you want me to do it in English or mix of both? Cool. So I think meanwhile I can read the first problem. So we are given an integer array nums sorted in non-decreasing order. Remove some duplicates in place such that each unique elements appear at most twice. The relative order of elements should be kept the same. Since it is impossible to change the length of the array, you must instead have the result placed in the first part of the num. And more formally, if there are k elements after removing the duplicates, it will only read the first k elements and it doesn't matter what is there after k elements. Cool. Return k after placing the final result in the first k slots. Cool. Do not allocate any extra space. You must do it in place. Cool. Okay. So we want to keep at most 2 occurrences of all the elements. So if any element is present basically more than 2 times, all the occurrences that are greater than 2 should be removed. So in the first example, as you can see, there are 3 ones. So it means you know that one of the ones should be removed, and it says ki you should basically keep the order same which is in the original array. So that's why you should always remove from the back. Cool. So we'll be keeping first 2 ones and then we'll be removing this third one, and we don't want any gaps in the array. So that's why we'll be removing in such a way so that basically all the other elements can take its place. And then there are 2 2s, which is fine. There are 3s, and the good thing is that this array is already sorted, because had this array not been sorted, then we would have to think about something else. But because the array is sorted, we know that if there are multiple occurrences of a same element, then all of them should be in the same basically adjacent element. So let's say if we have elements like 1 1 1 2 2 2 2 and then some 3s, then some 4s and so on. So the good thing is ki all the elements that are basically having the same values would be adjacent to each other. So that's how by doing a single traversal we can get to know ki how many ones are there. Had this not been a sorted array, we would not have been able to figure out ki where all the ones are there in the array. So it may happen ki this one is here, the other one is here, the other one is here, and then some 2s are here. Then it would be a slightly difficult problem. But what makes it easy is that all the elements that are having the same value are adjacent to each other. So we know that we can traverse from left to right, and as soon as we found 2 occurrences, that is fine. If we find 1 occurrence, that is also fine.
but as soon as we find more than one occurrences, it means we have to just ignore these elements, because we don't have to delete it. We can just ignore these elements, and later on if we find some other element, we can just put it in place of this element. So basically we just want to ignore these elements and not actually delete it, because the question also says that there are some languages in which the deletion is not possible. So that's why it just asks you to shift all the elements that will be remaining to the left and leave all the places. It won't even going to check all the rest of the places. So that's what you can do here. You can just do a left to right traversal. You can just keep 2 pointers and that should do, I think, because you should be able to like have a track key what is the latest index where you can put any new value that you figure out. So let's say if this is the array that we are talking about, we'll be having one, because we don't have to create a new array, we have to change everything in place in this original array. So that's why we have to, first of all, let's say if there is one, that's fine, the occurrence of one is basically maintained in this position only in the final answer as well. We find second one, that is also fine because 2 ones are allowed. As soon as we encounter the third one, then we can say that because we only care about 2 ones, this should be ignored, but we don't have to delete it. We can say just we will be ignoring it and we'll be moving on to the next element. Let's say if some more ones would have been there, we can just ignore those things, but we should also have track of this, because we are ignoring these elements, but later on we have to put something here, right? Because we can't just leave some spaces in between, because the question says all the elements that are left in the array should be as left as possible. So that's why we also have to have this index stored somewhere, so that once we find out a new element, we should be able to place it on this point, right? So that's why we will be storing it here. So that's why I'm saying 2 pointers, because one is to store that index where the latest element should go, and the other one is to just traverse on and keep on finding new elements. So as soon as we find 2, we can say ki bhai, this is the index that where 2 should belong. So we will be putting 2 here, and then we'll move to the next 2. Again, we already have encountered 1, 2. We'll be getting the second occurrence of it. That's also fine. So basically we'll be moving to the next index, next available index, and then we'll be putting this 2 there, right? But as soon as we get the rest of the 2s, we know that we already have 2 2s secured. We don't even care about all of these elements now. So we can just again move the pointers ahead till we find a new element, and as soon as again we find a new element, we know ki this pointer would always be pointing to where this element can get placed. And as soon as we can just put 3 here, again do the same thing, and using this logic we can easily put, and we are so sure that all the elements that should be in the final array will be as left as possible, because this is how we have kept all of these things. Yeah, right, it is a 2 pointer problem. Yeah, correct. Yeah, so 1 pointer is to just traverse through each and every element, and this will also make sure ki how many basically elements we are already keeping of same type. Let's say if we have already taken 2 2s, then we should be having some mechanism to know that there are already 2 occurrences of 2 that we have already secured. We don't have to secure any other 2s that comes up in future. So that should also be we have to basically to take care of that, and also yeah, by taking 2 pointers I think we can do that. So I think we are good with the approach, and I think yeah, the approach is order of n only, because we will be traversing, both the pointers will be at worst traversing order of n only. So order of n plus order of n, which will order of 2n. So yeah, complexity wise we are fine, and approach wise I think we are also good. So if there is any problem in the approach, you can feel free to write in the chat. Meanwhile I can start coding it up. So yeah, we need 2 pointers. We can take it as I, we can take it as j. So I'll be using I for securing the spot, and I'll be using j for the traversal. So while loop will make sense here. So that's why I'll just keep a while loop. I'll get the n, which is nothing but nums.size, and yeah, so
will be traversing till we figure out the till we basically reach to the end. That's only we have to figure out. And yeah, meanwhile we also need to keep track of how many similar elements we have taken. So what we can do, we can just keep up previous, I think, and using previous we can just compare whether this is equal to the previous element or not. So I'll be taking up previous. Initially we can initialize to nums of I, or nums of 0 rather. Yeah, and count should also be there, because anyways first element will not go anywhere. First element has to be preserved because that's the first occurrence of anything, and we cannot remove the first occurrence of anything. So that's why first element should be there. So we can even start running this loop from the second place only. Yeah, so we can now as soon as we go to a element, we'll first of all compare whether this element is equal to the previous element or not, because let's say we have already processed 2 2's and we reach on to the next element. We first have to compare whether it is equal to the previous element or not. On the basis of that, we'll be updating our count, and once the count has been updated, then we have to check whether it is greater than a 2 or not. And on the basis of, if it is greater than 2, then it means we have to ignore this, and if it is not greater than 2, it means we have to put it in the suitable spot, which is which our I is doing the job. So that's what we need to do. So we can first of all check whether previous element is equals to the current element that we are pointing, and if it is the case, then we will be just doing count plus plus, which means we are increasing the count. Otherwise we can just say ki the count can easily be updated, which is count will be 1, and we can also change the previous element, which is previous should be nums of j. So we are handling, I think, count very well, but the only thing that we need to do now is to actually place that element there. So after we have done count plus plus, I think here we need to check whether the occurrence, whether count is greater than 2. If it is the case, then we can't do anything, we just have to continue. And yeah, else we can just place this element, I think, because this is the correct element. Yeah, so we can just place this element. So I'm thinking of if we can write all of this logic in a common place, because here also we have to do the same thing, here also we have to do the same thing. Yeah, so I think we can take this part out and just put it here. Yeah, because this is the case where we don't have to put it in the right spot. Here we have to do it, and if it goes in the else, then also we have to do it. So we can just write it here, which is nums of I, will be updating that spot, and we'll be putting this current value, which is nums of j. Cool. And then if we have done this, so we'll be increasing I, because we have put an element here. So that's how we also have to update the spot, and we'll be also going to the next element. And in this case also, I think we have to go to the next element. So that's why we will be doing j plus plus here as well. And yeah, I think that is fine. The question is asking us to return the amount of elements that we have placed. So I think I is keeping track of that. So yeah, so I will be pointing to the next possible index, right? So I think we can just directly return I, because that will be the correct thing, I believe. Yeah, so we can try to run. Most probably it should work. Yeah, it is working fine. Let's try to submit it. Yeah, it is getting accepted. So I hope you get what I am trying to explain. So the main thing was that we only care about, we first of all keep track of how many same kind of element we are getting. That's what we are doing with count. And as soon as we
get the information that it is greater than 2, it means we can just directly ignore and move on to the next element and try to take decision for it. And if we realize that we are not in that spot, so it means ki it should go in the correct spot, which is again pointed by I, and we can just directly put this value there. And if we are getting a new element, so then in that case, so we always have to put it basically, because it's the first occurrence of that. So that's why we are doing I plus and j plus here, and we are only doing j plus here. And yeah, that should be it. If any doubt in this one, you can ask, otherwise we can move to the next problem. Cool, I think let's try to read the second problem meanwhile. Meanwhile, you can write in the chat if you have any doubt in this one. Cool, so it's a very classical problem. Are we good with this? Should we move to the next one? Yeah, okay, cool. So let's move to the next one, which is 160, which is the second number divisible by 80. Yeah, so the problem is intersection of two linked lists. So it is a very classical problem of linked list. I don't know why it is marked easy. I think it's because of the constraint. Not because of the constraint, but if you use a space here, then it will be a very easy problem. But if you don't use a space, then the proof of that is not that easy. So yeah, let's try to read this. The problem statement may look a little weird, but the main logic is you are given two linked lists
and there might be a intersection between them. So you have to figure out key what is the intersection point. Let's say here there are two linked lists, so basically you will be getting the head. So if I try to draw something, so you will be getting a head, let's say A1, A2, let's say A1, A2, A3, and let's say the second one is B1, B2 and B3, and let's say B4, and it might happen that there is also an intersection between them. Let's say at certain point they are both different, but in meanwhile they will basically connect to a single linked list, so something like this. So that's what it is known as intersection, which is key why you will be getting these two heads. So you can't just distinguish that these both will intersect in between. So for you it is from the broader view, you will only realize that these are two different linked lists, and there are intermediate node which is basically intersection or common in both of them. So you have to figure out what is the first common node in basically both the linked lists. So that's what you have to do, and this is, I think, irrelevant information for us. So it mainly says how it passes it to the judge, which is the whatever the intersection value that you say, but actually you have to actually return the node. So you will be returning the node of 8, but it is saying what all things will go to the judge as input. So it will take intersection value, a list of both the linked lists, what you have, how many elements you have skipped in A, how many elements you have skipped in B till you reach the intersection. So I think all of these information are not relevant for you. What you should only focus on is that you are getting two head of two different linked lists. You have to just return a single node, which is the intersection. And it has also been mentioned here that there will be no cycle in this. I think I have read it somewhere that there are no cycles in them, because if there will be cycle, you will keep on traversing and you won't be able to figure out the intersection point. That's why there will be no cycle. So if we just try to figure out the simple logic which will hit you in the first second after you hear this problem, is that you only care about if certain node is common in both the linked list. It means कि if you traverse both the linked list, you will be able to figure out the same node in both of them. I am saying node, I am not saying the value, because it may happen that multiple nodes have the same value. In that case, you will not be able to distinguish between two different nodes. So that's why I am saying the exact node and not its value. So how will you basically store the node, or how will you specify that it is a node? Because it has a distinguished memory address. So using the address, you will be able to distinguish that it is a node. And if if some node has same address in first linked list as well, and if you traverse the second linked list and you will find a node with the same address, it means it is common in both of them. So that's where the brute force logic, I think, came, not brute force, but not space optimized logic, where you can do what? You can basically do independent traversal on both the linked list, and because you have to also check whether this has already been occurred in the first one. So that's why you also have to store all the nodes that you have traveled while traversing the first linked list. So what you will do, you will store the address of the first node. You will store the node, you will not store the value. Okay, so you will store, basically you will do the traversal on the first one till you will reach the null. You will do the traversal and you will store all of the nodes. So A1, A2, A3, A4, A5 and A6. All of these are nodes and not the value. And now once you will do the traversal on the second linked list, so you will always check whether this node has already been seen while traversing the first linked list. So if any node returns true for that, ki I have already been seen while traversing for A, in that case you can say that this is a node which is common in both of them, and you are just looking for the first such value, because A4 will also say that I am common in both of them, A5 will also say that I am common in both of them, A6 will also say that I am in common in both of them. But you are only cared about the first value which is common in both of them. So that's why the first time it returns true, you can just directly say that this value is the one that you are actually looking for.
it is actually not that bad of a solution, because the complexity will be, let's say there are m nodes in the first one, the n nodes in the second one, so the complexity will be m plus n, because you are traversing both of them independently. So the time complexity will be something like this, and space will be, because you are storing the node, all the nodes of one linked list, and you are just traversing and checking for the same nodes in the second one. So you can just store for, either you store for A and check for B, or store all the nodes from B and check for A. So you can just take minimum of m comma n, whichever has the lesser node, you can just store those nodes. So just because it is having this space complexity, that's why it is not considered as very optimal solution, and that's why interviewer expects you to give that standard solution which is basically defined for this. But that is very hard to come up with. I don't think anyone can able to come up with that. Yeah, but you can definitely propose this solution if somebody asks, because it is a very like trivial idea which can definitely come up in your mind if you are reading this problem for the first time. And what is non that trivial idea, which is that it is basically an algorithm which says, let's say if this is your linked list, and also there can also be a thought like, let's say if interviewer gives you something like this, B3, and then let's say something like this, A5, then A6. Initially I thought that basically when I used to learn that idea, then I first think about this idea, why can't we just put pointers in both of them and just simultaneously traverse this pointer here, this pointer here, if they points to the same node or not, then we'll move this pointer here, this pointer here, and check if they both points to the same node or not. And then once we'll come here, then we'll realize that yeah, both of them are actually actually pointing to the same one, and then we can say that this is an intersection node. But the thing that I was missing was that, because currently we are saying that there will be always the same number of nodes before the intersection happen in both of the linked lists. But there can also be a case where let's say there are 4 number of nodes here and there are 3 number of nodes here, so you won't be able to reach A4 in the same time. So that's why this idea won't work. I hope that it should clear that. Yeah, but I was trying to describe that idea. So that idea says keep a pointer on A0, keep a pointer on B0, which is the head of both the linked list, and try traversing at the same time. You will basically go to A1, you will go to B2, simultaneously do both these operations. You will go to A2, you will go to A3, you will go to A3, and you will go to A4. Now you will say ki the same thing is happening, right? Because we are pointing to A3 and the second pointer is pointing to A4. But how will the first linked list will get to know that our second pointer has ever came here? So that's not the logic. We'll move this again ahead, we'll move this ahead, we'll move this ahead, and we'll move this ahead. So now you'll say the linked list has already been over. What to do now? So it says you will just put this pointer, because it was the pointer of the second linked list, now put it in the head of the first linked list. So that's basically the idea. You will move this again one time, you will again move this one time, and now this has again come to the end. So because it was the pointer of the first linked list, you will move it to the second linked list, and again you will be doing the same traversal, which is moving here, moving here, moving here, and now you see that they are again in sync. So they will again move to the A4, and now this time they will move to A4 in the same time. So that's basically the logic, which is to put pointers in both of the heads and try basically traversing same number of steps at same time, and once you reach to the same spot in the same time, that's when you can say that it is an intersection. And if you anyway reach to the end, then if it was the pointer of the A's linked list, then you will just point it to the head of B's linked list, and if it was the pointer of B linked list, then you can just put it in the head of the first linked list. And you might be wondering why it will work. So there is a mathematical proof to it.
you can read about it, but there's no point in doing all of that, because it is just an idea where if you know this, you know this. If you don't know this, you can't do anything about it. And because it says there is no cycle, then we don't have to actually care about anything. And if there is an intersection point, then we will definitely be able to reach there. And if simultaneously we will reach null, then it means there is basically nothing we can do now. Cool. So we can just, I think, code that idea up. I think both the ideas are good. If we consider this idea, it is also not that bad, because it is also taking a little bit of space, but at least it is a trivial idea which can come up to anyone's mind. Where this idea, if you already know it, then also you might get confused while reading it. A very happy Independence Day to all of you. Cool. So I think we can just code this up. Yeah, so I will be coding the first one because I think that is the most trivial one. So we have to store the node itself, so that's why I will be creating a map of actual node, or map is not necessary, we can even create a set and we'll be iterating on any one of them. It's the same thing if you try to get the length and then traverse on the smaller one, but then in that case you will be doing some extra passes. Basically you have to traverse both the linked list, because you can't get the size of the linked list without traversing it. So that's why you have to traverse both the linked list, which is again m plus n, and then again you have to do a m plus n, so which will make it 2m plus n, but you are trading that with this thing that you are always getting that minimum. So if you want to do that trade, you can do that, but I'm not gonna do that. I can just directly code it up because it's not that big of a improvement. So yeah, I'll be just traversing head of A till it exists. It means till it not reach to the end. And what we can do, we can just insert the value or actual node in the set. And yeah, we also have to do head A connect. Yeah, so in this way we'll be just moving one pointer at a time and till we reach to the end, and as soon as we reach the end we will get out of that loop, and we can just again do the same traversal on B. And if we'll be able to find the same node in the set, because we have already traversed A, we have stored all the nodes of A, so we'll be traversing B, and as soon as we'll be able to find certain node in the set, it means it was also present in A, it means it is the intersection node. So that's what we can do. If we'll be able to find head B in the set, it means it is not equals to st.end, which will tell that it is present. So then we can directly return this node because it is a intersection node. Otherwise at the end we can say we can just directly return null. And in between we also have to move this pointer, which is head B, to head B's next. Yeah, cool. I think this should also work. Yeah, it works. Let's try to submit it.
yeah, we are able to get accepted. Cool. So I think it should also be clear. Yeah, I think these are easy problems. I think we should be moving a little fast here, then only we'll be able to spend some good amount of time on the actual good problems. Cool. So again a standard, very standard problem, which is the third problem of this list. And if anyone is wondering the list, I have already pinned that in the pinned comment. You can check that. We are following that list only. Cool. So it is also a very standard problem, which is you are given a grid, basically a 2D matrix, and you are also given a integer. You have to search if that integer is present in this grid or not. So a very trivial way would be to just iterate through the entire grid, which is nothing but m cross n traversal, and just keep on checking if that element is present on this current index or not. If you find it, it means you find it, otherwise you can just return that that element is not present. So that is so very easy, and that is kind of a linear traversal, linear search, which we do in 1D. It is kind of the same thing. We are doing a linear search on 2D, but it is also given two of the points, right? If these points have not been given, then doing a linear traversal is the only way how we can solve this problem, right? But because there are some points also given which we have not used yet, but we are also able to solve the problem. It means that whatever approach we come up with is not that optimized. The question wants us to do something else apart from that. Otherwise, if that's not the case, then it would not have given us these 2 points, right? So now let's try to read these points. So it says ki all the rows are sorted in ascending order from left to right. So it means ki this grid is sorted row wise, which is from left to right. All the elements are in increasing order. Similarly, all the columns are also sorted in ascending order, which is from top to down. So all the columns are also sorted in ascending order. So it means here is your grid. All of these are sorted in increasing order, and all of these are also sorted in increasing order. So now you have to come up with some better approach. Currently what you know ki by if we do a traversal of n cross m, an order of one space traversal, then we'll be able to successfully figure out. And currently we have not used the fact, which is that all these are sorted and all of these are sorted. So now let's try to think of something in that direction, right? So it's kind of similar to binary search, how we think of binary search, because initially we know that linear search is always a possibility, but because they have separately given that the array is sorted, and we know that linear search would work in any case. So because they have given it as a sorted, it means they are asking for something better. So here also they have given these 2 extra information, it means they are asking for something better. So let's see how we can do something better here. So let's try to again make the same matrix, and let's see, first of all let's try to think what's the problem if these things had not been given and it would have been a random values, let's say. So what's the problem in that? So in that case, let's say we are checking for a particular cell and we are getting a value, let's say 5. So there is no mechanism where we can say that any other value is dependent on this 5. It means we have seen this 5 separately and we can't collect any information regarding the matrix by just seeing this value 5. It means all cells are independent and we have to check all the cells in order to be sure that the element is either present or the element is not present. But that was not the case in binary search, because the array was sorted. It means using a mid we would be able to know that if the answer would have exist, it would have existed in either left half or the right half, right? So that's how some kind of conclusion we also have to make using this fact, because currently if we look at this, then we know that if we are, let's say again, if let's say we take this in account, so now let's say if we see 5,
we know that all the elements to the right of it will definitely be greater than 5, right? And also we know that all the elements to the bottom of it will also be greater than 5, right? But again, you know, you will say that by looking at 5, let's say if I have to check for 10, right? So 5 will say all the elements greater than me is present to the right of me, and all the elements are greater than me is also present to the bottom of me. Then again I have the same thing, right? Ki I don't know which way to go. So I need to figure out a mechanism so that there is only one way for each possibility. So let's say if I check and a value comes out to be x. So I should be able to now identify if it is equals to x, then it means ki we have successfully figured out the value. But let's say if it is not equals to x, and we have to now, let's say, figure out a value, let's say p. We are trying to figure out a value p, and the current value that we have checked is x. So now on the basis of whether p is greater than or whether p is smaller than, there should always be a single possibility, because if there are multiple possibilities, then again we don't know which way to go, and we end up going in both the ways, which will make our complexity again the same, right? So let's try to see this matrix again and try to see what all cells or in which direction should we traverse, so that we have only a single possibility for both the cases, right? So let me draw arrows with this color. So the array is sorted in this direction, and the array is also sorted in this direction, right? So the problem was if we started with the first index, which is the top left index, then the problem is if the element is greater, then we don't know which way to go, because the right way or the down way both leads to a greater value, right? So we can't start from the top left cell, right? Same thing happens with the bottom right cell, because the same thing, if the element is smaller, we know that all the top elements are also smaller, all the left elements are also smaller. But there are 2 points in this, which is this, which is top right and bottom left point, where we have 2 different paths. So if we are standing, let's say here, and somebody asks ki what's your value, let's say we say that our value is 10, and we have to, let's say, find 7. So now we know that because all the values to the left of it will be smaller than, why? Because the array is sorted in this direction, right? So because if a value is present here, all the values to the left of it has to be smaller than this, right? So we know that all the values to the left of it will be smaller, and similarly, because the array is also sorted in the column wise, so we know that all the values to the bottom of it or down of it is greater than 10, right? So if we have to check a value which is smaller than 10, we'll be going to the left side. If we want to check a value which is greater than 10, we'll be going to the down side, right? So this point is something from where I have exactly a single path for both the cases, which is either we have to figure out a smaller value, either we have to figure out a larger value, and same is the case here as well, right? If we have to check for a larger value, we'll be moving to the right because array is sorted row wise, and if we have to figure out a smaller value, we'll be moving top side, right? Because the array is also sorted column wise. So it means if we have to find a smaller value, we can just go up and it will give us a smaller value. So both of the ends can basically work same way as binary search does, but not in the same complexity. But yeah, the idea is mainly the same, which is you have to figure out a single way where you can go on the basis of the condition and on the basis of if it is lesser than that or if it is greater than that. So that's basically the main logic. You will start traversing from here and you will basically compare the element that you have to check. Let's say you have to check for x, you will just keep on comparing x here. If it wants a greater value, you will go to the down side. If it wants a smaller value, you will go to the left side, and similarly you will keep on following that. If you will be able to figure out x, it means it was present. If you will not be able to figure out x, then it means that was not present in this array. And how it will improve the complexity, because you are either moving downside or you are moving to the left, right? So in the worst case, how many traversal you can do? So the worst case would be if let's say you have to traverse all the way to the left
you are, let's say, saying it is smaller, it is smaller, it is smaller, and you will basically reach to the first column, and again you have all the possibilities that you can go to all the way to the last row. So basically in the worst case you can basically traverse all the rows and all the columns, which is nothing but order of n plus order of m. So from order of n cross m you are able to basically come to a complexity which is n plus m, which is far better than that, and you only use the things that are given to you. And the main logic was ki from where to start that search, because this point is not that good spot, because if you stand here you don't know where to go if the value is smaller, because you know that all the top values and all the left values are smaller, but there is no top and left values, right? And if the value is greater, then it means you can go in either of the direction, but for these two cells there is always a single possibility for both of the things, right? So you can start the traversal from any of the cell and you will be able to achieve the answer in order of n plus m time. No question, it won't be order of log n plus n cross m. Why it would be order of log n cross m? No, in the worst case we will be traversing the entire row and the entire column, but these are the independent loops, right? They don't depend on ki if we are for every basically column move we are doing the entire row move, for every row move we are doing the entire column move. This is not the case here. That's why the complexity will not be n cross m, not even in terms of this. That's why, because n and m are independent, these movements we are doing independently, so that's why the complexity will be n plus m, and we are not dividing it into basically half. That's not the case here, so don't confuse it with that. Yeah, we are not exactly doing binary search here, we are just using the logic of binary search, but actually we are doing a simple 2-pointer or a single pointer approach. Yeah, so I think that is also a standard question. We can just quickly code this up. So yeah, we know that we can put our I. So let's say I am taking that top right corner, you can also take bottom left corner, that is also fine. So the index of top right corner will be the first row and the last column, so the row will be 0 and the column will be the whatever the column value is, let's say m minus 1, and we can just get that from here. N will be matrix dot size, it is the length, the number of rows, and m will be matrix of 0 dot size, which is the number of columns, right? So we have put in a pointer there, and now we just have to check for that cell and we have to compare that value with the target, and on the basis of the, if it is equal then we can just directly return, if it is not equal then we have to go in either of the direction. So what we can do, we can while we'll basically be inside the matrix, then till then we'll be doing that traversal. So I should be greater than 0, because we are only going left side and we are only going down side, so I can basically go beyond 0, so that's why I should be greater than equals to 0. And no, that's not I, that's j, because we are moving to the left, which is the column actually, and row can be basically exceed n, so n should be I should be less than n. Yeah, that's the case I think, because if we are currently standing here we can go left, 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 and j will basically go beyond 0, and similarly I can go beyond n. Yeah, so that's the thing, and we will be just check if matrix of I comma j, if it is equals to target, it means we found the value, and we can just return true from here. And on the basis of the other two condition, which is the matrix of I j, if it is greater than target, it means
the current value is greater than, which means we are looking for a smaller value. So we know that on the left side there will be smaller value, which means you have to do j minus minus, and in the else case it means you are looking for a larger value which is on the bottom of it, so you will do I plus plus. And yeah, once you either figure out the value and you will return a true, or you will just go beyond the matrix and you will just break out of the loop and you can just return a false in any of those cases. Cool. So I think this should also work. Yeah, let's try to submit it. Yeah, we got it accepted as well. Yeah, but this was also a very standard problem, so that's a good thing that it also has a standard problem as well, because these kind of problems can easily be asked in interviews. Yeah, there are some logged problem as well, and for now I don't have that premium, so we'll just skip those for now. We'll later on see. I think there are some websites which provide those things, so we can figure that out later. But yeah, we are able to solve 3 problems. Any doubt till here, or should we move to the 4th one? Yeah, so these are mostly standard stuff, so I think we can move forward. Yeah, so the 4th problem is nth digit, and you are given an integer n. I think I have not solved this before. Yeah, so I think this should be fun. We are given an integer n, return the nth digit of the infinite sequence 1 2 nth digit. Okay, I think they have misplaced the commas. I think the comma should not be there, then that would make sense. Yeah, so actually they are not asking for the nth number, they are actually asking for the nth digit. So it means so basically the numbers are written in this way: 4 5 6 7 8 9. Till 9 everything is fine, but from 10 the problem arises. 11 12 13 14 15, and let's say if somebody asks key what is the, let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So basically each and every digit is a separate thing here. So if somebody asks for, let's say 14 15 16th digit, so we have to return 1 instead of 13 or 15, we have to return 1. That 1 is placed here. So that's the problem. I hope the problem statement is clear, and if I am not missing out something. Yeah, so 11th thing is 0, because till 10 it is 1 and the 11th one is 0, right? Yes. And the value of n is 2 raised to power 31 minus 1, which is somewhere around 10 raised to power 9. So yeah, we can't store these numbers. Yeah, so we can't store these numbers, so let's see what we can do. Okay, till 9 there is no problem, right? Because every digit is basically responsible for its own. From 10, I think till 99, everything should come in the same category, because every
number is actually responsible for 2 digits. And similarly from 100 to 999, everything should come in the same block because all of them are contributing basically same number of characters. And similar thing should also come from 1000 to 4 times 9 and so on. So these are my first thoughts, and then we can see how we can solve this. Because yeah, I think it is easy to calculate how many number of digits will be there after each block. So we know that because there are 10 digits, not 10, 9 digits. So this will basically take 9, and then from here till here we have again how many? Total 99 minus 9, there are 90 numbers. So yeah, so the total will be 90 into 2 because every digit is contributing, every number is contributing 2 digits. So it will be 180. So all in all, after this block, 180 from here, 9 from here, so total 189 digits will have been taken till 2 digits, right? And similarly we can also do for this, which is 999 minus 99, which is again 900. So 900 into 3. So I think we can easily figure out which block has that particular index. And then once the block has been figured out, we can just, we know that we can divide it in 3 chunks and we can get to the actual number which will contribute that, and from that actual number we can also get to the actual digit that will contribute to that index. So I think something like that should work. These are my primary thoughts, and that is also making sense. Yeah, so I think we can move in chunks, which is first the chunks of all the 1 digit numbers, and we'll see ki if basically till 1 digit numbers this many index will be covered. If the query is till here, then it means we know that the answer will be 1 digit numbers, and then we'll also include 2 digit numbers, and then we'll conclude that till 189 all the indices are occupied with either 1 digit number or 2 digit number. And if let's say the query is lesser than 189, it means that the answer will be definitely 2 digit number, because for 1 digit we have already asked that. So it means the answer will be for 2 digit number, and then subtracting or taking modulo and all, will be able to eventually come to the exact number, and then using that exact number I think we will be able to successfully figure out the exact digit. Yeah, so these are my primary thoughts, and let's see how we can code this up. Are there any hints? No. Cool, let's try to code this and we'll see if, okay, let me just check the comments. Yeah, commas are irrelevant. Yeah. Cool, I think let's try to code this up. Okay, so what all important things are there that we need to preserve, and how to move from block to block? These are 2 things. If we'll be able to figure out, I think that
coding part will be easy. Okay, first of all the number will be how many numbers will be there? How is there a way to figure out that out easily? So for 1 digit it will be 10 minus 1, right? For 2 digit it will be 100 minus 1, and we also have to subtract all the 1 digit numbers. For 3 digit number it will be 1000 minus 1, but it will also include 1 and 2 digit numbers, so we also have to subtract that as well. That's the thing, right? So I think we can do something around that. So it means we can move in blocks, and what will be the, okay, so the main query can be, let's say, 10 raised to power 9. So like, what is that block value which can have that, which can successfully answer that query? What I'm trying to think of is that yeah, so what I'm trying to think of is that in the worst case the query can be for 10 raised to power 9th index, right? So if we consider that for 1 digit block they'll take 9 indices, for 2 digit blocks they'll take again 180 indices, for 3 digit block they'll take 900 into 3, which is 2700, and then the next one will take okay, there is also an easy way, right? We don't, okay, we can just do 10 minus 1. This will tell us the how many 9s we require, right, which is the highest limit of basically those many digit. So basically the last value of that block, we can just do 10 raised to power something, which is, let's say, x minus 1. So it should give us the higher limit, which is something 999 some number of times, right? And for the, basically for the lower bound, we can, I think, do 10 raised to power x minus 1, and I think that should do the job. So let's do this for first block. First block, the x value will be 1, so 10 raised to power 1 minus 1, which is 9, and 10 raised to power 1 minus 1, which will be 0, which is something to the power 0 will be 1, so 1 to 9, right? For the second block it will be 10 raised to power 2 minus 1, which is 99, and for this it will be 10 raised to power 2 minus 1, which is 10. Cool. So we are now having a formula so that we can figure out how many numbers are there. Cool. And we can just quickly add those up, or we can subtract those up from the n itself, so that let's try to do something and then we'll see what happens. So we know that we have to run loop some number of times. We'll get to know how many times, but cool. Yeah, but what we have to do is to find the highest bound of it, which is, let's say, high. So highest bound of it will be 10 raised to power something minus 1, but again figuring out 10 raised to power 10 to the power something is not that good, right?
So we, I think, need to keep track of one number which will, I think, keep track of power, and initially we can store 10 in that, and we'll directly do power -1. It will give us the higher bound. So first time it will give us 10 minus 1, which is 1. No, sorry, 10 minus 1, which is 9, right? And for the lower bound, we just have to get a smaller power of 10, which is, we can just do power by 10, and that should give the correct thing, right? For 10 it will give us 1, for 100 it will give us 10. Cool. And later on we also have to basically multiply 10 to it. Yes, and this will not exceed, right? Because in the worst case it can go up to 10 raised to power. Basically, if everyone would have one digit, then 10 raised to power 9, the answer would be 10 raised to power 9. So I assume that it will be somewhere around 10 raised to power 5, 6. So we will be on a safer side. I hope I am able to convey my thoughts. Like, you can feel free to drop, if no, not drop in the chat if, let's say, any doubt comes up in your brain, right? So I'm just thinking out loud what I am thinking in the current moment. So if you like don't get any points, or if you want to add something to it, you can just do that using chat. I'll be looking into that, right? Cool. So we are getting a higher bound, we are getting the lower bound, and now we just have to figure out how many numbers are there. So we can just do high minus low, and that should give us the same thing, right? High minus low plus 1. High minus low plus 1, right? 99, yeah. That formula would work. Yeah, so we can just name it block. How many numbers are there in this block currently? So you can just do high minus low plus 1. So now we are getting this many numbers are there, not digits, the numbers are there. And now we have to multiply it with what, basically how many digits are there in every number of this particular block. So we can also take a variable, or we can, yeah, we can take a variable, that should be fine. So it will give us digits. Initially it will be 1, and then we'll keep on increasing it. So we can do digit plus plus, right? So for all the indices, total count, I'm not naming it right, but abhi ke liye that's fine. We can do block into digits. So this will give us the exact number of indices that block will occupy. And now basically we have two ways. Either we'll club the number of indices this takes, the number of indices this takes, number of indices this takes, and then compare it with the original n. Or let's say if the n is not able to satisfy using one block, then we can just subtract 9 from it, and it will basically treat this as the starting point. So I am basically inclined towards the second one, which is to subtract that particular thing if it is not able to satisfy. So we can just check first of all if the digit that we are looking for, if it is less than or equals to total count, it means we'll be able to get the result in this block itself. But if it is not the case, then we'll be subtracting this total count from n, so that the basically starting point shifts to the start of the new block. That's my thought here. And yeah, so now the main thing is, if we figure out that the answer exists in this particular block, how will we figure that out, the exact number, right? So let's say if we have
Yeah, let's say if we have 180 digits and someone says ki I want to figure out 153rd index. How to figure that out? We know that every digit has two, every number has two digits here. So can we just divide this by 2 and that should give us the right thing? I think so. It will give us the floor value, but I think that will point to the right thing, right? So let's take a smaller example. Let's say if we want to find the third one. So third one would be this, right? So we do 3 by 2, that will give us 1, and that says the first value, which is basically the second value in the zero base indexing. Yeah, and we can just do whatever the value we get, it means that is the value in the zero base indexing. We can just do plus in the starting point of that block, which we already have as low, right? So yeah, I think we can just divide it by these digits and that should do the job, right? So exact number would be n divided by the digits that we are having for every number in this block, and that is giving us the number. So now we have the number, not the actual number, but to figure out the actual number we have to just do low plus equals to this. Okay, with this we can remember. Yeah, to figure out the actual number, I think we should be able to figure that out by doing a low plus. Right? Is it making sense, guys? Cool. So now we know which exact number is having our answer, but we don't know which digit is having that answer, right? So now to figure that digit out, what do we need to do? I think some modulo is required, but which modulo which, that's the main point. I think the parity is something that we need to figure out, and the parity will be basically the number of digits only. So we can, I think, divide that thing with number of digits and that should give us the right thing, right? So let's say if it is 3, we can take the modulo it with 2, it will give us 1, and 1 represents that it will be the first value, right? No, but yeah, modulo with 1, either it will give 0, it will give 1. 0 means every second number, 1 means every first number. So I think that should be it. Let's take a bigger example. Let's say there are 4 digits in every number, and let's say we are talking about 1000, 1001, 1002, and we are saying we need to find this index, which is nothing but 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, so it will be 7th index. So we can do 7 by 4, and that should give us 1, and that is the right thing. So we will be able to successfully reach till 1001. But now we have to figure out which exact value, and for that, what I am proposing it, I can do modulo this, and that will give us 3. And 3 is pointing here, right? So basically we need to consider it as 1, 2, 3, and instead of 0 we can consider it as 4, but modulo will return as 0 anyway. So yeah, so that's what I'm thinking. Yeah, so first of all, let's try to take the modulo.
exact digit. For exact digit we can just take n modulo digits, and that will give us the we can just convert that number into string. That will make our life very easy. So we can just convert that number to underscore string. Yeah, now I think we can easily get the information. The only thing that we have to handle is that this is 0, matlab last index is 0, because taking modulo with 4 it will never give us 4, but actually this is 4, right? So that's what something we need to take care of. So we can just handle that separately. If that exact digit, if it is 0, then it means we have to return the we have to just return the str of str.size -1, which is the last value. Otherwise we can just return that one base indexing values, right? So this is for 1 we have to return 0th value, for 2 we have to return first value, for 3 we have to return this. So whatever comes we can just say exact digit -1 again, but it will be character, and I think we have to return an integer. So yeah, just convert that into integer. So we can just subtract a 0 from it, and that should do the job, right? So yeah, mostly I think we are good. Even if we write a true here, that should also do the job, but I am not very inclined towards writing true here, but I believe that should do the job. Let's try to check it with returning anything from here. It doesn't matter, because the answer will always return the answer from here if we are handling everything perfectly. Okay, there are some errors. Cool. There should be that should be digits. Anything else? Right, we are getting a wrong answer, which is fine. For 3 we are giving 4, which is not correct, obviously. For 11 we are giving 1. I expected is 0, right? So we are just one index off. My intrusive thoughts are saying we can just do +1, but no, we don't want to do something like that. Yeah, so what's the problem? The problem is we are getting 11. Cool, we are saying that there are 9 numbers in this, right? We will subtract 9 from it. We are getting 2. And from here we know we are getting 2. We'll be dividing 2 with whatever we are having, which is nothing but n. No. So n is 2. 2 divided by 2 is 1, which is correct. Low is no, it's not correct. No, we should not. No, I got the problem. We are 2, we should not. For 1 and 2 we should not change. For 3, 4 we should change. So it means we have to do some minus here, I think, and -1 would make sense.
I think so, because 2 minus 1 is 1 and 1 divided by 2 is definitely 0, so I think that should do the job. Let's try to give a test case by ourselves, a very large test case, a random value, and let's see if it works for this. Then we're done. No, what is this? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, we have given a very large number. Let's remove one of the digit. Yeah, it's working for that random value, so I believe that it should get accepted. No, it's not. Okay, it's giving TLE, but most probably I think it's because of the integer overflow, so I think not TLE but random error. So I think if we just define a long, that should do the job. This will be long, and we can just multiply one LL here to just convert it into long, because it will not convert itself directly, and I don't think anywhere else we need that. Here might be, so let's make power also. Yeah, power also. Right, and nowhere else, I think. Yeah, so let's try to run. If it works, it works. Yeah, that was the minor error, but yeah, it works. I didn't expect it to be worked in the first time, because the mathematics that we did here. Yeah, and the problem with these kind of questions is that if it gives you wrong answer, then it is very hard to debug, because you have written it in the first time with examples, but when it fails for a larger example, then yeah, it just mess everything up. So if you get accepted in the first go, then that's good, but if it fails for a larger value and it passes for all the smaller values, then good luck solving that. Cool, so I hope that I was able to convey my thoughts. Yeah, but it was a good question, and it was a little impromptu for me as well. I haven't seen this one before. So yeah, let me know if you have any doubt in this, or if you want me to emphasize on any part now. Yeah, because it might happen that I missed the explanation of some part while thinking. So yeah, if you want, I can basically just summarize everything once. Okay, meanwhile I can read the next one. That is not green. Yeah, it's green now. Okay, the next one is sliding window median. I think I have seen this one before. Okay, the previous one, right? Okay, someone is asking for the summary. So okay, so the problem statement was that you basically have to write all the numbers, an infinite series, basically from 1 to any number of times you have to write. Cool, so you can write all of them side by side, and then it will give you a specific index. You have to just consider this as a string. You have to just tell what is the
what is the value present at that particular specific index. That's what you have to return. So now how I thought of this is that a certain block has same number of digits. So basically numbers from 1 to 9 contains exactly same number of digit, which is exactly a single digit. Numbers from 10 to 99 contains same number of digits. Numbers from 100 to 999 contains same number of digit, which is 3. Because if you just combine all of this, then it will be very hard to distinguish. Let's say if I ask you to tell me what is the value that is present at the 1000 index, then it will be like very messy thing. You won't be able to like tell anything about it. So if you just divide it into blocks, then and try to figure out that which block contains this value, then it will basically make a little more sense. Because once you figure out that block, it means now you know that all the elements present in that block have that specific requirement or follow that specific basically rule, which is that all of the elements contain exact this digits in all of these basically numbers. So basically if I say that the elements are present between 100 to 999, it means you know that all of these numbers contain 3 digits. So now I can easily divide it with 3 and quickly figure out which exact number are we targeting. And once we figure out the number, we just have to check for parity, and from parity we can just get which exact digit are we pointing to in that certain number. So the problem was mainly to divide it in chunks and chunks of same digits, and once you divide that, then you can figure out which number does it points to, and from that number you can just figure out which exact digit it points to. So that's how I tackled it. We can check other solution, but I think yeah, people have done the same thing, right? They have basically chosen that ranges and then try to figure out which range the number lies, and then on the basis of that, yes. But yeah, the code looks a little more cleaner than our, but that's fine. If it works, it works. Cool. Hope this helped. Any more explanation required in this? Any specific line you want to know what it does? Cool. So let's move to the next one. The first hard problem, I think, from our series. Let's try to read this. But yeah, it's a well-known problem. Let's try to read and see what exactly is it asking. So it is first of all defining what exactly is median. So median is if you write all the numbers in a sorted order, then the middle element is basically the median, and if there is no single middle element, then you will take the mean of both the elements. Cool. So let's say if there are odd number of elements, then there will be a unique middle element, but if there are even numbers, then it means that you have to take the mean of the two middle elements. So that is the definition of median. So now it says you are given a nums and also integer k. There is a sliding window of size k, which you are basically initially you have put in that sliding window starting from 0th index to kth index, k minus 1th index, and then you will keep on sliding that window, which means you are inserting one element, you are removing one element, and then every time you have to tell what is the median of the elements that are present in that window. You have to return basically this array, and if I draw something, so it will look something like this. Let's say the elements are 1, 3, 5, 7 and 2, 4. Yeah, so it doesn't have to be in sorted order. That's why I'm writing like this. Any missing number? Yeah, 6. Cool. So let's say if the value of k is 3, then you will initially put the window here
Then you have to figure out what is the median of numbers 1, 3, 5, which comes out to be 3. So you have to put 3 into the answer. Then you will slide this window, which means you will remove 1, and then you will insert 7 into the window. Then you have to tell me the median of these 3 elements, which is 3, 5 and 7, which comes out to be 5. Then you will insert 5. Then again you will be sliding this window, which is 5, 7, 2, and now you have to figure out the median. Again, it is not the center element, it is the center element after you sort it. So it means 2, 5, 7, it is the sorted order, and then the center element is 5. So 5 will be the answer here, and then the same procedure you will follow, which is to slide it again, which is 7, 2, 4, and again the middle element will be 4. You will be putting 4 here, and then the last window that we will be having is 2, 4, 6. The middle element is 4. You will be putting 4 here. So this is what you have to return, and since it says ki it may happen, let's say if the window is of size k, let's say 4, so it may happen that you have to figure out the median, and now because there is no unique middle element, so you have to take the mean of the middle 2 elements, which is 3 and 5 by 2, and this basically whatever it comes up to. So that's why, because you are dividing it with something, so that's why they are saying ki you have to find the actual value within 10 raised to power minus 5. So they are giving you some liberty ki while you divide, you just have to basically take it till 5 digit of decimal. So that's why you only have to return the number with 5 decimal places. Even if it divides completely, then also you have to insert those decimal places just to maintain that order. Cool. So that's the main problem, and solving it in a brute force way would be like very simple, which is to actually do what it says, which is to put a sliding window. You can insert all the elements in some data structure, which is, let's say, sorted order, or you can put it in array. You can sort it and then try to figure out the median by either taking the middle element or taking the mean of the 2 middle elements. Then you will be sliding that again. You have to sort it again and again, because without sorting you can't figure out the median. Yeah, Tejas, right, it will require 2 heaps. Yeah, 2 pointer to maintain that window, because you have to keep track of the element that you are deleting, and you also have to keep track of the element that you are adding. Cool. So yeah, sliding window you can also interchangeably use 2 pointer, because the window is always between 2 elements, so sliding window and 2 pointer can be used interchangeably. Yeah, so the problem with that approach is that you are keep on sorting it and then try to figure out the median, which is not that optimal, and that's the main problem, which is for every window of size k you will be sorting it, which is nothing but k log k, and in the worst case you will be iterating through the every element, which is nothing but n, one more n. So the complexity will be nk log k, which is not that great. If we see the constraint, so constraint says k is 10 raised to power 5, n is also 10 raised to power 5, and so these two will only break that. So you have to figure out something better. Cool. So let's see how we can do something better. So as someone already suggested that we can use 2 heaps. So to figure out the median, you can see that one thing is to sort it, which is again we have seen that it is not that great to sort every time. So if we see the median, so median is basically we can divide it into 2 halves, right? And we are basically dividing it into 2 halves, and we are taking this element and this element. So let's say if we write, it is 2, 3, 5, 7, and if we want to figure out the median, then we'll be taking
one element from here, one element from here. So if we divide it into two half, so this half will be 2 3, this half will be 5 7. So basically we are dividing smaller number into one half, larger number into one half, and we are trying to maintain the size of both of them such that they contain almost similar amount of elements, right? So now if let's say something like this has already been with us, then how we can figure out the median? So we'll just say because all of these numbers are smaller than all of these numbers, right? So if we just basically put these numbers and we put these numbers, then it means they are all in all making an ascending array, right? So what the median, for median, what all elements will contribute to it? The largest element from this block, which will be the last element, right? The largest element will get basically placed here, and the smallest element from this half will get placed here. So that's why these two elements will basically contribute in the median. So that's why you just have to keep track of these two halves, and you also have to maintain that size property. Why? Because it may happen that you keep on pushing elements here, but then it will not follow that median property, right? Because let's say if you push on elements, let's say 4, let's say 1, you keep on pushing elements here and you don't basically optimize the size, then the problem will be that you are assuming that if we just put it here, then it will be ascending array, which is indeed the case, but it is not the case that we'll be using the largest element from here and smallest element from here to calculate the median. Why? Because we need the center elements. So center elements, how we can ensure that these are the center elements? If we have the same amount of element or almost same amount of element. Why I am saying almost? Because let's say if there are odd number of elements, then one has to have more number of elements, right? So let's say if there are 5 elements, then and let's say if 4 also has to go there. So either 4 has to go here or 4 has to go here. But in that case, it is very easy to calculate the median, because whichever have the greater element, we can just get the that extra element, and that will basically contribute as the median. But if both of them has the same amount of element, then we have to take the smallest element from the left side and largest element from the right side, and we'll basically take the mean and get the median from that. So that's the main logic of using heaps, because every time we are asking for the smallest element from the first half and the largest element from the second half. So that's why we are saying ki bhai give us the smallest element in as low complexity as possible and give the largest element in as low complexity as possible. So that heap is very good at doing that. We can use priority queue and we can use basically min heap to min heap here to get the smallest element. We can use max heap to get the largest element, and we can keep on switching elements. Yes, exactly. Yeah, we can also use multiset. That's also fine. Yeah, we just need to ensure that we are following our data structure, which is giving us the required thing in as less complexity as possible. Yeah, so multiset can also be used, but we should not use set, because let's say if there will be basically the problem of uniqueness will come. But yeah, multiset can be used definitely.
Cool, I think the idea is clear for this. Yeah, so if the idea is clear, I think we can code that up. So yeah, we just need to create two priority queues. So because the heap implementation in C++ is using priority queue, so we can create a min priority queue, we can create a max priority queue. So let's do that. Priority underscore queue and int. So by default it will be the max queue, so we'll write this, and if we want to create a min queue, then we have to pass a comparator to it. So it will be, yeah, it will be vector int and greater int. Yeah, this will convert it into a min heap, right? So it will be a min queue, and now we just have to follow that standard sliding window approach, which is to while rj is less than n, we'll be adding the elements, or we can also do something like that ki first we can insert k elements. So initialize j with 0 while j is less than k. So we initially insert k elements, which is nums of k plus plus, not nums of k plus plus, but So now we have to store these elements into one of these two queues. So how to basically get the idea ki in which queue it will go. So we'll basically use the simple idea, and what that idea is that let's say if the elements are present, let's say 2, 3, 5, and let's say there are some elements present as 7, 8 and 9. Cool. So now we have to basically store the element in one of the queues. So currently, because both of them has the same, so initially we have to decide ki which one will be having a larger value in case when there will be an odd case. So in that case we have to figure out ki which one should we put larger value. Let's say we decide ki this one will have one larger value. So in cases of odd, we will be just taking the top element from this queue, and that will be our median, right? So let's say if somebody comes and asks us to insert 1 to it, right? So we can't directly insert 1 into this priority queue, and why is that? Because our assumption is to ki bhai this will always have a larger element. So if both of them have the same number of elements, then if we insert then basically ideally one should go in this priority queue. But if we directly insert this, then the property gets hampered, right? The property is ki all the smaller elements are in this queue and all the larger element are in this queue. Basically the largest element of this queue is always smaller than the smallest element of this queue. This is the property. But if we insert 1 here, then that property will break, because in that case this 5 is not smaller than this one, right? So what we have to do, although we have to insert this 1 here, but we will not insert 1 here, we will insert 1 here and then basically take the largest element from this queue and then insert that element here. So in that way we will be having the same element, same number of element here, but we will always ensure that the property does not break, right? Because otherwise if we directly insert that 1 here, then the property would have break. It may happen that property would not break if, let's say, if it would have been 10, then there would not been having any problem, but there is no basically harm in first putting that element here. Even though if it would have been 10, then also 10 would have get inserted here, and then the max element would be 10, and then again we'll be returning 10 and 10 would get insert here.
So that's something that we need to follow every time we want to insert a element. So first insert it into the other one and then get the smallest or the greatest element from that queue and insert it into the other one. So that will always ensure that you are not breaking the rule that you are basically maintaining. Cool. So I think now we can simply code this up. Right, so let's move. Cool. So let's say we are inserting the element into the max queue. We can basically initialize ki first we'll insert into the max queue and then we'll take that element and insert into the min queue. So this is the pattern that we are going to follow. So first we'll be inserting into the max queue, which is max queue dot push this current element, which is nothing but nums of j, right? And we'll also do j plus plus, but we also have to ensure that the size of both the queues are almost equal. So how we can ensure that? So we'll just check if max queue dot size, if it is greater than basically, or we can subtract and check, or we can just directly check if the size of this is greater than max queue dot size plus 1, because it has the liberty to have a size 1 greater but not more than 1. So it cannot happen ki bhai our min priority queue have 1 element and the max priority queue have 3 elements. It is not possible, but it is possible to have 1 element into the min queue and 2 elements into the max queue, because almost equal can be taken but not the other way around, right? So if that's the case, then we have to transfer some elements or basically 1 element, because we are checking that condition every time. So it means we are having an imbalance between both the queues, so we have to take something out of the max queue and put that thing into the min queue. So we'll be just putting min queue dot push whatever is top of the max queue. So we can just max queue dot push, sorry, max queue dot top, I think, yeah, max queue dot top, and because we have taken something from max queue, so we also have to pop that thing out of the max queue. Cool. Yeah, so every time we are putting into the max queue, and as soon as there is an imbalance, we'll be taking something out of the max queue and then push it into the min queue. So in this way, we'll be making sure that our priority queues are always almost equal, and if let's say there is an imbalance, then our max queue should be having that extra element. Cool. So while this, I think we'll be able to get all the k elements, all the initial k elements into the queue. So now coming here, we would first of all calculate the answer, then push something and then pop something, and then again calculate the answer, then push something, then pop something. Yeah, so at the end what will happen? At the end we'll be inserting 7. So ideally what should happen is that first push and then calculate the result. So we'll just do k minus 1 and yeah, insert a element here only. So we'll be inserting kth element here only, and yeah, j plus plus. So yeah, so here we'll be just directly inserting the kth element. So the current size of our window is k minus 1, and now we'll do what? We'll insert the kth element to it, and now the size of the window is k. We'll compute the answer and then pop 1 element out of it. So the next iteration, our size of the window will again be k minus 1, and then again we'll be inserting that element. We'll calculate the result. So in this way, we'll be always making sure that first we are inserting the element into the queue and then we are calculating the result. So I think we can just directly copy these things from here, and that we can paste here because that's the same thing. Cool. So once we do this, now we are able to get the result. So the result will be depending on whether what is the parity of k.
So if parity of k is even, it means we have to take one element from the max queue, one element from the min queue, do the mean, and whatever comes up, push it into the answer. Or if it is odd, then in that case we can just pop something from the max queue, because we are having that extra element into the max queue. Cool. So we'll just check for the parity. If our k is even, which is k modulo 10, if is equal to 0, which means now we have to take elements from both the ends, or else we can take can k be, no, k can't be 0, that's fine. Yeah, so this is the simple case, which is to just pop the element from the, so we'll just create a double variable and we'll just store the temporary result in it. The result would be max q dot top, right? Yeah, and since we want to convert it into double, because if it would have been an integer value, it can't directly convert, so we have to do 1.0, so it will just convert it into a double value. So now we are good to go. We can just directly push that into our answer. We can push this thing into the answer, right? And we can declare answer here, vector of double answer. Cool. So this was the easy part. Now the slightly trickier part, or not that trickier, but yeah, the logic for computing would be just a little different, which is to get max q dot top and get min q dot top, add both the things and then divide that with 2. So that's the thing, divide that with 2. Dividing with 2.0 would, I think, convert it into double. We'll see. Yeah, and we can just directly push into the temp. Cool. So this was the easy part, which was to insert and compute the result. Now there is a trickier part as well, which is to delete an element, right? Because how can you delete an element from a heap, right? Because there is only the excess of top element from the queue. You can't basically delete an element which is present in some way bottom, right? Because if you do that, you can only get the elements from top, so you have to pop it out all the elements, and then at certain point you will actually delete that particular element, and then you also have to insert all the elements back into the queue, which is not that optimal, right? So you have to figure out some way to either actually delete or simulate that you have deleted, right? So how can we do that? How can we delete that? We can do some lazy delete, but then again, how will we make sure that the balance is correct between two heaps, because there are some stale elements there into the queue, right? So we need to have some mechanism to tell how many stale elements are currently in this queue and how many stale elements are currently in this queue. By stale elements, I mean ki those elements have already been deleted, but just because the priority queue can't delete element which is not at the top, we are putting it there but not deleting it, but once it comes to the top, we'll delete that at that moment. So this concept gets used a lot of times, where you have to do lazy delete basically. So you assume that you have deleted, but you will not actually delete. You will store that thing somewhere, that once that opportunity come, once that element will come at the top, before you even use that element, you first check whether you are a stale element or not. If you are a stale element, that it means ki I have to delete you, otherwise
I can just do whatever I want to do, right? But the problem here is that you can't let that stale element inside the queue, or you have to check for the balance separately, because currently for the balance you are depending on the size of the queue. But in that case, your assumption is that all the elements that are present into the queue are actually contributing to your median. But in that case, all the elements are not contributing to your median, because there are some stale elements which are not of any use, right? So for balance, you have to do something else, right? So either I can have basically the count stored somewhere, which will tell us we could have used multiset, because multiset provide us erase method. But let's say if multiset is not there, then also we should be having a idea, because this type of idea gets used a lot of time. But yeah, you can always use multiset, right? Multiset is a good option, but let's say if we have done it till here, so let's just do with this only for now. But yeah, multiset would have been a better implementation. So what I'm trying to say is that instead of this, I want to be dependent on some better mechanism which can tell the exact balance, right? Because let's say if I have to delete a particular element, then using that element I can easily figure out which direction it lies, right? In which queue it lies. Because let's say if I have to delete 3, I can just check from the top of both the queues, and they should be able to answer me whether it is smaller. If it is smaller, it means it has to be in the max heap, which is the left side part, or if it is the greater, then it has to be in the min queue, right? So using that, I think I can store that size somewhere. So instead of directly using that size, I think I can keep track of the size, which will tell me the size of not stale elements, right? So I think I can take two variables, which is first size of max queue. So size A, let's say I name it size A, not that good name, let's name it full size of max queue. So initially let's say it was 0, then size of min queue, initially let's say it was 0, and yeah, we'll do the same thing. So yeah, once we push the element into the max queue, we'll increase the size of that, size of max queue plus plus, because we have pushed an element. And for that imbalance also, for now I think in this loop that will do the job, but just to maintain the consistency, I think we can replace this with size of max queue and this with size min queue, right? And when we are pushing element into the min queue, we'll be doing size of min queue plus plus, and when we are popping elements out from the max queue, we'll do size of max queue minus minus, right? So now instead of actually checking for the size from the queue, because it is no longer a source of truth, because I agree to that fact that it can contain some stale elements, right? So that's why I have to find out this way, which is to store the size somewhere and not rely on that size method. Cool. So we do a push, again we'll be increasing size of max queue plus plus, and we'll again have to swap all of this with this same condition.
replace this here. Cool. And yeah, min queue, if you are pushing into the min queue, that means size of min queue will be increased. If you are popping, it means size of max queue will be decreased, right? So now, yeah, now we can't also rely on the top element easily, right? Because previously we were directly taking the element out and then pushing it, but now we have to also check whether that element is not a stale element, because if it is a stale element, then that's a problem, right? So we have to push all the stale elements somewhere, and then we'll check whether it is a stale element or not. If it is a stale element, then we'll be removing that, right? But yeah, there is one more problem, since we are inserting the elements, that's the problem, right? So instead of elements, I think we need to push the indices, because elements are not the right thing. But queue should be having that value, because we have to arrange the order on the basis of values and not the index. So we need both the things, right? Does it matter? It doesn't matter, right? Yeah, it doesn't matter. Which, let's say if there are three threes inserted, you can delete any one of them, right? It doesn't really matter. So I don't have to actually store the indices, I can store the values only. So let me create a set which will tell me the stale elements, and not set would not be a right thing. Multi-set, again I have to use multi-set. Cool. So multi-set would be a nice thing. Look at my submission. Have you pasted any links or something? Where is your submission? Okay, this. Okay, let me open that. Okay, I have to first find one of the submission and then. Okay, let's set this. I think details should also be there. Details / this, or it is detail. Yeah, it's detail. You have used multi-set. While low is less than, yeah. You are erasing it from high, you are inserting it into low, okay. Cool, so this is for the balance. Cool. This is for insertion. This is for erase. Yeah, you can directly erase from multi-set, that's the point. And apart from it, like everything is almost identical.
Yeah, multiset, I agree, multiset would have been a better implementation, but let's say if we have already started with this, then dropping it in between would like give a negative impact. Let's say if you have started already doing like half coded it in an interview and then you want to drop that idea, then it would like be a negative impact. So it is not that difficult, we can do that. So yeah, that's why I'm trying to code it up, but yeah, I agree, multiset would have been a better implementation. Yeah, so yeah, what we were doing was to create a multiset for stale elements, and we have to basically insert all the stale elements there, right? So once we will delete that element, so we'll push, yeah, we'll improve this later on, but let's first write down all the ideas. So here we will write the idea for erase. So we have to erase the element that is present at the ith index, right? Initially I should be 0, and yeah, I think we have not initialized, so I will be, let's say, 0. So we will, or we can just do j minus k, that should also do the job, but yeah. So if we would have been used multiset, we can just write multiset dot erase whatever element is present there, and it would have done the job for us. But now since we can't do that, we have to push that thing into the stale multiset that we have created. So stale dot insert whatever element is present at nums of I, right? So we are basically delegating this task that it is stored, will lazy delete it once it will come at the top of the queue. So before checking for any element, we'll first check whether this element is a stale element or not. That's the thing, right? But before doing that, we also have to update the size as well, because one of the element is now a stale element. So we first have to check whether this element is present in the left queue or the right queue, or min queue or the max queue. So that's what we have to check. So if whatever, let's say, we know that max queue always have something, because in case of one value also we are pushing that into the max queue, so max queue will definitely have something. So if max queue dot top is greater than or equals to the nums of I, it means the element has to be on the max queue side, right? So we'll do max queue, whatever was the variable that was size of max queue, we'll do it minus minus, because one stale element is present in the max queue, right? Otherwise we'll do the same for the min queue, size of min queue minus minus. Cool. But it isn't it have a problem, right? I'm thinking of a case where, let's say, these are our two queues. Let's say this is having 3 at the top, this is also having a 3 and 4, 5, and this is having 2 and 1. Let's say if we want to delete 3, we checked here, we found 3, we'll delete 3. Yeah, so we have to create 2 stale, I think. One will store the stale elements from the min queue and one will store the stale, because in that case, let's say if we check for this 3 and we'll delete this because it is present in the stale, but the size will differ, right? So that's why we have to create 2 stale elements. So one will store stale of max queue and one will store stale of min queue. Yeah, hi Tushar. Hi, hello. Multi set of stale
min q. Right, so now we'll be pushing that into that separate queue instead of just directly pushing here. So we'll be saying stale of max q dot insert nums of I, and then here we'll say stale of min q dot insert nums of I. Right, so I think that is the correct logic for erase. Now we just have to update the logic where we are directly checking. Before checking, we have to just see. We just have to see whether this is a stale element or not. If it is a stale element, just pop it out, and we don't have to change any size and all. Yeah, that's what I think we have to do. So before doing this, we just have to, let's say, write a loop where we'll be deleting all those stale element at once. So we'll be first checking while not of, first of all, max q dot empty. So while max q is not empty, and max q, basically that is present in the stale max q multiset. So how to check that? We will be check stale max q dot find this value which is at max q dot top. If it is present, it means it is not equals to stale max q dot end, then we'll just pop it out, right, from the max q. So max q dot pop. Yeah, and I think we have to just replicate this loop everywhere we are using that top, or basically everywhere we are using top. I think we have to replicate this loop, and that should do the job. So here we are also using, so here we are using max q as well as min q. So we'll be doing for both of them, I think, min q, min q, min q, it might be boring for you to watch me just write the code, because yeah, but I would recommend you to like write in parallel with me. Matlab, you can, while I am implementing, you can just either mute me or basically listen to me in back of the mind, and mainly focus on writing the same thing by yourself. That will help you basically with your implementation skill. But if you just watch me, then it may sound a little boring, but that's actually happen when you get a kind of new problem in an interview. Then the conversation will look something like this only, because you also try to figure out each and everything by your own. That is not the case if interviewer asks you the problem which is already a well-known problem to you. Right, I don't think we have to do anything here because there are no stale element till now. We only have to do here, we have already done here, we have already done for min q. Here also we have to do for max q, and I think we can just paste it here. And now we are making sure that everything is fine. So now I think it may also happen, right, ki max q is empty. It may happen. No, I don't think so. It may happen. No, it may not happen, because anyway there will be one valid element, and that has to be present in the max q, and because we are maintaining that balance perfectly, so that has to be the correct thing, right? And yeah, I think that should be
good. We are doing j++ here, which is correct. We should be doing I++ somewhere, which we are not doing, so we can do it here. And yeah, I think we are mostly done. Mainly we'll be just returning that answer. Yeah, I will face a lot of those errors, but yeah, j is less than n. What is n? So n is nothing but nums dot size. Okay, we are getting TLE. I think we are not incrementing or decrementing somewhere. That was, yeah. TLE is where? Yeah, I think in this loop we are not, no, we are incrementing j. So that's a problem, right? We are incrementing j here. That's correct. We are incrementing j here as well, right? We are also incrementing I. That's also correct. What's the problem then? We are doing j++ anyways. That is a little strange. Shit. Maybe TLE. Why TLE? Okay, we can try commenting each and everything so that we can be sure where exactly the TL is happening. Okay, it is not happening here, so it has to be happening here only, right? And here also we can comment down some parts. Okay, I think somewhere we are not in one of these while loops. I think we are getting stuck. While max q is not empty, and this is the case, we'll be popping it out. Max q, correct. Okay, let's try to comment and then we'll see. Just want to make sure it's not happening in the outer while loop. Yeah, it is not happening in the outer while loop, right? So it is the problem of the inner loop only. Okay, we are not, oh shit. Yeah, we are not erasing that stale element from that. Yeah. So stale dot max q dot erase this max q dot top. Yeah. This we have to do everywhere because it keeps on just checking and then popping everything out. Just copy, we can just paste tail min q
min q dot top, right? And here also yeah, cool. I think TLE should go now. That's fine. Wrong answer is fine. TLE should go. Okay, not that bad. Just missing out with some very small values. Okay, till here everything is fine. Till where? Till this 3, right? Till this 3 everything is fine. Here the expected is 5. I am returning 6. And similarly here the expected is 6. I am returning 7. So what's the problem? Cool. Max q dot push. Okay, these 3 elements has to be inserted. Cool. This has to be inserted. That's cool. Maybe we can print something out here for that j or for that I think we can print for that j. Let's say print max q dot top. So in this way we'll get to know what's actually happening. It will not be coming here, right, for k equals to so everything is happening here only. Yeah, so I think we can just remove this. Everything is happening here, which is till the element is stale, will be erasing it and will be popping that out, right? Right. So can you just print that j and max q dot top. Let's see what do we get. Okay, for 3 1 4, for 3 we will get 1, for 4 we will get -1, for 5 will again get -1, for 3 will get a 3, for 6 we are getting a 6, which is wrong. But ideally 6 should not be present there, right? Okay, let's try to take this test case, otherwise we won't be able to debug it anyway. Let's put it here and let's try to make, okay, so window will be 1 3 -1, right? And this is our, let's say this queue, and this is, let's say, stale wala, and this is also stale wala. Okay, cool. So we'll be pushing 1, we'll be pushing 3, and now the size difference is the problem. So we'll be push 3 here, we'll be pushing -1 here. Cool. There's no size difference, there's nothing wrong, correct?
will be returning 1, and we are indeed returning 1. That's fine. Cool. So 1 is now a problem, and 1 is basically at the top also. 1 is now a problem. We will be pushing 1 here. Now for -3, we are inserting -3 where? We are inserting -3 here. The size is 2 only, and that's correct. The size is 2, -3 is here, 1 is at the top, right? We'll check again, we'll pop 1 from here, we'll pop 1 from the tail as well, right? It is -3, -1, -3 and -1 are here, right? And there are 2 elements only. That's correct. Answer is -1. That's also fine. Cool. We'll be pushing 5. So pushing 5 here, and the -1 will go in stale, right? -1 will go stale. Pushing 5, that's also correct. And now the topmost element will be 5 only, right? So 5 will be answer. Because -1 is stale, right? So 5 will be the answer. How -1 is the answer? Okay, first this, then this, and then this. Okay, sorry, 3 was, I think, popped. 3 was here, so we'll remove 3, and then we'll insert 5 here. Now there is a problem, so we'll be pushing 5 here. Correct. -1 is at the top, we'll return -1. Cool. So now there are 1 element -1 here, 3 is here. Both the size are 1, valid size are 1, right? So now -1, 3, no, sorry, the new one will be this, right? The new one will be this, correct? So we'll insert 3, but 3 should be inserted where? 3 should be inserted here. Size is fine, no problem. Again, the top element is -1, no, not -1. Okay, I think I am understanding the problem. So the problem is we are pushing it into the max queue, and then from max queue we are transferring it into the min queue, but we are never checking the case where the element should have been in the max queue, right? You got the problem. The problem is कि we are only transferring if there is an imbalance. So let's say there is no imbalance, and let's say if 1 is here and 5 is here, we'll be pushing 6 here, and now since there is no imbalance, the 6 will remain here, and that's why we are returning 6 when we should be returning 5. So ideally what should happen is we first have to insert it here, then insert here, and then we'll be thinking of transferring, because first everything should be like diluted. So everything first we'll insert it here. If they could take it, they will take it, and they'll give the smallest element from here to here, and then it will also process it, and then the transfer will happen. So that's, I think, the problem is. And now how to solve that problem? To solve that problem, I think first we need to push it into the max queue, sorry, min queue. That's what we are doing, right? No, that's not what we are doing. We'll first push it, then we'll pop it, push it into the max queue, and then we'll decide. So that's the main thing. We'll first push the element into the min queue,
nums of j, first push it into the min queue, then pop it out from the min queue and push it into the max queue, and that should, I think, solve all the problems that we are getting. Min queue dot top and pop it out from the min queue. So size of min queue won't be affected, only the elements will be like fine tuned, would be a right word, and that should also happen here. Sorry, I think I copied it again. Copy and paste it. Yeah, now I think everything should be fine. If not, then okay, now okay, the problem is again that stale problem, I think, comes here. So we shouldn't be directly doing that. Again, while taking the top, we should first check for all those stale elements, right? So we'll be taking this min ql logic and we'll be doing that here. So first we'll push, then we'll take everything that is waste, and then the good thing will come at the top, and that should be pushed into the max queue. I think that should work. If that will not also work, then though it's a problem. Whew. Okay, first we'll insert into the min queue, then we'll pop it out from the min queue, push it into the max queue. Arey, what is this top, yaar? It should be pop. Okay, these are fine. There's some overflow that I think we can handle using some double and all. But yeah, the main thing was how many test cases passed. What's the problem? The problem is we are adding two larger numbers, and then that's making it worse. So we can just do 1.0, and I think, or we can just typecast it into double. I think that would do the job. That would do the job, I think. No. That should do the job. Okay, this is the last test case that's failing. What is the issue? I just came back. We are trying to just we have almost done it. The only case that is failing is this one. That's one, right? That's 3. No, that's 2, right? That's also 2, right? This should be 0. We are returning 1, which is like very wrong.
Why are we returning 1? Why are we returning 1? Ideally 1 should be deleted, right? Cout max q dot size and max q dot top. No, I want to run on this test here. Okay, size is 3 and top is 1. Size is 3. Okay, let's take this test case and try to do a dry run, and I think that will be the last dry run that we do for this problem. Cool. So first k was 3, right? K was 3. Okay, so first this is our max q, this is min q. We are pushing 1, we are popping 1, we are pushing 1 here. Again we are pushing 1, then popping 1 out, pushing it here, then again pushing it here. Cool. Then we are pushing 3 here, we are popping 1 from here, pushing 1 here. That's fine. Till here everything is fine. 1 should be the answer. That's fine. Cool. And now we will be pushing 1 into the stale wala array. ठीक है. 1 will go into the stale wala array, and now this is something that we need to process. Cool. 2 will go here, we'll pop 2, we'll push 2 here. Cool. And now the size is 2, the size is 1, so nothing will happen. Answer will be 2, which is also correct. Cool. So answer will be 2. And now in the stale wala array we'll also push 1. So now 2 1s are there and both of them are stale. Cool. We'll get 0, we'll push 0 here, we'll pop 0, we'll push 0 here. ठीक है, that's also correct. Now size will be 2, size will be 3, sorry, size will be 1. So that's also fine. 2 is at the top, 2 is the answer. Till here everything is correct, right? Now 3 is also a stale thing, so 3 will be basically putting it here, and now 0 will come, we'll push 0 here, we'll pop 0 out of here and push 0 here. Got it. No. No. We'll push 0 here. No, 0 here. Pop 0. Push 0 here. 2 is at the top. We'll pop 2 out. Push 2 here. That's correct. That's correct. So 1 is at the top, right? And the size should be 4. Why are we saying that size is 3? Why are we saying size is 3 and 1? So we have deleted all the ones, right? Okay, I think I got the issue. I think it is erasing all the occurrences. Erase a single occurrence.
Achha, we will pass the value, that's the problem, right? Got it. So we can just do a find and then that's I think how we should be doing. So I think the problem was we are erasing all the occurrences at once, and that's why once we erase this one, we have erased both the occurrences from the stale wala set, and that's why we are not able to erase this one, and that's why it was giving 1. So ideally the test cases are weak here, otherwise this shouldn't be passed till test 44, right? So that's the problem. So I think everywhere we have done erase. We have to, where we have done erase, yeah, here. So I think here we have to do stale max q dot find, because now it will find the iterator and the iterator will delete only a single occurrence. So I think that should do the job. Stale min q dot find stale max q dot find. Stale max q dot find. Stale min q dot find. This erase, 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 and erase. Yeah, I think we have replaced all of them, and now I think this should also work. Yes, and now I think we'll get accepted finally. Yes, cool. So I think this question alone take around 1 hour or so. Is case even get mean of the top element from both q? I'll take min of both. It depends ki how you are storing the values, because ideally, but in case of, let's say there are 5 values, then how will you basically split those values into 2 heaps, right? One will be having 2 values, one will be having 3 values. So the one which is having higher number of values should ideally contain that middle element. So min of both is not something that you should take, but where you are storing higher number of values, in cases of when the balance is not equal, in cases of odd values, then basically you have to take the top from there. So in my case, I have given that liability to max heap. So I am storing one extra element. Whenever the one extra element came, I stored it in the max heap. So for me, it was max heap in case of odd elements, and even elements I am taking the mean of both the top elements. So it depends on how you are storing that value. Yeah, but finally we are able to solve this at least. Cool. Okay, let's try to get to the next problem. Cool. So this one is the next problem. So okay, we were able to only 5 problems till now. I think this will take a lot of time, bro. That's fine. We'll try to
go through easy problems fast, but yeah, hard problems require time, so we'll give that legitimate time to them. Cool. So any doubt in this one? I think the implementation is not that good. So if you want to implement it, use multi-set, that will be like fairly easy. But yeah, if you want to make your life worse, then do it using heap. But that's fine. There is a lot of learning that I get from here, and I am sure that you guys also get at least something out of it. So that's fine. Cool. Let's move to the next one, the sixth problem from our set, and it is subarray sum equals k. So it is like a fairly easy problem. I think I have discussed it 2-3 times on my channel itself as POTDs. So we'll quickly go through it like very quickly. So it says that you are given a nums array and integer k. Your task is to return all the subarrays whose sum is equals to k. So a fairly easy way would be to traverse through all the subarrays, which is n square subarrays. You can traverse through all the subarrays and basically check if that subarray is having sum equals k or not. You can do that in the second loop itself, which is for that ending wala loop. You can do that in that only, and that should basically do your job in n square time. But again, if you look at the constraint, it is 2 into 10 raised to power 4, which is 4 into 10 raised to power 8 if you do n square. So it is not that intended solution, I believe. So you have to do it in a better complexity. Cool. So there is a very easy trick that you can follow to solve this problem, which is that it says ki by you have to figure out all the subarrays who are having sum as k. So it says ki by, let's say I am taking a prefix sum, and sum till, let's say, ith point starting from 0th index till ith point, sum is equals to sum. Cool. And if I am also able to find out a point where till where the sum is sum minus k, then it means ki the sum of the intermediate whatever subarray is there will definitely be k itself, right? So that's basically it. That's the main logic, because let's say if you want to find a subarray with having sum 2 and you check for a prefix and that prefix sum comes out to be 5, then you know ki by if in between, let's say if there is a point where till where the prefix sum is 3, so you know ki by from 3 till 5 there are definitely a subarray whose sum is equals to 2. So for every ending point you will try to figure out all of these starting points. So it is possible that there are multiple starting points, because there is a possibility, let's say there are zeros present somewhere, or the negative elements are also allowed. So it may happen that there are multiple occurrences of this 3 would be present. So let's say it may happen ki by 1 3 is present till here, 1 3 is also present till here. So it means ki by in between everything was having sum as 0, but you don't really care about those. And let's say 3 is also present till here. So you only care about ki by if sum till here is 5, then this all of this sum is 2, the sum till here is 2, and the sum of this subarray is also 2. So you, for every prefix sum, you will basically try to find ki by how many subarray, how many basically points are there till where the prefix sum is equals to sum minus k, and the number of occurrences that you can find for that will be the number of static points that you can choose for this particular ending point, and that you have to do for all the ending points. Cool. And to quickly check whether this sum minus k is present or not, you can easily create a map where the key would be this sum minus k, and or basically the prefix sum, and the index would or the value would be the count, ki how many such occurrences you have found. So for 3 we will be storing 3, that there are 3 indices where the prefix sum is 3. So for 5 you will be checking for 5 minus 2,
which comes out to be 3, and for map you will be checking ki bhai 3 is present, yes present, how many times, 3 times, it means there will be 3 subarray which we can obtain where the prefix sum is 2, where 5 is the ending point. Cool. So this is the only thing that you have to do, and initially you have to insert 0 in the map. Why? Because you also want to cover this case where, let's say, till here it is 5, and you are also looking for a subarray sum having sum as 5. So for this you will be looking for 5 minus 5, which is 0, and basically 0 should be present somewhere, right? So it means ki bhai if there is nothing, it means the sum is equal to 0. So you have to store that 0 is present one time. So that you can also consider these subarrays which are having starting point as actual starting point of the array. Cool. So I believe that it is fairly well known problem, and everyone is already aware about that. So we can just directly code this up. We won't be discussing that in that much detail. So I'll be just creating a map. We'll be just pushing map of 0 as 1. Cool. And then now we'll be traversing through each and every value. We don't really care about what's the longest one, because they can also ask you what is the longest such subarray whose sum is k. Then in that case you need to store indices, but here we are only caring about the count, so that's why I'm not storing indices and all. I'll be just storing the frequency because we are only caring about the count. So I can just do take a prefix sum, and I'll just do a prefix sum. Sum will be 0. Once the sum is there, now you will calculate ki how many times it will contribute in your answer. So you will be checking ki if that sum minus k is present in your map or not. So mp.find sum minus k. If it is not equals to mp.end, it means ki it is present, and if it is present, then you will be just adding how many times it is present. So it will be mp of sum minus k, and that should do the job. And every time you will be also putting out that prefix sum into the map, so that future elements can also get their answer. So you will be doing map plus plus, and yeah, you can now return the answer from here. Cool. And initialize this answer with 0, and I think that should work. Yeah, let's try to submit. That's fine. So I believe it was a fairly easy problem. I think we don't need to spend much amount of time here. Yeah, simple map to solve this one, correct. Yeah, we have already discussed that many times in POTDs, correct. Standard one, right. I have a doubt about my Amazon SD University talent acquisition. I had applied for this role since 1 month, didn't got any update. I have 8 months of experience. I think you should reach out to the recruiter. If you have any contact of them, you can directly call or something. You get the call for that role. So if you get the call, you can directly call. If you get the mail, you can mail them, or you can directly mail the recruiting team, or try to reach out through, reach outing through mail would be best thing you can do. Like you call or something, you get the call
Still I haven't received. I assume you have given the interviews and then you are not getting the response. All the interview rounds has already happened. Is that the case? Oh, you haven't got the that is purely luck. I think applying in mass is the best thing you can do. So yeah, try to find as many job posts as you can and try to apply as many, because resume shortlisting nowadays is like very hard. So, basically till you get the interview call, there's nothing that is in your hand. Even if you get a chance to give OAs, there is still not surety whether basically there are a lot of people who solve everything, who gave their best, but still they don't get any interview call. So till you get the interview call, I believe it's not in your hand, but once you get the interview call, I think you should be able to like get the best out of it. So applying is basically the best thing you can do. Okay, if you cleared away and then they have sent you a mail for loop for 16th July. So I think you should now, in that case, I think recruiter should be able to help you. But most of the times it happens that they put those hirings on freeze and that's why. But if that cases happen, then in future if some other opportunity comes up, they give you a priority if you have given the rounds and all. So yeah, but the best thing you can do is to try to reach out the recruiter. Cool, I think this was like fairly easy. Nobody would have any doubt in this. Okay, now this is solve the equation, longest word in dictionary. Let's open both of them. So we have to like do these medium problems fast, medium and easy problem fast, so that we can have the sufficient amount of time to give to the harder problems. Okay, solve the equation. Okay, so the problem is you are given an equation, return the value of x in the form of string x equals to hash value. The equation contains only plus and minus operations. The variable x and its coefficient. You should return no solution if there is no solution for the equation, or infinite solution if there are infinite solution for the equation. If there is exactly one solution for the equation, we ensure that the value of x is an integer. Very vague problem statement.
This is like that type of statement where you have to deduce everything from the test cases, so they don't care to give the details. But mainly it will contain some plus operations or minus operation and 1 equals to, as far as I can get, and somehow we have to compute the value of x. And if there is no solution, right? What is the case when we will be getting no solution? What will be the case when we will get no solution? Okay, what will the case when we will get no solution? Okay, so what I assume is कि at the end it will basically everything will boil down to x and its coefficient and equals to and some integer value which basically comes up after processing all the operations that you can do on a constant, right? So this is how I think the end equation should look like. अगर अभी हम normal terms में देखें तो cool. So to get a valid value for x, what should happen? Basically we will send this coefficient in divide here and that should give an integer value, right? So x should be, let's say if it is y, no, not y is not a good symbol. Let's say if it is b, it is a, and equation was like ax equals to b, then x should be like b by a, correct? If b and a both are integers, then I think it will be a valid answer, correct? But let's say if a is but let's say if b is 0, if b is 0, then also I think we can get some answer, right? Okay, so there are 4 cases, ठीक है? We can divide it into 4 cases. Ax equals to b. Okay, first case is when a is 0, b is also 0. Second case is when a is not 0 and b is 0. Third case is when a is 0 and b is not 0. And the fourth case is when a is also not 0 and b is also not 0. Can we say this? I think we can, right? So if a is also 0 and b is also 0, then in that case the a0 means that we have subtracted some x's, basically let's say 2x and 2x, and b was 0, let's say 0. So in this case, instead of subtracting, we can basically send this 2x there and cut that out, and it basically comes down to this thing, which is x equals to x, and we can basically put any value to x and it will be having like infinite possibilities. So I think that's what it means with infinite solutions. That's what at least I assume for now. So I believe when a is 0, b is 0, it means that's the case where, and is it sure that they will always give us x?
Can there be a problem where they'll not even have any x, all the constants will be there? Equation has integer and the okay, there will be, ठीक है, then it's fine. Okay, so let's say this is the case where we'll be having infinite solutions. Cool. And now let's talk about this, which is a is not 0 but b is 0. Okay, so if a is not 0, so let's say a is 3x and b is, let's say, 0, then I think we'll be having a simple straightforward answer, right? Because this 3 will go there and it will convert itself to 0. So that is, I think, we'll get an integer result from here. It is, I think, same as this. Here we'll be getting 0 and here we'll be getting some integer result. So that is also, I think, fine. Because if a is not 0, it means, let's say, something like 3x and either, let's say, 6, then we'll be getting 6 by 3, that is true. So, and this is, I think, the case where we'll be having no solution. Why? Because if a is 0 in this, then it means 0x equals to, and b is not 0, because if b would have been 0, then to we can say it has infinite solutions, but b is not 0, so it means basically 0x equals to 6, because there is no x, we can't say there is any solution. So I believe that is the case where we can say there is no solution. That's what I think. We ensure that the value of x is an integer. Okay, so I think this is how we should be able to do this. But now the main question is how to actually compute these coefficient and constant values. तो कितनी हो सकती है values? Equation consists of integer with an absolute value in range 0 to 100 without any leading zeros and the variable x. And एक ही केवल equals to होगा, that's also a good information. तो 100 तक हो सकती है, it means मतलब symbol मिलने से पहले, मतलब if we get a equals to symbol, it means the left part is already over and the right part has already started. तो मतलब we can solve the left and right part separately and then we can exchange the x and constants, I think. That's what I think it should be. मतलब now everything is basically only string parsing कि भाई we have to parse each and every character one by one. So let's say we start parsing from the left. So either we'll be getting x before getting a symbol or we'll directly get a symbol. So if we parse, basically whatever we are parsing, we'll be storing it somewhere, and as soon as we get x, it means it has to go in the value of a, which we are basically taking, right? It has to go in the value of a because it is followed with x, with the sign also we will be taking with the sign. But if it is not followed by x and directly we get a symbol, it means we'll be adding this or subtracting this to b, and we can compute a and b का value from the left, we can compute a and b का value to the right, and then दोनों को एक side भेज के I think we can do something like that. So major logic I think should be something like this only. That's what I feel.
You can discuss the cons. I think that is also something we can consider कि मतलब ठीक है ये वाला तो I think I can code, but जो क्वेश्चन आई थिंक इज स्टैंडर्ड और जो मतलब डुएबल होंगे आई थिंक आई कैन स्किप दोज कि उसका इम्प्लीमेंटेशन रहने दे सकते हैं हम. अदरवाइज हाँ बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा आई थिंक, बिकॉज देयर आर 50 क्वेश्चंस एंड वी आर ओनली एबल टू सॉल्व आई थिंक 6 or 7 till now. 1 2 3 4 5 6 7, yeah 7, we are doing 8. So I don't think we will be able to code all of them, but quickly we can discuss the ideas. मतलब if everyone agrees I think we can do something like that. और मतलब in between अगर कोई थोड़ा ज़्यादा ही tough question आता तो we can मतलब do coding and all for that. मतलब इन दिस वे आई थिंक वी कैन सी एटलीस्ट ऑल द क्वेश्चंस कि क्या क्या मतलब हमें मिला है रैंडम में. अदरवाइज मतलब एट सर्टेन पॉइंट उसके बाद इट वोंट बी पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ देम, तो हम देख भी नहीं पाएंगे कि व्हाट इज देयर. राइट, लेट मी नो कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस. वरना इफ़ यू गाइज वांट मी टू कोड तो आई कैन कोड, बट वही दिक्कत है कि सारे क्वेश्चंस आई डोंट थिंक विल बी एबल टू सी. दैट्स द प्रॉब्लम. Actually they are not 80 questions, they are 50 questions. So how I picked these questions is that all the questions which are divisible by 80 I picked all those questions, and since there are around 4000 problems on Leetcode, so basically it turns out to be 50 problems from there, and this 80 is from our 80th Independence Day. So that was the logic. Cool. So I think we can first discuss the ideas, and मतलब बीच में अगर if we feel like कि some problem we have to solve, we will be solving that. Because I think कितना टाइम हो गया स्ट्रीम स्टार्ट हुए. लेट मी जस्ट चेक. इट इज़ अराउंड 3.5 hours and we are able to solve only 8 problems. At this pace I think it will be 15 hours dedicated to 15th August, but yeah, let's try to solve let's try to discuss first as many problems as we can, and then we'll see कि what do you want to code. ठीक है, I think that is fine with most of you. So okay, let's try to discuss the next one, which is nothing but longest word in dictionary. And okay, given an array of string words representing English dictionary, return the longest word in words that can be built one character at a time by other words in words. So many words. ठीक है, मतलब एक डिक्शनरी दिया हुआ है बेसिकली, उसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं. ठीक है, एंड आप जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग बना सकते हो वो तभी बना सकते हो जब उसके आप सारे प्रीफिक्सेस भी बना पा रहे हो. एंड आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आप स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली
सबसे छोटा जो स्ट्रिंग कौन सा आप बना सकते हो, ठीक, लॉन्गेस्ट वर्ड होना चाहिए। मतलब अगर मल्टीपल लॉन्गेस्ट है तो फिर आप बाइफरकेट कैसे करोगे, कौन सा लेना है आपको, तो यू विल बी टेकिंग द वन विथ द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर। कूल। तो द मेन आइडिया दैट आई फील is required here is that let's say if we want to make water, ठीक है, तो water बनाने के लिए we should be having word water in our dictionary, we should be having word WATE in our dictionary, we should be having word WAT in our dictionary, we should be having a word WA in our dictionary. Yeah, and we should also be having word W in our dictionary, ठीक है। तो if all of these words are present for a particular word, it means now we can make this word water, है ना। तो the first thought that came to my mind is also try, because it looks like prefix matching, लेकिन I think we can also do it using normal map. We'll see कि what complexity it can solve it into, and try लगाने से मतलब कितना ज़्यादा better हो पाएगा, but first let's try to solve it using map only. तो let's say if we, मतलब दिक्कत ये है मैप में कि if we see that water के लिए we have to check for all the prefixes, and if we do that for every word then it is a problem, right? Because let's say if we first try to check for WATE कि W is present, WA is present, WAT is present, WATE is present, and then फिर later on we'll check for WATER also कि W is present, WA is present, WAT is present. So it is kind of an overkill because we have already checked for WATE. So I think we should be able to reuse this value in order to basically check for water, right? So but the problem here is कि it might happen कि भाई water is present before and WAT is present afterwards, right? So now you will first check for water and then you will be checking for WATE. So how to reuse this value? So the problem is basically that it may happen कि a larger word is present before a smaller word. So we can solve this problem I think by sorting this thing on the basis of the number of character it has, right? So let's say if we sort the entire map or whatever dictionary we are getting on the basis of number of characters we have, so W will come सबसे पहले, and then we'll be having WA, we'll be having WAT, we'll be having WATE, and then we'll be having WATER. So now what's the benefit of it is that देखो सबसे पहले a single character we found, it means कि भाई W is makeable, मतलब हम W तो बना सकते हैं क्योंकि हम W के सारे prefixes बना पा रहे हैं क्योंकि W is the shortest string that we can found, ठीक। फिर later on हमें WA मिलता है, WA मिला तो हमने देखा कि भाई देखो एक कैरेक्टर अभी हम हटा दें इसके लिए, ठीक, तो बचेगा W। अगर W एज अ स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल है, इसका मतलब W के सारे प्रीफिक्सेस बनाना भी पॉसिबल रहा होगा, एंड अगर W के सारे प्रीफिक्सेस बनाना पॉसिबल था तो इसका मतलब भाई WA तो अभी हमें मिल गया है, तो मतलब WA भी बनाना पॉसिबल होगा, राइट? तो वी कैन ऑल्सो स्टोर दिस WA कि भाई WA बनाना भी पॉसिबल होगा। एंड सिमिलरली जब फ्यूचर में हम WAT देखेंगे तो फिर हम बोलेंगे कि भाई ठीक है WAT मिल गया अभी, बट क्या WA एज अ स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल है कि नहीं। हम ये नहीं चेक कर रहे कि क्या WA हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, हम चेक कर रहे हैं WA क्या हमारा एज अ स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल है या फिर नहीं, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल का मतलब है कि WA तो प्रेजेंट है और साथ ही साथ उसके सारे प्रीफिक्सेस भी प्रेजेंट है, ठीक, क्योंकि ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमें ये नहीं बोला है कि भाई आप वो बना दो और उससे एक लेटर हटा के बना दो, हमें बोला है कि भाई आपको उसके सारे प्रीफिक्सेस बनाने, ठीक। तो अगर फॉर WAT एक लेटर हटा के वी कैन गेट दैट क्वेरी इन ऑर्डर ऑफ 1, कहीं पर हम स्टोर कर लें मान लो सारे कैरेक्टर जो हमारे लिए बनाना पॉसिबल होगा, तो फिर WAT के लिए रिजल्ट भी हम फिर ऑर्डर ऑफ 1 में आई थिंक दे सकते हैं,
है ना। एंड द ओनली प्रॉब्लम हेयर इज कि भाई हमें ये सॉर्ट जो करना पड़ रहा है, दैट इज़ आई थिंक ओवरहेड विच हम ट्राई से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मेरे को नहीं लग रहा कि मैप के सॉल्यूशन में आई थिंक टाइम वाइज एज सच कोई इशू है, अदर देन दैट वो जो लॉग एन एक्स्ट्रा आएगा हमारा सॉर्टिंग से, ठीक है। बिकॉज द ओवरऑल ट्रेवर्सल अगर हम सॉर्टिंग देखें तो भाई सॉर्टिंग के लिए हमारा जो एन साइज़ की मान लो स्ट्रिंग है तो एन लॉग एन लगने वाला है, एंड फिर उसके बाद जो ट्रेवर्सल्स होंगे आपके वो आपके बेसिकली एन लॉग एन एक बार आपने लगा दिया तो उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ एन में आपका पूरा ट्रेवर्सल हो जाएगा, राइट। और बेसिकली एन इंटू एल आप मान लो कि भाई आप मान लो ये स्ट्रिंग भी मानना चाह रहे हो तो ये भी मान लो, बट हाँ इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इसमें लगने वाला है। बट हाँ ये लॉग एन आई थिंक आप बचा सकते हो, क्योंकि आपको अगर आप ट्राई में सब कुछ इंसर्ट करोगे तो आपको फिर ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होगा, राइट। तो वी कैन क्विकली डिस्कस ट्राई वाला आइडिया भी आई थिंक, बिकॉज हाँ वो थोड़ा नेचुरल भी लग रहा है, ठीक है। तो ट्राई से बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, देखो ट्राई के लिए ट्राई में हम पहले चीज़ तो स्टोर कैसे करेंगे, ट्राई में हम स्टोर करेंगे, देखो सबसे पहले डब्ल्यू मिला हमें, डब्ल्यू स्टोर किया, डब्ल्यू ए मिला, डब्ल्यू के बाद ए लग गया, डब्ल्यू ए टी मिला, टी भी लग गया, डब्ल्यू ए टी ई मिला, ई भी लग गया, डब्ल्यू ए टी ई आर मिला, आर भी आपका लग गया, ठीक। और उसमें आपका इज़ एंड करके जो एक वो होता है उसमें डब्ल्यू आपका चेक होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। इसका मतलब ये सारे बनाना पॉसिबल है, राइट। तो मतलब एक तरीके से आप लार्जेस्ट डेप्थ देखना चाह रहे हो जहाँ तक आपको लगातार ट्रू मिलता हुआ आ रहा है, ठीक। जैसे कि मान लो एक दूसरा वर्ड होता है आपके पास, मान लो वो होता वॉच, ठीक। तो आपको मान लो डब्ल्यू ए तक तो डब्ल्यू मिला है, डब्ल्यू ए मिला है, एंड देन डब्ल्यू ए टी भी मिला है, बट मान लो डब्ल्यू ए टी सी एज अ वर्ड नहीं मिलता आपको, केवल वॉच एज अ वर्ड मिलता आपको, ठीक। तो वॉच इज तो भाई ठीक है, वॉच पे तो ट्रू लगा होगा, बट डब्ल्यू ए टी सी आप नहीं ढूंढ पाए ना। तो अगर आप ऊपर से देखते हुए आओगे तो आपको लगातार नहीं मिल रहा है एच तक, मतलब बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो बोल रहा है कि भाई मैं एज अ वर्ड आपको नहीं मिला हूँ, मतलब कि मैं ट्राई में एज अ वर्ड स्टोर नहीं हूँ, ठीक। और जैसे ही आपको एक पहला ऐसा पॉइंट मिलेगा वहीं से आप बोल दोगे कि भाई अब इसके नीचे जाने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक। तो काइंड ऑफ कि आप सारी चीज़ों को ट्राई में पुश कर रहे हो एंड देन यू आर डूइंग अ डीएफएस ट्रैवर्सल ऑन ट्राई, ठीक। क्योंकि एट द एंड तो ये आपका ट्री ही है ना भाई, ठीक। एट द एंड देखो तो ट्राई भी एक ट्री ही है, और ट्री में आपको बेसिकली ऐसा ट्रैवर्सल लगाना है सच दैट कि आपको देखना है कि भाई कितनी मैं डेप्थ में जा सकता हूँ, सच दैट कि मेरे को हर जगह पे ट्रू मिलता जा रहा है। ट्रू इन द सेंस कि भाई वो स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल था, वो एज अ प्रीफिक्स बनाना पॉसिबल था, एंड वो आपका इज एंड करके जो होता है उसमें आप स्टोर कर सकते हो, राइट। तो आई थिंक आप सब कुछ स्टोर कर लोगे एंड देन फिर वो पूरे 26 के लिए आपकी 26 ब्रांचेस एट मैक्स जा सकती हैं, इनिशियल वर्ड 26 हो सकते हैं आपके एट मैक्स, एंड देन फिर आप सेकेंड लेवल पे जितनी भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो वर्स्ट केस में मतलब ये होगा कि आप सारे वर्ड्स ट्रैवर्स कर डालोगे और सारे वर्ड आपके बेसिकली एन वर्ड्स हैं टोटल, और मान लो हर एक वर्ड की एवरेज लेंथ आपकी एल के बराबर है, तो आपकी एन इंटू एल कॉम्प्लेक्सिटी में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली आपका एल अगर आप यहाँ पर देखो तो आपकी एवरेज जो लेंथ है वो 30 से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो मतलब कि एन इंटू 30 विच इज़ 3 इंटू 10⁻⁴ विच इज़ नॉट दैट बैड, है ना। मतलब वही था कि उसमें आपका ये 10⁻³ और फिर लॉग वाला फैक्टर ऐड हो रहा था, तो वो लॉग वाला फैक्टर आप यहाँ पर अपना ट्राई यूज़ करके बचा सकते हो। दैट्स द मेन आइडिया आई थिंक ऑफ यूजिंग ट्राई। मेरे हिसाब से तो आई थिंक दिस शुड वर्क, क्योंकि डीएफएस या फिर मतलब ट्रैवर्सल लगाना वुड बी द राइट थिंग, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में प्रीफिक्स मैचिंग करने जाओगे तो फिर तो आप हर एक वर्ड के लिए बेसिकली अपना सारे प्रीफिक्सेस चेक करोगे, तो दैट विल बी अगेन आपका NL² विच इज़ बैड, राइट। NL इज़ फार बेटर देन NL², राइट। तो डीएफएस आई थिंक ट्राई बनाना है आपको, ट्राई में सब कुछ पुश करना है, ऑल द वर्ड्स यू हैव टू इंसर्ट इन द ट्राई, एंड देन उसके बाद यू कैन डू अ सिंपल डीएफएस ट्रैवर्सल कंसीडरिंग इट एज अ ट्री, जिसमें बेसिकली हर एक जो आपकी नोड होगी वो आपकी एट मैक्स
26 वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसमें, A B से लेके पूरे Z तक। सो बेसिकली हर एक नोड में आप 26 कॉल्स लगा सकते हो एट मैक्स। तो सिंपल सा आपका वही जो नॉर्मल आपका ट्रैवर्सल होता है वैसे ही कुछ काम करेगा। इंसर्ट ऑल इन ट्राई एंड, हाँ करेक्ट, यू कैन इंसर्ट एवरीथिंग इन ट्राई, और जो बेसिकली आपके एंड ऑफ द वर्ड है वहाँ पे आप मार्किंग लगा लो एंड देन यू कैन डू अ ट्रैवर्सल, और ट्रैवर्सल वहीं पे ब्रेक कर देना जहाँ पर पहली बार यू डोंट फाइंड दैट मार्किंग, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी में मार्किंग चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि भाई मेरे सारे प्रीफिक्सेस प्रेजेंट है। क्योंकि एक भी जगह पे मार्किंग नहीं मिली इसका मतलब अब उसके नीचे का कुछ भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि एक बीच का प्रीफिक्स गायब हो चुका है, ठीक, बिकॉज यू वर नॉट एबल टू मेक WATC, इसीलिए ऑल्दो आपका वॉच तो प्रेजेंट है बट आप वॉच एज ए स्ट्रिंग बना नहीं सकते हो क्योंकि आपका एक प्रीफिक्स मिसिंग है। तो यहीं पे आपका बेसिकली इस C पे ही आप ट्रैवर्सल रोक दो एज सून एज यू सी कि भाई आपका C प्रेजेंट ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे ऐसा हो सकता है कि भाई आपका बहुत बड़ा ट्री हो बट उसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जब WATC ही नहीं बना सकते हो तो इसके नीचे आपका चाहे भाई आप 70 कैरेक्टर का भी कुछ भी मिल जाए आपको, आप वो भी नहीं बना सकते हो। तो दैट्स बेसिकली आई थिंक द छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन दैट यू कैन डू ऑन टॉप ऑफ इट, और बाकी तो आपका नॉर्मल सा ही ट्रैवर्सल है एक तरीके से। Cool, I think this is basically the main idea that you can follow। मतलब अगर इसमें कोई आपको डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी आई थिंक इसमें इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी मतलब करने को तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपका NL² log n सारे तरीके ही काम कर जाएंगे क्योंकि कंस्ट्रेंट छोटे, तभी आपकी मीडियम प्रॉब्लम है। बट हाँ बेस्ट वुड बी आई थिंक आपका N×L में जो आप कर सकते हो ट्राई से। एंड इफ़ वी सी किसी का, हाँ देखो ट्राई प्लस BFS ट्राई प्लस DFS, मतलब वही ट्रैवर्सल ही लगाना पड़ेगा आपको। एंड या सॉर्टिंग वगैरह सब वही हम जो सॉर्टिंग का डिस्कस भी किया था हमने, बट हाँ मेनली आपका ट्राई प्लस एक कोई ट्रैवर्सल लगा दो आप DFS या फिर BFS में से। Cool, I think नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। तो विल सी दिस, ये हटाते जाते हैं हम ताकि थोड़ा क्लियर रहे सब कुछ, ठीक है ये भी हटा सकते हैं। ओके, डिकोड स्ट्रिंग एट इंडेक्स, डिलीट कॉलम्स, मेक कंसेक्यूटिव स्टोन्स, ये सारे मीडियम इजी वाले खोल लेते सारे ताकि जल्दी डिस्कस हो जाए। डिकोड वाला सबसे पहले है, देन डिलीट वाला है आपका, डिकोड डिलीट एंड देन फिर मूविंग स्टोन्स, फिर मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, फिर स्टूडेंट्स, फिर नंबर ऑफ डेज, ठीक है। फिर आपका दो हार्ड प्रॉब्लम भी है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग्स, ठीक है। तो आई थिंक देयर आर नो डाउट्स रिगार्डिंग दिस, तो मतलब हम नेक्स्ट पे जंप कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिकोड स्ट्रिंग एट इंडेक्स, ठीक है। तो यू आर गिवन एन एनकोडेड स्ट्रिंग S टू डिकोड द स्ट्रिंग टू अ टेप, द एनकोडेड स्ट्रिंग is read one character at a time and the following steps are taken. If the character read is a letter, the letter is written onto the tape. If the character read is a digit, the entire current tape is repeatedly written d-1 more times in total. Got it. You are given an integer k, आपको okay, तो it is kind of equivalent to जो हमने इनिशियल ये n digits वाली प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, मतलब थोड़ा मतलब सेम ही लग रहा है मेरे को।
बड़ा विल सी की आइडिया क्या यूज़ हो रहा है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा वैसे ही कुछ टाइप की प्रॉब्लम है कि मतलब यू विल बी प्रोसेसिंग इट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर लेटर मिलता है तो यू विल बी पुटिंग दैट लेटर। अगर आपको नंबर मिलता है तो आप अभी तक जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है आप उसको बेसिकली दिस -1 टाइम्स रिपीट करो। मतलब मेनली लॉजिक ये है कि ओवरऑल आपके बोर्ड पे वही सेम चीज़ जो भी नंबर लिखा हो उतने टाइम्स लिखी होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि लीट लिखा हुआ है, लीट एंड 2, तो इसका मतलब लॉजिक ये है कि भाई आप लीड लिखोगे एंड उसके बाद 2 मिला आपको, तो मतलब कि आपका ओवरऑल ये लीड जो है वो 2 बार लिखा होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि भाई 2 - 1 बार और आप खुद से लिख दो। ठीक, तो ये हो गया बेसिकली आपका लीड के बाद। ठीक, मान लो कोड लिखा होता फिर 3 लिखा होता, तो इसका मतलब अब आपको कोड लिखना है। ठीक है, कोड क्योंकि आपके पूरे कैरेक्टर्स हैं तो सी लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, फिर डी लिखोगे, फिर ई लिखोगे। अब जैसे आपको 3 दिखाई दिया वैसे ही अब आपको केवल कोड को नहीं रिपीट करना है, आपको ये पूरा लीड कोड जो है इसको 3 बार लिखना है, यानी कि लीड कोड और एक बार फिर से लीड कोड। अब ये ओवरऑल आपका जो है वो पूरा 3 बार बेसिकली लिखा हुआ है। ठीक, और अब आपका यही बेसिकली टास्क है कि आपको पूरा बताना है कि भाई अब रैंडमली मैं आपसे बोलूँगा कि भाई kth कैरेक्टर बता दो इसका क्या है, और आपको kth कैरेक्टर बताना पड़ेगा। मान लो मैं बोल देता हूँ आपसे कि भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लो मैं बोलता हूँ 15 कैरेक्टर बता दो, तो आप बोलोगे भाई 15th कैरेक्टर है मेरा टी। ठीक, काइंड ऑफ क्वेरी जो है वो वैसी ही है जैसी हमारी उस वाली प्रॉब्लम में थी, बट सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से मतलब एक तरीके से कुछ चंक्स में आई थिंक वी हैव टू डिवाइड इट। मतलब हर बार जब हमारा रेप्लिकेट हो रही चीज़ें वहाँ पर आई थिंक यू हैव टू बाइफरकेट कि किस रेप्लिकेशन से हमारा ये जो के है वो बना है। ठीक, अगर मतलब किसी रेप्लिकेशन से नहीं बना है तो इसका मतलब कि किसी डायरेक्टली हमारे कोई डायरेक्टली वैल्यू एज इट इज़ आई होगी। ठीक, जैसे कि मान लो मेरे से इनिशियली ही पूछ लेता कि भाई आप तीसरा कैरेक्टर बता दो, तो मैं तीसरा कैरेक्टर डायरेक्टली बोल देता कि भाई कोई रेप्लिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, मेरा एल आया फिर ई आया फिर ई आया, तो इसका मतलब कोई रेप्लिकेशन हुआ नहीं, मतलब ई डायरेक्टली आ गया है। ठीक, बट अगर वो पूछ रहा होता मान लो जैसे कि मेरे कुछ रेप्लिकेशन हो चुके होते, मतलब 4 के बाद मान लो पूछ रहा होता मेरे से 7th कैरेक्टर बता दो, तो इसका मतलब जो 7th कैरेक्टर है वो इस रेप्लिकेशन का नतीजा है। ठीक, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि बेसिकली अगर हम रेप्लिकेट तो देखो कर नहीं सकते है ना, हमें उसको डिड्यूस करके इस पे ही लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो चाहे जितनी बार भी रेप्लिकेट कर लो वर्ड आपकी यही रहने वाले हैं। ठीक, चाहे लीड को आप 100 बार लिख दो बट आंसर आपका एल ई या फिर टी में से ही कुछ एक होने वाला है, किसी एक की रेप्लिकेशन आपकी आगे कहीं गई होगी एंड वही बेसिकली आपका आंसर बनने वाली है। तो हमें उसकी जड़ पता करनी है कि भाई ओरिजिनल स्ट्रिंग का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसने मेरी जो एक्सटेंडेड स्ट्रिंग है उसमें इस kth कैरेक्टर को जन्म दिया है। जो भी कैरेक्टर होगा वो हमें बेसिकली फिगर आउट करना है, एंड नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ कि ये कैसे कर सकते हैं। जो मेरा पहला थॉट है वो यही है कि मतलब हम एक्चुअल में बना तो सकते नहीं हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हो, शायद ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है और ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि कितनी बार ये रिपीट होने वाला है, तो इतना तो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता, हम तो कर ही नहीं सकते। और जबकि ये छोटी स्ट्रिंग है, ऐसी 100 साइज़ की स्ट्रिंग हो सकती है आपके पास, है ना, तो दैट इज़ टू मच। तो मतलब मेन तो यही है कि भाई आप उसका सोर्स फाइंड करना चाहते हो कि किस सोर्स से वो आया है। अब ये कैसे करेंगे हम, दैट्स द मेन क्वेश्चन। मतलब मेरे हिसाब से देखो, जो आपकी
स्ट्रिंग है, देखो ये पता लगाना डिफिकल्ट नहीं है कि कहाँ तक की स्ट्रिंग को हम प्रोसेस कर लें तो मेरा के मिल जाएगा उसके बीच में, है ना, क्योंकि हमें उसके लिए केवल ये पता लगाना है लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हुए कि हमारा जो लेंथ है अभी तक के जितने भी कैरेक्टर हमने प्रोसेस कर रखे हैं, चाहे वो हमारे अल्फ़ाबेट हो चाहे हमारे डिजिट हो, जितने भी कैरेक्टर अभी तक हमने प्रोसेस कर रखे हैं वो सारे हमारे कितनी लेंथ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि हमने मान लो लीड प्रोसेस किया तो हमारे लीड में हमें 4 कैरेक्टर मिले, बट जैसे हमें फिर 2 मिला तो इसका मतलब हमने डबल करना है इसको। ठीक, ओवरऑल हमारा टास्क है कि भाई हमें लीड को 2 बार लिखना है, तो हम 1 बार और लिखेंगे। मतलब हमने एक तरीके से अभी तक अगर 4 साइज़ का था तो उसको डबल करा, 8 साइज़ का हो गया। ठीक, फिर हमने कोड ऐड किया उसमें, तो इसका मतलब 4 साइज़ और बढ़ाया हमने, तो 8 साइज़ का था 4 और बढ़ाया मतलब 12 साइज़ का हो गया। अब हमें ट्रिपल करना है इसको, मतलब कि 3 बार लिखा होना चाहिए, 2 बार और लिखेंगे हम, तो मतलब 12 का बेसिकली हमें 3 टाइम्स करना है विच इज़ 36। तो मतलब हमारी ओवरऑल जो लेंथ आने वाली है वो 36 आने वाली है। ठीक, तो मतलब ओवरऑल लेंथ तो पता लगाने का हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल के तक ही पता लगाना है, क्योंकि उसके बाद भाई चाहे आप कुछ भी लिखते रहो, हमसे क्या लेना देना। ठीक, इसका मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी कि भाई हमें जब लीड को हमने 2 बार रेप्लिकेट किया हमारा 8 आया, फिर से हमने फिर बेसिकली हमें बीच में पता चल गया कि हमारा 8 के बाद 2 10 हो जाता है ना। तो कोई मतलब लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक कि हम आगे से प्रोसेस करते हुए आंसर नहीं निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि देखो दिक्कत ये है कि हम अगर आगे से प्रोसेस करते हुए आंसर इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि मान लो अगर आपने के की वैल्यू 7 रखी होती, ठीक, आप बोलते कि भाई 4 कैरेक्टर मिले मेरे को, अब जैसे आप डबल करोगे अब 7 तो इसके अंदर ही आ गया ना, तो मतलब एक्चुअल जो भी आपका सोर्स था वो आपका कभी 7 के बहुत पहले ही आया होगा, है ना। वो सोर्स बेसिकली आपका ये 4 के बीच में ही आ गया होगा, क्योंकि ई ही बेसिकली आपका एक आंसर होने वाला है। तो आपको जब आप एक्चुअल में वो कैरेक्टर प्रोसेस कर रहे थे तो आपको कोई आइडिया ही नहीं था कि भाई ये मेरा आंसर होने वाला है ना। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि हम आगे से प्रोसेस करते हुए आंसर नहीं निकाल पाएंगे, है ना। बट आई थिंक आगे से प्रोसेस करते हुए लेंथ निकालना इज वेरी मच पॉसिबल, और उस लेंथ के बेसिस पे क्या हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑपरेशंस है ना, अगर आप इसको एक तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन की तरफ देखो कि भाई देखो जो भी आपका नॉर्मल अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इसका मतलब इट इज़ अ +1 ऑपरेशन, ठीक, कि आपकी लेंथ में एक ऐड हो रहा है। जो भी आपकी ये कैरेक्टर्स के अलावा जो भी डिजिट लिखे हुए हैं इसका मतलब दीज आर आपके मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन, है ना। तो जब भी आपके एडिशन वाले ऑपरेशन आ रहे हैं फिर मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन आ रहे हैं, तो हमारी लेंथ बेसिकली इस तरीके से चेंज हो रही है। तो अगर हम रिवर्स में इसको प्रोसेस करें तो हमारे जो ये डिजिट वाले ऑपरेशंस हैं ये बेसिकली हमारे मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स विच इज़ डिवाइड वाले ऑपरेशन की तरह काम करेंगे, एंड जो हमारे कैरेक्टर वाले ऑपरेशन हैं ये हमारे एडिशन का रिवर्स विच इज़ सब्ट्रैक्शन की तरह काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वी कैन, मतलब उल्टा हम प्रोसेस करके इसको किसी तरह से निकाल सकते हैं, बट विल सी कैसे, है ना। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन ट्राई कि कैसे कर सकते हैं हम इसको। ठीक, जैसे यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं विच इज़ लीटकोड 3, तो लीट2 कोड 3, कूल। तो देखो अब क्या होने वाला है हमारा, हमने सबसे पहले अभी के लिए कुछ नहीं करते, अभी के लिए हम केवल लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ हमें पता चली कि भाई 4 थी, डबल किया आपने 8 हो गई, फिर आपने इसमें 4 ऐड करा आपकी 12 हो गई, फिर आपने इसका ट्रिपल करा विच इज़ आपकी 36 हो गई। ठीक है, फाइनल लेंथ हमारी 36 पता चल गई हमें। ठीक, अब हमें कुछ एक के चाहिए था, मान लो, ठीक, के मान लो चाहिए था हमें 13 या फिर कुछ और चाहिए था, मान लो 17 चाहिए था। ठीक, अब हम देखते हैं भाई 17 हम ला कैसे सकते हैं। ठीक, 17 देखो कैसे ला सकते हैं।
17 लाने के लिए देखो, सबसे पहले आपने ये 3 देखा, आपने ये 3 देखा, इसका मतलब कि भाई आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 3 से, एंड आपको 12 मिलेगा। एंड 12 मिलने का मतलब है कि भाई आपका जो आंसर है ना वो ये 3 ही लेके आ रहा है। मतलब बेसिकली जब आप ट्रिपल कर रहे हो तो यही तो आपको आंसर दे रहा है। बट कैरेक्टर्स तो पीछे वाले होंगे ना। मतलब आई थिंक हमने सोच लिया है, बस उसको जोड़ना बाकी है। मतलब जब मेरे को 3 दिखाई दिया तो अगर मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा तो मेरा तो 12 बचेगा, राइट। तो इसका मतलब मेरे को आंसर तो चाहिए, राइट। तो मतलब मेरे को साथ ही साथ के को भी चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं के नहीं चेंज करूंगा तो भाई 17 तो अब मिलने से रहा, और ये मेरे को डेफिनेटली पता है कि भाई ये 3 तो कुछ था ही नहीं ना। ये 3 का जो वजूद था वो इसके पहले जितने अल्फ़ाबेट प्रेजेंट थे उनकी वजह से ही तो था, है ना। और केवल कोड की वजह से नहीं था, आपका पूरा लीट कोड की वजह से था। क्योंकि देखो लीट जो था, लीट कोड, वो लीट कोड नहीं था, बेसिकली लीट आपका 2 बार रिपीट हुआ था। तो मतलब लीट एंड देन कोड, मतलब ये पूरा एज अ सिंगल वर्ड काम किया था, और इसको आपने 3 बार रेप्लिकेट किया था, ठीक। तो इसका मतलब आप इसको इंडिपेंडेंटली कोड को नहीं देख सकते, आप इंडिपेंडेंटली लीड को नहीं देख सकते, मतलब आपको अपने के को ही चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक, के को ही चेंज करना पड़ेगा, थिंकिंग ऑफ दिस एंटायर थिंग एज अ स्ट्रिंग। मतलब आप इस स्ट्रिंग की आप केयर भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ये वाली स्ट्रिंग पता चल चुकी है, आपने जब आगे से प्रोसेस किया तो आपको अब ये वाली स्ट्रिंग पता चल चुकी है, तो आप भाई इस स्ट्रिंग की क्यों चिंता करने वाले हो, नहीं करने वाले हो। तो मतलब आपको पता है कि भाई जब ये 3 बार रेप्लिकेट हुआ था तब मेरा 17वां कैरेक्टर मेरे को चाहिए था, और अब मैं इसको अगर डिवाइड कर दूंगा, मतलब कि इनको 2 अकरेंसेस को हटा दूंगा, क्योंकि ये 2 अकरेंसेस ऑल्दो अल्टीमेटली आपका यही वाला तो कैरेक्टर है, ये पूरा उठा के आप इसको यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, तो जो 17वां कैरेक्टर होगा वो इनमें से ही तो कुछ होगा, है ना। अब वो क्या होगा, उसके लिए हमें के को अपनी चेंज करना पड़ेगा। अब के को चेंज किस में करना है, अगर ये हमें पता चल गया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक। तो अब के को चेंज किस में करें हम, दैट्स द मेन क्वेश्चन। मतलब देखो हमें चाहिए 17वां कैरेक्टर, राइट, और हमारे पास जो अभी स्ट्रिंग है वो है 12 साइज की, गॉट इट। तो 12 साइज की स्ट्रिंग है, हमें 17वां कैरेक्टर चाहिए, इसका मतलब स्टार्टिंग के 12 कैरेक्टर इस स्ट्रिंग ने ले रखे होंगे, और फिर बचे हुए फिर से 12 कैरेक्टर फिर से लिखे गए होंगे, है ना। तो अब हमें बेसिकली पता लगाना है कि ये कौन से नंबर का कैरेक्टर आएगा, मतलब कि हमें एक तरीके से इसको 12 से डिवाइड करना है, जो भी नंबर बचेगा, इसका मतलब 12 के उतने चंक्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 17 की जगह मान लो कुछ और बड़ी वैल्यू होती, जैसे 36 तक जा सकता था, मान लो 27 होती, ठीक। तो मतलब कि हमारा देखो 12 का एक पूरा चंक आ जाएगा, दूसरा पूरा चंक आ जाएगा, फिर उसके बाद तीसरे जो चंक है उसमें एक कोई सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड होगा जिसको बेसिकली 27 पॉइंट कर रहा होगा, है ना। तो हमें बेसिकली हमारा टास्क यही है कि हमें निकालना है ये पर्टिकुलर पॉइंट, हमें ये सब नहीं निकालना है कि भाई कितनी बार हमारा पूरा वर्ड डिवाइड हो रहा होगा। तो मतलब हमें एक तरीके से जो भी के है उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारे जो भी अभी करंट साइज है स्ट्रिंग का, राइट। और उसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ बेसिकली ये कैसे निकलेगा, आई थिंक रिमाइंडर से निकलेगा, क्योंकि अगर हम 17 का 12 करें तो 5 आता है, एंड देन 5th कैरेक्टर वुड बी दिस, है ना। और अगर ये हम 12 कैरेक्टर बोल रहे हैं तो इसके बाद हमारे पास लीट एंड फिर से लीट आएगा, तो हाँ तो दैट्स व्हाट आई फील लाइक कि भाई जब भी आपका देखो के बड़ा है तो आप ये गारंटी है कि भाई आपका जो के है वो इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से था,
लेकिन मल्टीप्लिकेशन आप हटा रहे हो तो मतलब कि अब इस कैरेक्टर की ही मल्टीपल अकरेंसेस थी, तो आपको एग्जैक्टली इससे मैप करना पड़ेगा, यानी कि इस 12 साइज की स्ट्रिंग में ही आपको इस 27 को मैप करना पड़ेगा। और वो करने का केवल एक ही तरीका है, विच इज़ कि भाई आप मॉडुलो लो 12 से, तभी आपकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 11 के बीच में आ पाएगी, है ना। तो दैट्स व्हाट आई फील लाइक शुड हैपन। और अगर मान लो के आपका छोटा हो गया, अगर मान लो के छोटा हो गया तो फिर तो उस टाइम पे आपको जज करना ही नहीं ना, उस टाइम पे आपको फिर इंतजार करना है जब तक आपका के वापस से बड़ा नहीं होता, है ना। और अगर मान लो एग्जैक्ट कैरेक्टर का भी फंस गया तो फिर आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो बेसिकली देखो, जैसे कि मान लो मैंने 27 नहीं मतलब 17 के लिए मानते हैं, तो मतलब मेरे को पता चल गया कि भाई 5th कैरेक्टर चाहिए मेरे को लीट कोड में से, ठीक, विच इज़ हम बेसिकली प्रोसेस तो इसी वाली स्ट्रिंग को कर रहे होंगे, बट हमारे दिमाग में है कि वो लीट कोड लिखा हुआ है, ठीक। अब हमें चाहिए 5वां कैरेक्टर इसमें से, ठीक है भाई, 5वां कैरेक्टर चाहिए। हमने देखा भाई हमारा ई दिखा हमें, ठीक, ई दिखा, इसका मतलब ई हमारा एक कैरेक्टर जरूर होगा डेफिनेटली, तो हम इसको एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, बस ये हमें सोचना है कि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। नहीं, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो सब्ट्रैक्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो अल्टीमेटली हमारी ये बड़ी वाली स्ट्रिंग थी इसमें ये कोड भी पार्ट में था, राइट, तो हमें सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मान लो ई के लिए हमने इस 5 में से एक सब्ट्रैक्ट करा, 4 बचा, ठीक। अब हमें इतने में से 4th चाहिए, फिर डी मिला, हमें फिर से एक सब्ट्रैक्ट करा, 3 बचा, ठीक। फिर ओ मिला, मान लो फिर से एक सब्ट्रैक्ट करा, हमें मतलब हमारा क्या बचा, 2 बचा, ठीक। फिर सी मिला, हमने फिर सब्ट्रैक्ट करा, हमारा 1 बचा, और हमें अब मिला लीड 2, ठीक। लीड 2 मतलब कि हमें पता है कि भाई हम डिवाइड करने वाले बेसिकली अपने आप को, राइट। डिवाइड करने वाले, राइट। डिवाइड करने वाले, इसका मतलब कि हम मतलब देखो यहां तक हमें पता था कि भाई हमारे पास 12 पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है। नहीं, हमने शायद कुछ गलत करा भाई, हमें ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें अपनी लेंथ सब्ट्रैक्ट हो रही है ना हमारी, हम कैरेक्टर जो फाइंड करना चाहते हैं वो थोड़ी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुछ गलत करा है। दिस शुड बी लीड टू एंड देन कोड, ठीक है। हमें चाहिए 5th वाला कैरेक्टर, गॉट इट। हमारी लेंथ हमें पता है कि भाई लेंथ हमारी 12 है, ये भी सही है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि भाई ई हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो भाई 12th कैरेक्टर है, हमें चाहिए 5th कैरेक्टर, ये तो 12th कैरेक्टर है ना, तो इसको हटा दो। अब लेंथ बची 11, हमें मिला डी, हमने कहा भाई ये तो 11th कैरेक्टर है, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको भी हटाएंगे हम। लेंथ बची 10, ओ मिला, ये भी नहीं चाहिए भाई हमें, ये तो 9th कैरेक्टर है, ठीक, ये भी हटाएंगे। 8 कैरेक्टर बचे हमारे पास और स्ट्रिंग बची हमारी लीड 2, ठीक। हमने कहा भाई 2 दिखा, डिवाइड करो, 4 कैरेक्टर बचे, हमें चाहिए 5वां वाला, हमें चाहिए 5वां वाला, 4 कैरेक्टर बचेंगे अगर डिवाइड कर दिया तो। इसका मतलब कि हमें फिर से इसको मैप करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये हमारा फिर से बड़ा हो गया, जैसे के बड़ा होगा उसके बाद उसको मैप करना पड़ेगा, ठीक। मैप कैसे करेंगे, अगेन हम अपनी जो भी हमारी लेंथ होगी बचे वाले वर्ड्स की उसके साथ डिवाइड करके मैप करेंगे, विच इज़ 1, यानी कि अब हमें पहला कैरेक्टर चाहिए, किसका,
इस लीट का, क्योंकि ये दो तो हट गया ना, क्योंकि भाई हमने डिवाइड करा ना 8/2 करा तो हमें 4 बचा, तो यानी कि 4 स्ट्रिंग 4 बेसिकली कैरेक्टर है हमारे लीट में, ठीक है, 4 लेंथ है हमारी लीट की, और हमें चाहिए पहला कैरेक्टर। और इसका हमें पता है कि ये वाला कौन सा कैरेक्टर होगा, ये चौथा कैरेक्टर होगा, हमें नहीं चाहिए, ये तीसरा होगा हमें नहीं चाहिए, ये दूसरा होगा हमें नहीं चाहिए, पहला होगा हमें चाहिए, और एक्चुअल में हमारा जो एल है वही हमारा कैरेक्टर होने भी वाला है, ठीक। तो मतलब हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से अपनी पूरी लेंथ को प्रोसेस कर रहे हैं पहले ही, कि भाई हमें पूरी लेंथ पता चल गई। अब हमें पूरी स्ट्रिंग में कितनी लेंथ है हमें ये पता चल जाएगा अल्टीमेटली। हमें कौन सा चाहिए, हमें kth कैरेक्टर चाहिए। तो भाई हम एक एक करके लेंथ को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जब तक एक एक करके माइनस हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब एकदम से डिवाइड होकर माइनस होता है और हमारा जो k है उससे भी कम हो जाएगी लेंथ, तो इसका मतलब कि भाई किसी चीज़ का रेप्लिकेशन हुआ है तभी हमारी आई होगी वो, और रेप्लिकेशन हुआ है तो इसका मतलब हमें जो पूरे पूरे चंक्स थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आधा चंक है उससे मतलब है, ठीक। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि भाई देखो जो मेन लॉजिक है, मेन लॉजिक आप ध्यान से समझना, देखो लीट 2 कोड 3 लिखा हुआ था, ठीक। आपने कहा कि भाई हमने जब स्ट्रिंग बनाई तो मेरी बनी स्ट्रिंग लीट कोड, ठीक, और इसी को हमने 3 बार बेसिकली रेप्लिकेट किया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब आपने कहा कि देखो जब हम मैं 3 से डिवाइड कर रहा था ना तो हमारी ये 12 साइज के 3 चंक्स आएंगे, बिल्कुल सही बात है। मेरे को चाहिए 17वां कैरेक्टर, तो मतलब देखो हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई कितनी बार हमारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हमें इससे मतलब है कि हमारा यहाँ पर देखो 5वां कैरेक्टर आएगा, यानी कि इसी का तो रेपिटेशन होके यहाँ पर 5वां कैरेक्टर आएगा। तो चाहे हम बोले कि भाई यहाँ का 5वां कैरेक्टर चाहिए और चाहे हम बोले कि भाई इसका हमें 5वां कैरेक्टर चाहिए, क्या बात सेम नहीं होगी, क्योंकि भाई इसी का तो रेप्लिकेशन आया है, हमें केवल कैरेक्टर से मतलब है, हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो मतलब इसी को हम रेप्लिकेट करके बेसिकली तीनों जगह लिख रहे हैं, तो इसका ही तो 5वां कैरेक्टर चाहिए हमें, इसका मतलब हमें इसका 5वां कैरेक्टर चाहिए, और हमें अगर इसका 5वां कैरेक्टर चाहिए तो भाई हम यही तो बोल रहे हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ डूइंग 17वां कैरेक्टर अब हम केवल अपनी स्ट्रिंग को इतना ही बचाते हैं और ये सारे हम हटा देते हैं, ये सारे का हमें कोई काम नहीं है, इसका मतलब ये 3 को हम रिमूव कर रहे हैं बेसिकली, और हम बोल रहे हैं बची हुई स्ट्रिंग का आप 17वें की बजाय 17 mod 12 करके 5वां कैरेक्टर ढूंढ के निकाल के दे दो, ठीक। अब लीड 2 कोड का आप 5वां कैरेक्टर निकालने का अब आपका टास्क बचा है। अब आपको इसमें पता चला कि भाई इसकी लेंथ जो है वो 12 होने वाली है, ठीक। ई का हमें काम नहीं क्योंकि हमें 5वां कैरेक्टर चाहिए, तो मतलब हमें ये तो 12वां कैरेक्टर है ना, ये इसका कोई काम नहीं है, ये 11वां है इसका भी कोई काम नहीं है, 10वां है इसका भी कोई काम नहीं है, 9वां है इसका भी कोई काम नहीं है। फिर आपको दिखा कि देखो भाई डिवाइड होने वाला है चीज़ें, कि आपका लीड जो है वो 2 बार रेप्लिकेट होने वाला है। आपने कहा मेरे को 5वां कैरेक्टर चाहिए, इसका मतलब कि ये यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक। मैंने कहा देखो रेप्लिकेट हो रहा है ना चीज़ें, आपको क्या मतलब कि भाई कितनी बार रेप्लिकेट हो रहा है, क्या यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या इसका ही पहला कैरेक्टर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसका पहला कैरेक्टर। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मेरे को 5वां कैरेक्टर चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ, आगे की जितनी अकरेंसेस है वो सारी हटा देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को बची हुई स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर चाहिए, और फिर से मैं यही करूँगा कि भाई ये तो चौथा कैरेक्टर है इसको हटाओ, ये तो तीसरा इसको हटाओ, ये तो दूसरा इसको हटाओ, जैसे ही पहला मिल गया वैसे ही मेरा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द कंप्लीट लॉजिक। उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया लगा, ठीक। और मेरे को थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम लग रही है, इसलिए आई वांट टू कोड दिस, और देखना चाहता हूँ मैं कि भाई क्या ये हमारा लॉजिक जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, तो इसलिए इसको हम जल्दी से कोड करके ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तब तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, तब तक मैं इसको जल्दी से कोड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमारा मेन टास्क बेसिकली है पूरी उसकी लेंथ निकालना, ठीक है भाई, पूरे उसकी लेंथ निकालना कितनी जा सकती है मैक्सिमम लेंथ, देखो 100 लिखा हुआ है, ठीक है। डिकोडेड स्ट्रिंग हैज़ टू बी 2⁻63, मतलब हमारा लॉन्ग के अंदर तो आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो हम लॉन्ग बनाते हैं एंड उसके अंदर हम स्टोर करते हैं अपनी पूरी लेंथ। देखो भाई इसका भी गोल था ना, इसने हमें बोला कि भाई लेंथ जो है वो 2⁻63 से छोटी रहेगी, इसका मतलब ये हमें चाह रहा था कि हम लेंथ निकालें, ठीक है। तो हम एक बार लेंथ कंप्यूट करके देख लेते हैं। तो हमारी ये लेंथ निकलने वाली है, लेंथ अभी इनिशियली हम मान लो 0 मान के चलते हैं, एंड फिर हम उसके बाद अपनी स्ट्रिंग को पूरा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर कैरेक्टर जो है वो हमारा एक अल्फ़ाबेट है, यानी कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड देन जो इट इज़ लेसर देन इक्वल्स टू आपका जी, यानी कि लोअर केस लेटर है, राइट।
ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो मतलब ये हमारा लेंथ में एक ऐड करेगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेगा, केवल एक ऐड करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, जो भी हमारी करंट लेंथ चल रही है। तो मतलब लेंथ शुड बी मल्टीप्लाइड विथ जो भी कैरेक्टर है, और कैरेक्टर को बेसिकली हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि अब ये हमारा डिजिट होगा। ठीक, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये करने के बाद हमें लेंथ पता चल गई। ठीक, अब हमें इस लेंथ साइज की हमारी पूरी स्ट्रिंग है, उसमें से kth कैरेक्टर चाहिए, ये भी हमारा टास्क है। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ अब मैं उल्टा प्रोसेस करता हूँ इसको। ठीक, यानी कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू जो भी हमारा एस डॉट साइज है वहाँ से मैं चालू करता हूँ प्रोसेस करना, एंड जब तक मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाता, एंड आई माइनस माइनस। ठीक, अब एक एक करके प्रोसेस करूँगा। अगर फिर से देखो सेम चीज़ मैं चेक करूँगा कि अगर भाई मेरा ये एक अल्फ़ाबेट है, अगर ये एक अल्फ़ाबेट है और अगर ये जो वाला बेसिकली जो अल्फ़ाबेट ये है अगर वही मेरे को चाहिए, है ना, तो जैसे कि देखो लास्ट में हमारा क्या बचा था, लास्ट में हमारा ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट था और हमें के की वैल्यू भी 1 थी, तो इसका मतलब वही हमें चाहिए था, है ना। तो जो भी हमारी बेसिकली लेंथ की वैल्यू है, इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू के, तो मतलब यही हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी कि यही हमारा आंसर होने वाला है। तो हम यही डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं जो भी हमारा एस ऑफ आई की वैल्यू है वहाँ पर। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हम फिर क्या करेंगे, हम अपनी लेंथ में से एक माइनस करेंगे, और अगर ये है ही नहीं तो फिर मतलब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है। लेकिन डिवाइड करने से पहले हम अपने के को ऐसा कुछ कर देंगे कि भाई हमारा के जो है वो वापस अपनी बेसिकली लाइन पे आ जाए। ठीक, तो उसको लाइन पे लाने के लिए क्या करना है हमें, उसको लाइन पे लाने के लिए हमें बेसिकली डिवाइड करना है, राइट। ठीक, तो पहले डिवाइड कर देते हैं। तो पहले लेंथ हमारी जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो भी हमारा कैरेक्टर होने वाला है वहाँ पर। ठीक, तो कैरेक्टर क्या होने वाला है हमारा, सी एच तो निकाला ही नहीं हमने, तो कैर सी एच इक्वल्स टू हमारा जो भी एस ऑफ आई है, राइट। अब हमने क्या किया, कैरेक्टर में से हम 0 माइनस करेंगे, जो भी आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, और डिविजिबल होगा क्योंकि हम आगे जाते हुए मल्टीप्लाई करते हुए गए थे, तो वापस आते हुए डिवाइड तो होएगा ही होगा। ठीक है, अब देखो हमने लेंथ को डिवाइड कर लिया है, लेकिन लेंथ अब हमारी छोटी हो गई केस है, तो अब हमें के को भी करना पड़ेगा, वापस लाइन पे लाना पड़ेगा। तो के हमारा जो होगा वो हो जाएगा के मॉड जो भी लेंथ है। ठीक, बस इतना सा आई थिंक मेरा टास्क है पूरा, और इसके बाद आई थिंक जो भी होगा वो रिजल्ट रिटर्न हो जाना चाहिए। अगर मान लो नहीं हो पाता है तो ऐसा कभी होगा कि नहीं हो पाता है, ऐसा आई डोंट थिंक कि ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। इट इज़ गारंटीड द के इज़ लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द डिकोडेड स्ट्रिंग। हाँ, तो मतलब आंसर हमेशा मिल ही जाएगा हमें। तो मैं यहाँ पर एक कुछ भी फालतू का रिटर्न कर देता हूँ, हमें चाहिए स्ट्रिंग, तो मैं खाली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, और देखते क्या होता है। अरे हमें कैरेक्टर नहीं चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो एक स्ट्रिंग बना ही लेते ना, स्ट्रिंग आंसर खाली रखते हैं हम पहले से, और फिर हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पर अपने आंसर में ऐड कर लेंगे इसको एस ऑफ आई को, और ब्रेक कर दो ना यहीं पे, और डायरेक्टली बाद में अपना आंसर रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बड़े वाले के लिए फेल हो गया, बट हाँ बाकी सबके लिए सही चल रहा है। ठीक है, इसके लिए फेल क्यों हुआ है, अगर लेंथ हमारी के बराबर आ गई अच्छा, मतलब दिक्कत पता है क्या, दिक्कत ये है कि हमारा ये 0 बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर देगा ना। जब हम मॉड लेंगे तो ये हमारा 0 बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर देगा। हमें 0 बेस में नहीं चाहिए, हमें 1 बेस में ही चाहिए। या तो हम के को इनिशियली ही 0 बेस में कन्वर्ट कर लें, या फिर यहाँ पर हम के प्लस प्लस कर दें तो हमारा 1 बेस में कन्वर्ट हो जाएगा।
मतलब फिर हमारा कुछ और फेल हो जाएगा। ज़ीरो बेस में इन स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर दे क्या? के को हम ज़ीरो बेस में ही कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स सी। तो सब फेल हो गया। रुक जाओ। लेट्स सी द प्रॉब्लम। देखो दिक्कत क्या फंसी, दिक्कत ये आई, नहीं देखो सब कुछ डिवाइड करने के बाद आपका अल्टीमेटली तो 1 ही बचना चाहिए, राइट? क्योंकि 1 आया था, फिर सब कुछ आपने मल्टीप्लाई करा, राइट? लॉजिक तो देखो मेरे को सही लग रहा है, लॉजिक इज करेक्ट इन माय ओपिनियन। दिक्कत कुछ और ही है। देखो ये डिवाइड करने पे क्या सीन हो रहा है, मतलब मैं अगर ये वाला एग्जांपल एक्चुअल में डाल के देखूं, विच इज़ Leetcode 3, और मैं फिर 70वां कैरेक्टर फाइंड करने की कोशिश करूं, अपना खुद का एक टेस्ट केस अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, Leetcode 3 और 70वां कैरेक्टर मान लो मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो लेट्स सी कि क्या हमारा सही चल रहा है या फिर नहीं। अच्छा अभी तो ये मैंने किया माइनस कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। मतलब देखो के अगर तुम्हारा 0 हो जाता तो मेरे हिसाब से के को आप लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज़ आई थिंक व्हाट वी शुड बी राइटिंग, कि भाई अगर आपका के यहाँ पर 0 हो जाता है तो उसको आप लेंथ के बराबर कर दो, एंड आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन। हाँ क्योंकि देखो दिक्कत यही फंस रही थी कि मान लो देखो जैसे ऐसा कुछ होता कि भाई मेरा ऐसा कुछ है कि वो डिविजिबल हो गया है, मान लो मेरे को 24th निकालना था, 24th कैरेक्टर निकालना था, और मेरे को यहाँ पर लीट कोड था, ठीक, ये 12 साइज़ का है, और फिर यहाँ पर भी लीट कोड हो जाता, ठीक। तो 24th कैरेक्टर तो आइडियली ई होना चाहिए, है ना, लेकिन हम इसको जैसे ही 12 से डिवाइड करते ही मेरा 0 आ जाता, ठीक। तो अब मेरे को बेसिकली 0th कैरेक्टर निकालना पड़ता, तो 0th कैरेक्टर थोड़ी यहाँ पर कुछ है, मेरे को तो एक्चुअल में 12वां कैरेक्टर निकालना है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली 0 अगर हो रहा है तो उसको हम लास्ट वाले में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, विच इज़ जस्ट काइंड ऑफ इक्वलेंट टू हमारा 0 बेस नहीं चाहिए हमें, ठीक। तो मतलब भाई ऑल इन ऑल लॉजिक मतलब हमारा सही था, बट वो तो छोटा बहुत हमारा, हाँ लॉजिकली मतलब हमने जो सोचा वो सही सोचा। ठीक है, तो इट वॉज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन आई थिंक। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। मतलब यहाँ तक अगर किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट लग रहा है तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स।
कूल, तो आई थिंक दिस शुड ऑल्सो बी क्लियर। ठीक है, बट यार हम इतने स्लो पेस में क्यों बढ़ पा रहे हैं? आई थिंक हमने कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 ही प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व कर पाए भाई। 50 इज तो टू मच फिर तो हमारे लिए। ठीक है, बट ट्राई करते, देखते क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज अ हार्ड प्रॉब्लम। विल सी, कूल। ओके, लेट्स ट्राई टू सी, let's try to see this one. कूल, सो आइए देखते भाई ये वाला प्रॉब्लम भी देखते। देखो हार्ड वाले में मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमें, बाकी इजी मीडियम को हम थोड़ा सा, मतलब जैसे कोई अच्छे मीडियम आ जाएंगे तो ठीक है। ठीक है, अगर थोड़ी कम भी ख़त्म हो पाती फिर भी ठीक है, बट जितने क्वेश्चंस हम करें एटलीस्ट दे शुड बी सॉलिड। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई ये वाला प्रॉब्लम क्लियर है एंड इसको स्किप करते हैं। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी मैंने क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था ये। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच इज़ डिलीट कॉलम्स टू मेक सॉर्टेड 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपके पास एक स्ट्रिंग दी होगी n साइज़ की, नहीं n स्ट्रिंग्स दी होंगी आपको और सबकी लेंथ सेम है। ठीक है, मतलब एक एरे है ऑफ स्ट्रिंग्स और सब सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इंडिसेस चूज़ कर सकते हो एंड देन आप उस इंडिसेस पे सारी स्ट्रिंग के उस इंडेक्स वाले कैरेक्टर को डिलीट कर दोगे। ठीक है, आपका टास्क है कि आपको भाई जो फाइनल बची हुई स्ट्रिंग्स की एरे होगी उसको आपको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में लाना है। ओके, और आप जितने मिनिमम से मिनिमम बेसिकली इंडेक्स के कैरेक्टर्स जो डिलीट कर सकते हो वो आपको करने की कोशिश करनी है। कूल। ठीक है, तो बेसिकली आपको सम सेट ऑफ इंडेक्सेस पिक करके बताने हैं, वो स्मॉलेस्ट होने चाहिए, जितने स्मॉलेस्ट आप सेट ऑफ इंडेक्स पिक करके बता सकते हो मेरे को, सच दैट कि मैं उन सबको डिलीट अगर कर दूं तो मेरी जो बेसिकली हर स्ट्रिंग में वाले कैरेक्टर्स अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरी जो ओवरऑल स्ट्रिंग निकल के आएगी दैट शुड बी अ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए। मतलब जितनी सारी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से देखो इसको हम कर सकते हैं। बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर फॉलो करने का क्या मतलब है? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर फॉलो करने का मतलब है कि भाई अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं जिनके बीच में मान लो मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो मतलब क्वेश्चन क्या चाह रहा है? क्वेश्चन चाह रहा है कि आपके पास मान लो ये स्ट्रिंग है, ये सेकंड स्ट्रिंग है, ये थर्ड स्ट्रिंग है, ये फोर्थ स्ट्रिंग है, ये फिफ्थ स्ट्रिंग है। ठीक, तो ये वाली जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो इससे छोटी होनी चाहिए, ये वाली जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो इससे छोटी होनी चाहिए, ये वाली जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो इससे छोटी होनी चाहिए, ये वाली जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो इससे छोटी होनी चाहिए। ऐसा कुछ चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक, और उसके लिए वो बोल रहा है कि भाई कुछ आप डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारा जो कोई भी हम डिलीशन हम परफॉर्म करना चाह रहे होंगे उसका कुछ मोटिव होगा बेसिकली। ठीक, अब उसका मोटिव क्या होना चाहिए? उसका मोटिव ये होगा कि वो किसी बेसिकली अगर वो डिलीशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी ये जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करना हमारी मजबूरी होगी। ठीक, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो मान लो मेरी एक स्ट्रिंग लिखी है ZA, ठीक, ZAB ऐसा कुछ स्ट्रिंग लिखी है, और दूसरी मान लो एक बाद में स्ट्रिंग लिखी हुई है
बी जेड, ऐसी कुछ स्ट्रिंग है। ठीक, तो अब मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर ये मैंने पहला कैरेक्टर डिलीट नहीं करे तो मेरा ये लेक्सिकोग्राफिकल जो ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। ठीक, और भी मान लो बहुत सारी स्ट्रिंग बीच में लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि z और y जो है उसमें से z जो है वो आपका एक बड़ा रखता है वैल्यू, है ना, तो आपको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में चाहिए, मतलब आपको छोटी वैल्यू ऊपर चाहिए, यानी कि अगर ये y ऊपर होता तो ठीक था, लेकिन क्योंकि भाई आपका z जो है वो आपका ऊपर है, तो अगर आपने ये कैरेक्टर डिलीट नहीं करे पूरी स्ट्रिंग में से, ठीक, तो फिर आपका भाई ये यहीं पे आपका गलत हो जाएगा कि भाई आप फिर कभी भी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा ये फिर z तो ऊपर ही रहेगा ना, आप बाद की कुछ भी डिलीट कर लो, ये z और y तो एज इट इज रहने वाले ना। तो आपका टास्क कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई जहां पर फोर्सफुली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो तो ऑपरेशन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको कभी ऊपर एक बड़ा कैरेक्टर दिख रहा हो और आपको नीचे एक छोटा कैरेक्टर दिख रहा हो तो मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म होना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा भी एक केस हो सकता है कि मान लो भाई आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है AZ और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो आपके पास, नहीं सॉरी, हाँ मतलब ऐसे ही कुछ AZ लिखा हुआ है मान लो, और यहाँ पर आपके पास मान लो लिखा हुआ है BY। ठीक, तो अब ज़रूरी नहीं है, अब देखो अब आप Z और Y देखोगे तो अब इन दोनों के बीच में इन्वर्जन की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है बात? क्योंकि भाई इन्होंने अपना इन्वर्जन का केस ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया है, इन्होंने बोला भाई अब हमारे बीच में कभी इन्वर्जन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई हमने देखो एक छोटा कैरेक्टर मेरा बेसिकली पहले ही इसके साथ मामला सलटा चुका है। ठीक, कि भाई एक छोटा कैरेक्टर मैंने पहले ही अपना रख दिया था जहां पर इसके पास एक बड़ा कैरेक्टर था, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली अब हमारे पूरे जीवन के लिए सॉर्टेड हो गया। मतलब अब बाद में चाहे मैं यहाँ पर सारे Z भी रख दूँ और यहाँ पर मान लो मैं सारे AS भी रख दूँ, फिर भी अब ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग है वो मेरी बेटर नहीं बन सकती ऊपर वाले से, क्योंकि भाई ऊपर वाले में जो मेरा एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको मैंने बेसिकली एक हायर पोजीशन पे था, मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात आ जाएगी फिर से कि भाई एक हायर सिग्निफिकेंस का जो कैरेक्टर था उसको मैंने ऑलरेडी छोटा कर दिया है एंड नीचे मैंने एक बड़ा कैरेक्टर चूज कर लिया है। ठीक, तो काइंड ऑफ यहाँ पर हमें बेसिकली कुछ ऐसा स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम पता लगा पाएँ कि कौन कौन से लोग अपनी चीज़ें सॉर्टेड कर चुके हैं एंड किसकी किसके बीच में इन्वर्जन होने की भी पॉसिबिलिटी है। एंड अगर बेसिकली वो वाला कॉलम जो है वो इन्वर्जन क्रिएट कर रहा है किसी ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने अभी तक अपना लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो है वो सॉल्व नहीं कर रखा है, तो फिर मतलब ये कॉलम डिलीट होना ही पड़ेगा, है ना। तो काइंड ऑफ मतलब यहाँ पर ग्रीडिश कुछ लग भी सकता है, बट हमें कुछ चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी उसके साथ साथ। दैट्स व्हाट माय फर्स्ट थॉट्स आर, है ना। मतलब डीपी डिपेंडिंग कि डीपी आप बोल किसको रहे हो, इन माय ओपिनियन, क्योंकि कुछ स्टोर करना कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डीपी। तो अगर मतलब मान लो आप टैग यहाँ पर कहीं पर टैग वगैरह में लिखा हो डीपी, जैसे अगर यहाँ पर टॉपिक देखें तो टॉपिक में अगर डीपी लिखा हुआ है तो इट डजंट रियली मैटर कि भाई आपको एग्जैक्टली आप मतलब कुछ डीपी ही लगा रहे हो, कभी कभी वो कुछ आप स्टोर कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज डीपी। बट हाँ अभी ओनली मतलब जो फर्स्ट थॉट थे उसके बेसिस पे आई हैव मतलब जितने भी मेरे पास पॉइंट्स थे आई हैव पुट इन ऑल दोज पॉइंट्स। बट हाँ इसमें हम मतलब देख सकते हैं कि हम किस तरीके से उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब ऑप्टिमाइज़ क्या, अभी हम एक सॉल्यूशन पे भी नहीं पहुँचे हैं तो ऑप्टिमाइज़ तो मतलब देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। बट हाँ जो थोड़ा थोड़ा इट साउंड्स लाइक कि हम क्या कर सकते हैं वो यही मेरे को लग रहा है कि भाई कुछ लोग का ऑर्डर ऑलरेडी काम हो चुका है कुछ लोग के ऑर्डर में, तो अगर उनके बीच में इन्वर्जन आ रहा है ड्यू टू दिस कॉलम तो फिर हमें इस कॉलम को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि बस हमें ये चेक करना है कि भाई हमारे इस कॉलम की वजह से क्या किसी के जिसने अपना ऑलरेडी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर सॉर्टेड नहीं कर रखा है क्या उसके ऑर्डर में कोई दिक्कत आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर उसके ऑर्डर में कुछ दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब फिर भाई हमें अपने आप को हमें मतलब बेसिकली इस कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली द मेन गोल आई थिंक, है ना।
दैट इज़ आई थिंक द मेन गोल। अब हम देख सकते हैं कि भाई इसको हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्टोर करना मतलब मेन टास्क होने वाला हमारे आई थिंक, क्योंकि अगर एक बार इसको हमने इजीली स्टोर कर लिया ना, इजीली हम फेच कर पा रहे हैं, तो फिर तो हमें बस बेसिकली हर एक कॉलम पर जाकर यही सेम इंफॉर्मेशन फेच आउट करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल डिसाइड एट दैट टाइम कि भाई हमें इस कॉलम को ऐड करना है या फिर नहीं, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम? कैसे स्टोर कर सकते हैं हम? देखो n की वैल्यू है 1000, सॉरी 100, और स्ट्रिंग का साइज भी है 100, तो मतलब n स्क्वायरिश कुछ कर सकते हैं हम। n स्क्वायर मतलब कि हम भाई डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, एंड देन मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 भी कर सकते हैं हम, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। मतलब अगर हम n स्क्वायर देखो कर सकते हैं, है ना, तो क्या हम मतलब सबके लिए स्टोर नहीं कर सकते कि क्या इनके बीच में जो ऑलरेडी मतलब ये क्या सॉर्टेड साबित हो चुके हैं या फिर नहीं साबित हो चुके हैं, है ना। तो मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे मान लो मेरे पास है कोई एक अच्छा एग्जांपल मिल जाए, मान लो जैसे मेरे पास 3-4 वर्ड्स हैं, ठीक है। मान लो जैसे एक वर्ड है ZXAB, ठीक है। दूसरा वर्ड मान लो है मेरे पास ZYBC, एंड देन फिर मान लो मेरे पास एक वर्ड है A, ऐसे कुछ मान लो एक ऊपर A है, फिर उसके बाद Z है, फिर BC, ऐसे कुछ है, ठीक। और उसके बाद मेरे पास बाद में है एक वर्ड AIZC, ठीक, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं n स्क्वायर एक्चुअल में कर सकता हूँ चीज़ें, तो क्या मैं बेसिकली अगर मैं इसको इंडेक्सेस दे दूँ, ये मान लो मेरी 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, ये एक्चुअल में स्ट्रिंग्स है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं 0 के करस्पॉन्डिंग पता क्या स्टोर करूँगा, 0 के करस्पॉन्डिंग में स्टोर करूँगा इन चारों के लिए डेटा, ठीक। अपने लिए तो क्या ही स्टोर करेगा, अपने लिए तो कुछ नहीं करेगा, बेसिकली अपने लिए हमेशा ट्रू रख लो, मान लो कि भाई हाँ ठीक है मैं अपने आप में सॉर्टेड हूँ। लेकिन मेरा दूसरे के रिलेटिव में क्या पर्सपेक्टिव अभी तक चल रहा है, ठीक। जैसे कि मान लो मैं पहली वाली अभी कॉलम की बात कर रहा हूँ, मतलब हर एक कॉलम टू कॉलम की बात करेंगे, तो पहले कॉलम की मान लो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब मेरे को चेक करना है ये चीज़
कि भाई इस कॉलम में किसी भी दो पेयर्स के बीच में जहां पर भी एक दिक्कत पैदा हो रही है, क्या वो दिक्कत उन लोगों ने ऑलरेडी सॉर्ट कर रखी है या फिर नहीं सॉर्ट कर रखी है। ठीक, यही मेन लॉजिक है, ये समझने की पूरी कोशिश करना। देखो दिक्कत ये है कि मान लो देखो मेरे को ए मिला, ठीक, ए पहले आ रहा है, जेड बाद में आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। ए पहले आ रहा है, जेड बाद में आ रहा है, इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है, जेड के बीच में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस ए के साथ हो रही है। देखो इन लोग को क्या दिक्कत हो रही है, इस ए के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस z और a के बीच में दिक्कत हो रही है, इस z और a के बीच में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि एक z रख के जिस भी वर्ड में एक z है वो वर्ड मेरा a वाले स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले आ रहा है, ठीक। एक z से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है वो a से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले आ रहा है। तो अगर इन लोगों ने पहले कभी अपने बेसिकली बीच का क्लैश सॉल्व नहीं कर रखा है, अपने बीच का क्लैश कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो जैसे कि ऐसा होता कि भाई इसमें एक कैरेक्टर पहले भी होता, वो ए होता, ठीक, वो ए होता, और यहाँ पर मान लो एक बी होता, एंड देन अब ये बाद का क्लैश है। मान लो ये वाला कैरेक्टर इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, क्योंकि देखो इसमें तो आपका ए छोटा है एंड बी बड़ा है। अब ये जेड की हम बेसिकली की पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, तो हमें तो दिख रहा था कि भाई ये क्लैश है, बट ये क्लैश तो ये लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें दिख रहा था कि भाई इसमें जेड है और इसमें ए है और ये पहले आ रहा है, ठीक। तो भाई अगर अभी क्लैश है और वो क्लैश कभी पहले सॉल्व नहीं हुआ है, अगर मान लो ये क्लैश कभी सॉल्व नहीं हुआ होता तो, और यही मान लो पहली बार है जब इन दोनों के बीच में आपस में डिसाइड हो रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उस केस में अब आपको बोलना ही पड़ता कि भाई अब मैं इसको नहीं रख सकता हूँ, मेरे को ये कॉलम डिलीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कॉलम मैंने रख लिया तो मेरे पास भाई एक ऐसा कैरेक्टर है एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें z पहले आ रहा है और एक ऐसी स्ट्रिंग बाद में लिखी है जिसमें a बाद में आ रहा है। तो मतलब मेरा भाई ये मेरे लेक्सिकोग्राफिकल कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप बाद के कैरेक्टर्स आप चाहे जितना प्रोसेस कर लो, मेरा एक ऐसा स्ट्रिंग बनेगी जिसमें a लिखा होगा और फिर बाद की कुछ स्ट्रिंग होगी, फिर यहाँ पर एक स्ट्रिंग होगी जिसमें z लिखा होगा, फिर कुछ स्ट्रिंग होगी, फिर एक होगा जिसमें z लिखा होगा कुछ स्ट्रिंग होगी, फिर a लिखा होगा कुछ स्ट्रिंग होगी। ये कभी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में बन ही नहीं सकता। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि क्लास आपने पहले सॉल्व कर रखा हो, तो ये कैसे पता चलेगा मेरे को? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं स्टोर कर लूँगा कि मेरा क्या जीरोथ इंडेक्स वाली स्ट्रिंग का क्लैश जो है वो 1 के साथ कभी सॉल्व हो रखा है या फिर नहीं। अगर सॉल्व रखा है तो आप यहाँ पर टिक कर दो कि भाई हाँ ये सॉल्व हो रखा है, यानी कि बूलियन वैल्यू आप लेके चल लो। मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग आप स्टोर करोगे, 0 के साथ क्लैश सॉल्व हो रखा है कि नहीं, 1 के साथ हो रखा है कि नहीं, 2 के साथ हो रखा है कि नहीं, 3 के साथ हो रखा है कि नहीं। जिसके साथ भी आपका क्लैश सॉल्व हो रखा है उसमें आप बेसिकली ट्रू स्टोर कर दो, अदरवाइज आप फॉल्स स्टोर कर दो। तो अगर आपको कभी इस कॉलम में क्लैश मिलता है जिन दोनों के बीच में, उनका आप जाके यहाँ पर चेक कर लोगे कि भाई ये क्लैश कभी पहले सॉल्व हो रखा है या नहीं। अगर सॉल्व हो रखा है तो मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। मतलब कि आप उनके क्लैश की चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी सबका देखो। अगर कोई भी एक ऐसा बंदा मिल गया आपको जिसका क्लैश पहले सॉल्व नहीं हो रखा है और यहाँ पर वो क्लैश क्रिएट हो रहा है इस कॉलम में, तो मतलब ये कॉलम डिलीट होना है, ठीक। बस ये मेरा मेन लॉजिक बेसिकली यहाँ से जो मैं सोच पा रहा हूँ वो यही है, क्योंकि आपको जब n² अलाउड है तो n² आप भाई स्टोर कर लो और हर बार आप n² को अपडेट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली एक पर कॉलम क्वेरी करनी है, ठीक। पर कॉलम अगर आप देखो तो कॉलम भी आपके कितने हो सकते हैं? कॉलम आपके उतने ही हो सकते हैं जितनी आपकी स्ट्रिंग की साइज है, और स्ट्रिंग की साइज आपकी 100 ही है। तो 100 के लिए आप बेसिकली n² चला सकते हो, मतलब कि आपका ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो 10⁻6 ही निकल के आएगी, ठीक। तो बेसिकली हर एक रो बेसिकली कॉलम वाइज आप प्रोसेस करने की कोशिश करोगे, और इस कॉलम को आपको डिलीट करना है कि नहीं ये आप कैसे फिगर आउट करोगे? पहले आप देखोगे हर दो लोग के बीच का क्लैश चेक करोगे कि भाई क्या कोई एक छोटा जिसके पास छोटा कैरेक्टर है वो बाद में है और एक बड़ा कैरेक्टर वाला पहले प्रेजेंट है, ऐसा कभी है कि नहीं? अगर है तो वो क्लैश है, और वो क्लैश ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है कि नहीं वो आप कहाँ से चेक करोगे? वो आप अपनी एक एरे बना के रखोगे जिसमें आप क्लैश की बेसिकली हिस्ट्री रखोगे कि वो सॉल्व हो रखा है कि नहीं। अगर सॉल्व हो रखा है तो भाई इसको इग्नोर कर दो, अगर नहीं सॉल्व हो रखा है मतलब ये कॉलम डिलीट होना है, ठीक। बस इतना सा आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये जो n³ वाला n² और ये जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ मान लो l मान लो, तो आपका n² इंटू l वाला जो लॉजिक है वो मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है मेरे को, ठीक। अब मेरे को नहीं पता कि इसमें dp हम उसको ही शायद कंसीडर कर रहे हैं dp की तरह, क्योंकि हम वो बेसिकली हर बार अपडेट भी तो कर रहे हैं कि हमारा एक क्लैश सॉल्व हो गया है तो मान लो इसको अपडेट कर देते हैं। अगर क्लैश अभी नहीं सॉल्व हुआ है तो फिर हम उसको एज अ फॉल्स ही रखेंगे अपने पास, ठीक। तो आई डोंट नो कि मतलब मैं कितने अच्छे से समझा पाया उसको या फिर नहीं, बट जो मेरा मेन मोटा थॉट है वो कुछ ऐसा ही सा थॉट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब आप लोग को इसमें कुछ
डाउट लग रहा हो, कुछ ऐसा है जो मैं क्लियर आउट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो आप मेरे से पूछ सकते हो यहाँ पर। रो वाइज स्ट्रिंग देखनी है, कॉलम नहीं, स्ट्रिंग्स तो रो वाइज ही है। हम जो बेसिकली कॉलम डिलीट करने हैं ना, हमें किसी एक कॉलम की हम सारी वैल्यूज डिलीट कर सकते हैं, तो हम पर कॉलम जाके चेक कर रहे हैं कि ये कॉलम क्या डिलीट होगा या फिर ये कॉलम डिलीट नहीं होगा। अब ये कॉलम डिलीट कब होगा, देखो ये कॉलम तब डिलीट होगा जब इसमें किन्हीं दो लोगों के बीच में एक इन्वर्जन टाइप का कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक। क्योंकि हम बेसिकली अगर हम पहले कॉलम की बात करें तो ये देखो हर एक स्ट्रिंग का हाईएस्ट जो आपका प्रेसिडेंस रखता है वो वाला कैरेक्टर है, मतलब कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी की है। अगर यहाँ पर किसी ऊपर वाली स्ट्रिंग में आपके पास ए प्रेजेंट है और नीचे वाली स्ट्रिंग में बी प्रेजेंट है, इसका मतलब उनके बीच में अब वो जो ए वाली स्ट्रिंग थी वो छोटी हो गई और बी वाली स्ट्रिंग बड़ी हो गई। अब फ्यूचर में ए वाली स्ट्रिंग में चाहे जो भी हो वो कभी भी आपकी छोटी नहीं, वो कभी भी आपकी बेसिकली बड़ी नहीं हो सकती, और नीचे वाली अगर आपकी बी वाली स्ट्रिंग में कुछ भी कितने से कितना भी मैं छोटा कैरेक्टर रख दूँ वो कभी छोटा नहीं हो सकता, ठीक। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक सेकेंड, हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो जैसे कि आपके पास स्ट्रिंग मान लो लिखी हुई है, मान लो कोई एक स्ट्रिंग है जिसमें पहले कॉलम में आपके पास ए प्रेजेंट है, ठीक, और नीचे एक स्ट्रिंग है जिसमें पहले कॉलम में बी प्रेजेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब बाद के कैरेक्टर आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, चाहे मान लो इसमें बाद में चाहे जितने घटिया से घटिया कैरेक्टर हो, मान लो सारे जेड हो, और इसमें मान लो चाहे सबसे बेस्ट कैरेक्टर हो यानी कि ए हो, फिर भी अब क्योंकि यहाँ पर आपका इन दोनों के बीच में ये क्लैश जो है वो सॉल्व हो चुका है कि भाई ए आपका छोटा है और बी आपका बड़ा है, अब बाद के कैरेक्टर से मतलब भी नहीं है, आपकी ये स्ट्रिंग हमेशा छोटी होने वाली है और ये स्ट्रिंग हमेशा बड़ी होने वाली है, ठीक। ये मेरा मतलब है क्लैश रिजॉल्व होने का, ठीक। अब देखो दिक्कत क्या आ सकती है कि मान लो भाई एक कॉलम है मेरे पास, इसमें यहाँ पर मान लो z लिखा हुआ है और नीचे कहीं पे a लिखा हुआ है, ठीक, या फिर कोई भी छोटा कैरेक्टर मान लो p लिखा हुआ है, ठीक। तो देखो अब इन दोनों के बीच में एक तरीके से हमारा इन्वर्जन आ गया कि भाई एक छोटी बेसिकली एक बड़ा वाला कैरेक्टर ऊपर प्रेजेंट है और छोटा वाला नीचे प्रेजेंट है। आपको चाहिए कि भाई स्ट्रिंग जो होनी चाहिए वो एट द एंड लेक्सिकोग्राफिकल होनी चाहिए, तो z अगर ऊपर है और p नीचे है तो ये गलत हो जाएगा ना। बट आपको केवल इस कैरेक्टर को थोड़ी देखना है, आपको तो इधर की स्ट्रिंग और इधर की स्ट्रिंग को भी देखना है। अगर मान लो इधर की सारी स्ट्रिंग में ये इसमें भी मान लो सारे ए लिखे होते हैं, यहाँ पर भी सारे ए लिखे होते हैं, तो अब ये आपका डिसाइडर होता कि भाई आपके पास यहाँ पर z है और यहाँ पर p है, तो उस केस में आपका ये z वाला जो है वो बड़ा हो जाता और ये p वाला जो है वो छोटा हो जाता। इसका मतलब ये लोग अभी अपना क्लैश रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि भाई मान लो यहाँ पर b लिखा होता, ठीक, यहाँ पर पहले कभी b हुआ होता, तो इसका मतलब इन्होंने a और b पे ही क्लैश रिजॉल्व कर लिया है। तो अब चाहे यहाँ पर z लिखो चाहे यहाँ पर p लिखो, उससे मतलब होगा ही नहीं, मतलब इस कॉलम के होने या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपने क्लैश जो है वो ऑलरेडी रिजॉल्व कर रखा है। तो मतलब कॉलम तभी डिलीट होगा जब कोई ऐसे दो आपको बेसिकली स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जिन्होंने अपना क्लैश प्रीवियस में कभी रिजॉल्व नहीं कर रखा है और वो यहाँ पर पहली बार मिल रहे हैं
और उसमें यहाँ पर बेसिकली आपका एक बड़ा कैरेक्टर है और यहाँ पर एक छोटा कैरेक्टर है, तो उस केस में आपको फिर इस कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाद में चाहे आप जो भी कर लो उससे आपका इस कॉलम के होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब इसको आप डिलीट ही करोगे तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज आप बेसिकली अपनी स्ट्रिंग को कभी लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड बना ही नहीं सकते हो। रो वाइज स्ट्रिंग चूज करनी है, लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर है तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। इसमें उसे चेक है कि कॉलम में वो सेटिस्फाई हो तो सेफ है वाला। मतलब माइट भी पॉसिबल कि हाँ LIS से भी सॉल्व हो सकता है, बट मेरे को एट दिस मोमेंट LIS ऐसे मतलब सच स्ट्राइक नहीं कर रहा है। बट हो सकता है, बट व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम LIS वाले तरीके से करेंगे? विल इट बी बेटर देन n स्क्वायर इंटू L? मतलब LIS है तो शायद बेटर हो सकती है, क्योंकि हम मतलब बाइनरी सर्च वाला तरीके से भी LIS निकल सकता है, तो माइट भी पॉसिबल कि वो log n वाला फैक्टर आ जाए कि n स्क्वायर की जगह n log n इंटू L ऐसा समथिंग कॉम्प्लेक्सली कुछ होगा। बट हाँ, एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक आई एम एबल टू थिंक ऑफ LIS वाली अप्रोच, बट द बेस्ट आई कैन डू इज टू ट्राई टू कोड व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक। मतलब हाँ, लेट्स ट्राई टू कोड दिस, तो शायद मैं भी अपने थॉट जो हैं वो आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझा पाऊँ, बट दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ राइट नाउ। सो मतलब मेरा जो कहना है वो ये है कि भाई मैं एक क्लैश रिजॉल्व करने के लिए एक बेसिकली अपना n क्रॉस n का एक बूलियन एरे बना के चलूँगा, ठीक है। तो जो n होगा वो बेसिकली होगा मेरा strs.size, ठीक, एंड इट विल बी अ बूलियन एरे, या फिर मैं 1 और 0 भी लेके चल सकता हूँ, डजंट रियली मैटर, ठीक। और ये मेरा n साइज का होगा बेसिकली, एंड वेक्टर ऑफ इंट एंड इट विल ऑल्सो बी n, एंड इनिशियली सबको 0 है कि भाई किसी ने अभी तक अपना क्लैश रिजॉल्व नहीं कर रखा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई, मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मैं हर कॉलम को मौका दूंगा कि भाई तुम्हें रखा जाए या फिर तुम्हें डिलीट कर दिया जाए, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं कुछ ऐसा सा अच्छा, हमें केवल आंसर की लेंथ रिटर्न करनी है, ओके कूल। तो हमें एक्चुअल में वो लेके भी नहीं चलने की ज़रूरत है, तो हम बेसिकली केवल आंसर लेके चलते हैं, ठीक। और देखते हैं कितने हमें रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है, कितने रिमूव करने पड़ेंगे, एंड देन जो टोटल कॉलम्स है उसमें से हम जितने रिमूव कर सकते हैं वो लेके चल देंगे, ठीक है। और m ले लेते हैं हम, जो हमारा हो जाएगा strs ऑफ 0.size, क्योंकि सारी स्ट्रिंग का साइज़ जो है वो सेम है, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक। मतलब इतने मेरे पास कॉलम्स की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो लेट्स नेम इट j, ताकि वो थोड़ा बेटर साउंड करे, ठीक। मतलब अब मैं कॉलम बाय कॉलम जाऊंगा बेसिकली, एंड कॉलम बाय कॉलम जाऊंगा और हर कॉलम को मौका दूंगा कि भाई क्या तुम्हारे पास कोई, मतलब क्या तुम रहने के लायक हो या फिर नहीं रहने के लायक हो, मतलब कि क्या तुम कोई ऐसा इन्वर्जन तो नहीं क्रिएट करो जिसका क्लैश ऑलरेडी रिजॉल्व ना हुआ हो। अगर तुम ऐसा कोई क्लैश रिजॉल्व, अगर कोई ऐसा तुम्हारे
साथ कोई एक ऐसा इन्वर्जन आ रहा है जिसका क्लैश ऑलरेडी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें अपने आप को हटाना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को ना चाहते हुए भी तुम्हारा कॉलम रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं तुमको लेके आगे बढ़ जाता हूं तो फ्यूचर में चाहे जो भी हो, मैं कभी ये मेक श्योर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस में एक ऐसा कॉलम छोड़ दिया है जहां पर एक इन्वर्जन क्रिएट हो गया है। तो फ्यूचर की मेरी चॉइसेस कोई मायने नहीं रखेंगी, मेरा कभी भी आंसर जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं बन पाएगा। ठीक, तो दैट्स वाई मैं कहता हूं कि भाई अब मैं यहां पर सारे जितने भी क्लासेस पॉसिबल हैं वो सारे क्लासेस मैं ट्राई करूंगा। ठीक, तो मतलब कि अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर अगर मैं इसको चेंज करके सी कर देता हूं ताकि थोड़ा कॉलम जैसा लगे ये, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसमें सारी स्ट्रिंग्स के आपस में क्लैश चेक करूँगा। तो आई ये हमारा हो गया, एंड उप्स, ठीक है, यहाँ पर अब हमारा बेसिकली 2 लूप हम चला रहे हैं जिसमें हम सारे आपस में क्लैश रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब आपस में खुद से तो क्लैश होगा नहीं, तो बेसिकली जहाँ पर भी आई हमारा जे के बराबर नहीं है वहीं पे बेसिकली हम केवल क्लैश देखेंगे। ठीक, जहाँ पर आई जे के बराबर नहीं है, और क्लैश कब आएगा, क्लैश तब आएगा जब एक छोटे वाले उस पे जो कैरेक्टर है, ठीक, तो बेसिकली हम शायद इसको i+1 से भी चला सकते थे, दैट वुड मेक मच मोर सेंस, है ना। अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो देखो i हमेशा छोटा है, j हमेशा बड़ा वाला है, यानी कि अब हम सारी स्ट्रिंग को बेसिकली i और उसके बाद वाली हर एक स्ट्रिंग को मौका दे रहे हैं। मतलब कि अब इसका जो कैरेक्टर होना चाहिए इस सीएथ कॉलम में, और इस अगली वाली जो स्ट्रिंग मैं पिक कर रहा हूँ उसका जो सीएथ कॉलम में जो भी कैरेक्टर है, इन दोनों के बीच में चेक होगा कि भाई आइडियली अगर मेरे को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड बनाना है तो ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर इन्वर्स है उसका कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है, तो फिर इनका क्लैश अगर पहले रिजॉल्व नहीं हुआ है तो मतलब ये एक क्लैश क्रिएट कर रहे हैं और ये मेरे को हटाना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैं देखना चाहता हूं कि भाई इफ अगर मेरा जो भी मेरी स्ट्रिंग है strs ऑफ i का ch वाला कैरेक्टर, इफ इट इज ग्रेटर देन मेरा strs का j का ch वाला कैरेक्टर। ठीक, तो इसका मतलब कि यहां पर मेरा एक इन्वर्जन आ गया है। अगर इसका क्लैश ऑलरेडी रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक, मतलब कि एंड अगर ऐसा कुछ है और इसका क्लैश पहले रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसका मतलब कि अब मेरे को ये कॉलम हटाना पड़ेगा। तो इसका क्लैश रिजॉल्व हुआ है या फिर नहीं, ये कैसे चेक करूंगा मैं, ये मैं चेक करूंगा अपने क्लैश वाले एरे से। ठीक, क्लैश वाले एरे में मेरे पास पड़ा होगा कि भाई क्लैश ऑफ i और j, क्या ये रिजॉल्व हो चुका है या फिर नहीं। अगर 1 पड़ा है इसका मतलब रिजॉल्व हो चुका है। ठीक, और अगर 1 नहीं पड़ा इसका मतलब रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि अगर मान लो मेरे पास 0 पड़ा हुआ है, इसका मतलब अभी मैंने एक इन्वर्जन क्रिएट करा है इस कॉलम में, एंड ये क्लैश ऑलरेडी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर ये क्लैश ऑलरेडी रिजॉल्व नहीं हुआ और आपने एक इन्वर्जन क्रिएट करा है, तो इसका मतलब ये कॉलम आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक, ये कॉलम आपको रिमूव करना ही पड़ेगा एंड यू विल बेसिकली रिमूव दिस कॉलम। तो रिमूव वाला कॉलम आपका 1 बढ़ जाएगा। ठीक, और अब आप बेसिकली एक भी क्लैश रिजॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि आपका कॉलम ही हट जाएगा। तो अब यहाँ पर इस कॉलम का कोई वजूद नहीं रह गया। तो अगर कॉलम रिमूव नहीं हो रहा है तभी केवल क्लैश आप रिजॉल्व कर सकते हो। अगर कॉलम ही आपका रिमूव हो रहा है तो फिर आप कोई क्लैश रिजॉल्व कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, और आइडियली हमें यहाँ से बेसिकली ब्रेक कर जाना चाहिए। अगर किसी एक के लिए भी ऐसा हो जाता है तो हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे एंड हम एक मान लो किसी फ्लैग को फॉल्स कर देते हैं एंड देन हम यहाँ से ब्रेक कर जाते हैं। ठीक, और इससे भी हमें ब्रेक करना है तो इसलिए हम ये फ्लैग ये वाला चेक करके इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स तो हम यहाँ से भी ब्रेक कर जाएंगे। ठीक, एंड यहाँ पर हम अपना ये वाला फ्लैग क्रिएट कर लेंगे जिसको हम ट्रू से इनिशियलाइज कर लेंगे एंड ब्रेक करके हम बाहर आ चुके हैं। ठीक है, किसी ने एक ने भी अगर क्लैश ख़राब करा तो मतलब ये कॉलम हटेगा, और या तो हम यहाँ पर अगर नहीं प्लस प्लस करना चाहते तो हम बाहर आके प्लस प्लस कर सकते हैं। जब इस सी की बारी चेक हो रही है तो यहाँ पर बाद में आके इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपना रिमूव वाला कॉलम को 1 इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई बात कि भाई जब हटेगा। अब मान लो नहीं हट रहा है, अगर नहीं हट रहा है तो इसका मतलब अब वो कुछ क्लैशेस रिजॉल्व करेगा। ठीक, अब वो जो क्लैशेस रिजॉल्व करेगा वो हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी कुछ अलग नहीं होने वाली क्योंकि यहाँ पर हम n² ऑलरेडी लगा चुके हैं
और आप बोलोगे भाई इस लूप के अंदर ही क्यों नहीं करा, क्योंकि इस लूप के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई हम मान लो कुछ क्लासेस रिजॉल्व कर दें और उसके बाद हमें पता चले कि भाई हमें ये कॉलम ही डिलीट करना पड़ेगा, तो फिर जो हमने रिजॉल्व कर दिए वो सारे अब बेकार हो जाएंगे ना। ठीक, तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई पहले आप एक बार चेक कर लो कि क्या होना पॉसिबल है भी या फिर नहीं। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर मैं कहता हूं कि अब आगे बढ़ो। ठीक, नहीं पॉसिबल है तो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर होना पॉसिबल है, मान लो कि भाई हमारा कोई भी क्लैश आ ही नहीं रहा है, ठीक, या फिर जो भी क्लैश आ रहा है वो ऑलरेडी रिजॉल्व है, तो मैं कहता हूं कि भाई अब आप कुछ और क्लैशेस को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो किसको रिजॉल्व कर सकते हो, मैं कहता हूं फिर से आप सेम लूप चलाओ। ठीक, फिर से आप वही 2 लूप चलाओगे एंड इस बार लूप्स में मैं क्या करूंगा, इस बार मैं अपने क्लैशेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो मेरा लूप वही फिर से i+1 से एंड j इज लेस देन n एंड j++। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा। अब देखो अब क्या सवाल मैं इससे पूछने वाला हूं, मैं सवाल इससे पूछने वाला हूं कि देखो भाई क्या तुम्हारा ith का जो भी ch वाले कॉलम का कैरेक्टर है, ठीक, ch नहीं बेसिकली c कॉलम था हमारा, ch तो पता नहीं क्यों लिख दिया हमने। ठीक, ठीक है, क्या मेरा ith के c वाला जो भी कैरेक्टर है, इफ दैट इज लेसर देन हमारा जो भी jth का c वाला कैरेक्टर है। ठीक, इसका मतलब आपका ऊपर वाली जो भी स्ट्रिंग है उसमें एक छोटा कैरेक्टर आ रहा है और नीचे वाली स्ट्रिंग में बड़ा कैरेक्टर आ रहा है। ठीक, तो मतलब आप एक पोजीशन में हो जहां पर आप कोई क्लैश रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक, कैसे क्लैश रिजॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे क्लैश रिजॉल्व कर सकते हो कि जैसे मान लो देखो आपके पास यहाँ पर आपको एक a दिखाई दिया और यहाँ पर आपको कहीं नीचे b दिखाई दिया, तो आप बोलोगे ना भाई कि ये a छोटा है और ये b बड़ा है, तो इसका मतलब ये अब हमेशा आगे भाई हमें मैटर नहीं करता। अब आगे भाई यहाँ पर मैं सारे z भी लिख दूँ और यहाँ पर सारे मैं चाहे a भी लिख दूँ, फिर भी मेरा ये वाला जो कैरेक्टर है ये हमेशा, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये हमेशा मेरी छोटी होने वाली है और ये हमेशा बड़ी होने वाली, तो आगे की किसी भी कॉलम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इनका क्लैश रिजॉल्व हो चुका है। ठीक, तो बस मैं यही करना चाहता हूँ कि भाई इनका क्लैश रिजॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं इनको लिख देता हूँ कि भाई तुम्हारा क्लैश रिजॉल्व हो चुका है, यानी कि क्लैश ऑफ जो भी मेरा i है और j है वो अब रिजॉल्व हो चुका है। ठीक, बस मेरे को यही करना है जिनके जिनके लिए भी बेसिकली पॉसिबल हो। और आप ये बोल सकते हो कि भाई आप पीछे वाला देखे बिना कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे क्लैश रिजॉल्व हो सकता है। मैं कहूँगा देखो या तो पहले ही क्लैश रिजॉल्व हो चुका होगा तो ये रिजॉल्व करना मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। ठीक, या तो पीछे रिजॉल्व नहीं हुआ है तो फिर मैंने वो कॉलम उड़ा दिया होगा, क्योंकि मैं कभी भी रिजॉल्व करे बिना आगे बढ़ूंगा ही नहीं ना, मैं तो वो कॉलम ही उड़ा दूंगा। और या तो इक्वल आ रहे होंगे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इक्वल के केस में हम रिजॉल्व करेंगे नहीं कभी। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपने क्लैश वाले को भी अपडेट कर लिया। तो अब मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर मैंने लिखा है वो शायद मेरा काम करना चाहिए। ठीक, तो मेरा आंसर जो होगा वही होगा कि भाई कितने कॉलम बचेंगे, तो जितने कॉलम बचेंगे या फिर मेरे को कितने डिलीट करने हैं, क्या मेरे को रिजल्ट क्या देना है, आफ्टर डिलीटिंग अ कॉलम फाइनल एरे विल बी दिस। हाँ, तो मेरे को एक्चुअल में जितने मैं डिलीट करने वाला हूँ वो बेसिकली मेरे को देना है, तो मैं डायरेक्टली जो भी मेरा रिमूव है वो मैं दे सकता हूँ, यानी कि उसको मैं अगर आंसर ही डायरेक्टली लिख लेता हूँ फिर। ठीक, ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी क्या हम जो सोच रहे हैं वो पॉसिबल है भी या फिर नहीं। कूल, ओके, अच्छा इसमें A मिल गया, इसमें मेरे को B मिला। What?
string of 0 0. Shit. I think I have read the problem statement wrong. Got it. इसमें स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करना था भाई. आई वॉज सॉर्टिंग सारी स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली. गॉट इट. नाउ आई थिंक LIS would make sense, right? बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. अगर मैं चेंज कर दूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, एंड अगर मैं बोलूँ कि भाई ऐसे कुछ कॉलम्स डिलीट करने हैं आपको, सच दैट कि आपको इनको आपस में लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करना है. आपको सारी ओवरऑल जितनी भी स्ट्रिंग है इन सबको आपस में लेक्सिकोग्राफिकली अरेंज करना है. देन दैट प्रॉब्लम आई हैव सॉल्व्ड. ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, ओके. नाउ आई थिंक दैट स्टेटमेंट की रो वाइज स्ट्रिंग देखनी है, कॉलम वाइज नहीं, मेक्स सेंस. आई शुड हैव पुट सम अटेंशन देयर. Got it. Hello, Moody Wish. Yeah, I'm good. I always skip hard question because it makes me नहीं, मतलब there are levels to hard problems. मतलब अगर कॉन्टेस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिर जो 5 पॉइंटर होती है आई थिंक वो थोड़ी सी डुएबल भी होती है, बट वही ये हार्ड में आपको समझ नहीं आता टैग देके केवल कि कौन सी 5 पॉइंटर है, कौन सी 8 पॉइंटर है. तो दैट्स वेयर आई थिंक द मेजर फियर केम फ्रॉम. जो आप 5 पॉइंटर्स अगर आप प्रॉब्लम ढूंढोगे कॉन्टेस्ट्स में जाके, अगर आप प्रीवियस कॉन्टेस्ट में जाओ और वहाँ पर जो भी 5 पॉइंटर प्रॉब्लम्स आपको दिखे वो आप पहले ट्राई करो सॉल्व करने का, तो मतलब उससे आपके जो चांसेस है सॉल्व करने के वो थोड़े से बढ़ जाएंगे. तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ भाई हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्वेबल है. अब टैग उसका भी हार्ड ही है. अब आप वो 5 पॉइंटर है, आपको मतलब वही है कि आप अगर 8 पॉइंटर डायरेक्टली ट्राई कर रहे हो तो फिर वही है कि आपको हार्ड प्रॉब्लम से ही डर लगने लगेगा. तो आई थिंक दैट इज़ द कि आप पहले जाके 5 पॉइंटर चूज़ करो, 5 पॉइंटर सॉल्व करने की कोशिश करो. अब जब उसका आपका रेशियो अच्छा हो जाए कि हाँ आप मतलब 10 में से 5-6 प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो खुद से, तो फिर आप 6 पॉइंटर 7 पॉइंटर की तरफ जा सकते हो. हाँ, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से तो मतलब हार्ड क्वेश्चन रेयरली ही पूछा जाता है, बट हाँ पूछ सकते हैं. मतलब अब तो पूछ रहे हैं लोग, पहले तो फिर भी था कि नहीं पूछ सकते थे, बट हाँ अब तो पूछ रहे हैं लोग. विच प्रॉब्लम काउंट आर वी एट नाउ? तो वी आर currently at this problem which is 960. तो मतलब almost 10-11 I think. LIS था. हाँ, got it. मतलब मेरे को पहले ही सुन लेना चाहिए था LIS, बट हाँ मतलब दैट्स वाई LIS वॉज नॉट क्लिकिंग टू मी, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही गलत पढ़ लिया था, तो मेरे को वहाँ पे LIS का कोई सेंस नहीं बन रहा था. बट नाउ क्योंकि वो रो वाइज है तो नाउ LIS विल मेक सेंस. करेक्ट.
नाउ दिस मेक सेंस कि हाँ रो वाइज एवरी स्ट्रिंग इज इंडिपेंडेंट. मैं वही आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट सारी स्ट्रिंग्स को एज अ कॉलम वाइज, तो दैट्स वाई. हाँ गॉट इट नाउ आई गॉट इट. ठीक है यार, अभी के लिए थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर दिया इस क्वेश्चन ने, तो लेट्स स्किप दिस फॉर नाउ. अभी थोड़ी देर बाद उठाता हूँ इसको फिर दोबारा से, क्योंकि अभी मेरा दिमाग वही चल रहा है पुराना ही चीज़. तो आई थिंक दूसरा ट्राई कर सकते तब तक के लिए हम, विच इज़ द नेक्स्ट वन, मूविंग स्टोन्स अंटिल कॉन्जिक्यूटिव 2. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू रीड प्रॉब्लम स्टेटमेंट. There are some stones in different position on x-axis. You are given an integer array stones. The position of the stones, call a stone an endpoint stone if it has the smallest or largest position. In one move, you can pick up an endpoint stone and move it to an unoccupied position so that it is no longer an endpoint stone. So many endpoints. ठीक है, call a stone an endpoint stone if it is smaller than if it's smallest or largest position. Okay, in one move you can pick an endpoint stone and move it to an unoccupied position so that it is no. Okay, got it. In particular, if the stones are at say stone 1 to 5, you cannot move the endpoint stone at position 5, since moving to any position such that 0 or 3 will still keep that stone as an endpoint stone. Got it. The game ends when you cannot make any more moves. The stones are in 3 consecutive positions. Got it. Return an array answer of length 2, where answer of 0 is minimum number of moves you can play and answer of 1 is the maximum number of moves you can play. Got it. Call a stone and okay. ठीक है, 6 5 4 3 1 0. We can move 3 to 8, then 10 to 7. Okay, 3 4 5 6. तब मूव द स्टोन, एंड पॉइंट वाले स्टोन को ऐसी जगह मूव करो सच दैट इट इज नो लॉन्गर एंड पॉइंट स्टोन. गॉट इट. तो मतलब साउंड थोड़ा सा सिंपल आई थिंक. तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल उठा ले वाला, नहीं ये वाला, तो इट वॉज 6 5 4 3 10. तो 6 5 4 3 एंड 10 है ना. तो मतलब किसी भी स्टोन को उठाकर 6 को बेसिकली उठाकर कहाँ पे रख सकते हो, किसी ऐसी जगह पे रखोगे सच दैट कि वो एंड पॉइंट स्टोन ना हो. नहीं, बट आई थिंक ये केवल ऑर्डर दिया हुआ है, राइट.
इट हैज़ अ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पोजीशन। मतलब ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, क्या इसका कोई मतलब है, या फिर 4 हमारा जो एंड पॉइंट स्टोन है, हाँ 4 इज़ एंड पॉइंट स्टोन, राइट, हाँ गॉट इट। तो यहाँ पर मतलब 3 इज़ एंड पॉइंट स्टोन, मतलब कि अगर इसको हम सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लें तो हमारा थोड़ा ज़्यादा हमें समझने में आसानी होगी। तो अब 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3 को हम मूव कर सकते हैं कहीं पे सच दैट कि अब वो एंड पॉइंट स्टोन ना रह जाए, है ना। तो 1 और 2 पे तो ले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर भी वो रह जाएगा, तो इसका मतलब बीच में ही कहीं लाना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास 4 5 6 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम इसको ला सकते हैं 7 पे, फिर हम 4 को बेसिकली ला सकते हैं 8 पे, एंड देन हम 5 को फिर ला सकते हैं 9 पे। तो बेसिकली 3 ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम वुड भी, तो आई थिंक जितने हमारे पास बीच में पोजीशंस खाली हैं हम उन सब पे एक एक करके बेसिकली उठा उठा के रख सकते हैं। तो बीच में जितनी भी हमारी पोजीशन खाली होगी, मान लो जैसे हमारे पास एलिमेंट 3 6 देन 12 देन 15 ऐसे कुछ पोजीशंस है हमारे पास मान लो, तो नहीं सारी नहीं यूज़ कर सकते, आई थिंक नहीं सारी यूज़ कर सकते हैं। मतलब पहले वाले का आई थिंक गैप छोड़ दें अगर हम, या तो पहले वाले का गैप छोड़ दें या तो इसका गैप छोड़ दें, क्योंकि उसके अलावा हम सब यूज़ कर सकते हैं। क्या हम यूज़ कर सकते हैं सारी, देखो इसको तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इनके बीच में हम कहीं भी रखेंगे तो अभी भी एंड पॉइंट ही रहेगा ये, ठीक। बट ये कर सकते हैं हम कि 3 को उठा के हमने यहाँ पर रखा, फिर हम 6 को उठा के बेसिकली यहाँ पर रखेंगे तो हमारा वो 8 बन जाएगा, ये मान लो 7 बन जाएगा, ठीक। अब फिर हम 7 को उठा के फिर से यहाँ पर रखेंगे तो 9 बन जाएगा, फिर 8 को उठा के यहाँ पर रखेंगे तो 10 बन जाएगा, फिर 9 को उठा के यहाँ पर रखेंगे तो 11 बन जाएगा, ठीक। फिर हम जिसको भी उठा के यहाँ पर रख सकते हैं 13 बन जाएगा, फिर जिसको भी उठा के यहाँ पर रख सकते हैं 14 बन जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक। तो इस बार हमने बेसिकली अपना इसका त्याग किया कि हम ये 3 से लेके 6 के बीच के लोगों का त्याग कर रहे हैं, ठीक। बट व्हाट वी कैन ऑल्सो डू, इस बार हमने देखो ये लेकिन यूटिलाइज कर लिया, बट व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज़ कि मान लो अगर हमारे पास ये जो गैप होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, मान लो ये 3 से लेकर 9 तक का गैप है एंड ये 12 है, ये 15 है, ठीक। तो अब अगर हम 3 को उठा के डायरेक्टली 10 पे रखेंगे तो आई थिंक ये जो बीच का गैप है ये वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो आई थिंक हम ये वाला गैप फिर वेस्ट करने को ले सकते हैं कि भाई हम इस 15 को उठा के पता क्या करेंगे, इस 15 को उठा के यहाँ पर रखेंगे हम 11 की जगह, फिर इस 12 को उठा के हम 10 की जगह रखेंगे, फिर अब 11 को उठा के हम 8 की जगह रखेंगे। तो अब ये वाला गैप हम पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे क्योंकि हमने 3 को मूव करा ही नहीं, 3 को मूव नहीं करा, इसलिए हम बेसिकली बीच में सारी वैल्यूज़ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से व्हाट विल बी द आंसर इज़, जो हमारा देखो बीच के हैं इन सब के बीच का जो गैप है वो तो होगा ही होगा, एंड साथ ही में अब हमारा जो सबसे पहला गैप है और जो सबसे लास्ट वाला गैप है उनमें से बेसिकली हम कोई एक गैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मेरे हिसाब से। बट व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कैसे हम डिसाइड करेंगे यार, मिनिमम अगर हमें बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मिनिमम अगर बनाना है तो मान लो हम फिर से सेम एग्जांपल ही लेते हैं, मान लो 3 8 एंड देन 11 एंड देन मान लो 15, ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब हमें मान लो मिनिमम बनाना है, तो जब हमें मैक्सिमम बनाना था तो हमने 3 को उठा के 9 पे रखा था, ठीक। बट अब हमें मिनिमम बनाना है तो इसका मतलब हम 3 को उठा के डायरेक्टली पता है कहाँ पे रखेंगे, 3 को उठा के ऐसी जगह पे रखेंगे, कहाँ पे रख सकते हैं, 3 को उठा के अगर मैं 10 पे रख दूँ मान लो, या फिर 10 पे भी नहीं, छोड़ो मैं 3 को उठा के मान लो यहाँ पे सीधा 14 पे रख देता हूँ, फिर 8 को उठा के हम क्या कर देते हैं, हम 8 को उठा के सीधा रख देते हैं 13 पे, फिर मैं 15 को उठा के क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ 12 पे। मतलब देखो सबको एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव लाना है, तो सबसे छोटी ऐसी क्या हम कॉन्जिक्यूटिव बना सकते हैं,
भैया मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बट आई ऑलवेज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, सो आई स्टार्टेड विद TSA, अब आई सॉल्व्ड 1128 क्वेश्चंस ऑन लीटकोड इजी 648 मीडियम दिस। मज़ा आता है तो अब हाँ यार देखो ऐसा ही होता है भाई, मज़ा आने लगता है एक बार अगर सॉल्व करने में, तो फिर मतलब फिर वो रेटिंग वगैरह वो सब कुछ चला जाता है, बस फिर ऐसे ही मज़े के लिए सॉल्व करता है आदमी। फिर वो इंटरव्यू वगैरह ये सब की कुछ सोच के नहीं आदमी करता, वो फिर केवल मज़े के लिए करता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम आई है तो सॉल्व करते हैं। एंड दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट वी कैन डू। मतलब मोस्टली तो मैं भी मज़े के लिए ही करता हूँ कि मतलब प्रॉब्लम है तो ट्राई करते कि सॉल्व करने का, हुई तो हुई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? स्मॉलेस्ट अगर हमें लाना है कैसे ला सकते हैं स्मॉलेस्ट? देखो लार्जेस्ट का तो समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट का क्या होगा? देखो जैसे मेरे पास 3, 8, 10, 15, 25 ऐसे कुछ है, तो अब स्मॉलेस्ट का क्या होगा? जिसके भी बीच का मेरे को गैप सबसे कम दिखेगा। ठीक, जैसे कि मान लो 3 और 8 के बीच का गैप क्या है, 8 और 10 के बीच का देखो गैप सबसे कम है ना? तो मैं 3 को उठा के बेसिकली अपना या 9 बना दूंगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं 25 को उठा के 11 बना दूंगा। नहीं भाई, फिर सब अपना एक एक करके स्वैप कर सकते हैं। तो एक ना एक गैप तो देखो तुम्हें फिल करना ही पड़ेगा, है ना? जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास 3, 8, 10, 15, 20, 60 ऐसा कुछ है, तो कोई एक ना एक मतलब तुम्हें 6 लोगों का गैप तो फिल करना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो अब मतलब आप ये चूज कर सकते हो कि उस 6 में से कितनों को मेरे को फिक्स रखना है। ठीक, जैसे कि देखो 6 है तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं 8 को फिक्स रखता हूँ, 10 को फिक्स रखता हूँ और 3 को नहीं कर सकता फिक्स। तो मतलब अगर मान लो ये मेरा 5 होता तो अब मैं बोलता कि भाई देखो मैं 8, 5 ये सबको फिक्स रखता हूँ। ठीक, अब मैं 60 को क्या बना दूंगा, 60 को 6 बना दूंगा, इसको मैं 7 बना दूंगा, इसको मैं 8 बना दूँ, इसको मैं बेसिकली 9 बना दूंगा। ठीक, तो मेरा ये हो गया, वो चीज़ कि मैं 3 ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म कर लिया मैंने। तो यही है कि आपको बेसिकली पता करना है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाना चाहते हो, है ना? क्योंकि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट बनाओगे उससे अगले 6 में या फिर अगले बेसिकली जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास, उसमें जितने लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सारे तो आप लोगे ही लोगे, बट जितने नहीं प्रेजेंट है वो सारे बेसिकली आप कहीं बाहर से लेके आओगे, राइट? तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल में एक्चुअल में देखूँ तो मेरे को दिख रहा है 4, 7 एंड 9। ठीक, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है 4, 7 एंड 9। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से जो मेरा आंसर था वो क्या था, वो यह था कि मेरे को एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और दूसरे वाले को बेसिकली लूँगा। तो मैं ये 2 है और ये मेरा 3 का गैप है आई थिंक। ठीक, यहाँ पर मैं 5, 6 रख सकता हूँ, यहाँ पर क्या 8 रख सकता हूँ। तो बेसिकली मैं चूज़ करूँगा कि मैं 9 को बेसिकली 5 पे ले जाऊँगा एंड देन फिर मैं 9 को मैं 6 पे ले जाऊँगा एंड देन फिर 7 को मैं 5 पे ले जाऊँगा। तो मतलब यहाँ पर मेरे 2 ऑपरेशंस यूज़ हो जाएंगे। ठीक, और साथ ही साथ अगर मान लो मेरे पास ये ऑप्शन है तो अब मैं चूज़ करूँगा कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या चूज़ करना चाहता हूँ ताकि मैं 3 जो भी है उसमें मेरे मैक्सिमम लोग कवर हो जाए।
देखो सॉर्ट तो करना है इसको, है ना, सॉर्ट तो करना ही करना है, और साथ ही साथ इसमें कुछ मैं बाइनरी सर्च टाइप का भी सोच पा रहा हूँ आई थिंक, है ना, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि इस 7 से स्टार्ट करके मेरे को आगे 3 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक, टोटल मतलब मैं 3 वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ 7 से स्टार्ट करके। तो मेरा जो वो आएगा 7, 8 एंड 9, है ना। तो 9 तक में कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मेरी एरे में प्रेजेंट है, इस 7 से स्टार्ट करके 9 तक कितनी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, ये कैसे मैं फाइंड करूँगा, ये मैं बाइनरी सर्च से आई थिंक फाइंड कर सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट द मेन लॉजिक दैट आई कैन थिंक ऑफ आई थिंक। लेट्स सी अगर कुछ हिंट वगैरह हैं तो बाइनरी सर्च है क्या उसमें, टॉपिक्स में है क्या बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च है ही नहीं कहीं पे, ठीक है, सॉर्टिंग तो है कम से कम, ठीक है, बाइनरी सर्च की मतलब ज़रूरत नहीं है हमें, बाइनरी सर्च की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो मैक्सिमम निकालने के लिए तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, मिनिमम निकालने के लिए आई थिंक ज़रूरत पड़ सकती है, बट वही है। अच्छा हाँ, मिनिमम के लिए भी हमें बाइनरी सर्च की ज़रूरत पड़ेगी क्या, मिनिमम के लिए भी आई पता नहीं यार, बाइनरी सर्च की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी आई थिंक। देखो सॉर्ट कर दिया एक बार, तो मेरे को 4 के करस्पॉन्डिंग, अगर मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को सारी 6 की 6 वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो मतलब मैं लूप लगा के भी तो चेक कर सकता हूँ, बट वही दिक्कत है कि मैं लूप लगा के मान लो मैंने 4 के लिए चेक कर लिया, बट अब 9 के लिए कैसे चेक करूँगा मैं, नाइन के लिए मतलब क्या मेरे को फिर से स्टार्ट कर से नहीं चेक करना पड़ेगा, अच्छा ये तो मैं स्लाइडिंग विंडो का वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ ना, कि मैं रिलीज़ करता जाऊँगा, मतलब एक तरफ से मैं एक्सपैंड करता जाता हूँ, दूसरी तरफ से मैं रिलीज़ करता जाता हूँ, ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या मैं, मतलब कि जैसे कि मान लो, देखो ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास है 7, 9 एंड देन मान लो यहाँ पे 15 ऐसे कुछ है, ठीक, मेरे को 4 वैल्यूज़ पे रखनी है, तो मैंने कहा भाई मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू मेरे को 7 मिली, तो मैं 4, 5, 6 एंड 7 मतलब कि 4 वैल्यूज़ इसमें रख सकता हूँ आराम से, ठीक है, चलो भाई ठीक है, मैंने कहा मतलब कि 4 वैल्यूज़ रखनी है, तो 2 वैल्यूज़ मेरे को चेंज करके रखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है भाई, आपने कहा सही है, ठीक, लेकिन मान लो मैं और वैल्यूज़ भी चाहता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 17 भी है, वो भी रखना है मेरे को, ठीक है, तो अब आप 9 तक गए, ठीक, 9 तक जब आप गए तो आपको दिखा कि भाई 9 - 4 + 1 विच इज़ व्हाट, विच इज़ आपका 6, तो 6 वैल्यू टोटल आ गई, आपने कहा मेरे को तो 5 ही रखनी थी, तो मतलब भाई आपका काम हो चुका है ऑलरेडी, ठीक, और 9 आपका हिस्सेदारी नहीं निभा पाया उसमें, बट आपका काम हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं बोलूँगा कि भाई देखो अब 6 था, ठीक है, तो अब आप कुछ चीज़ें रिलीज़ करो, अब मतलब आप 4 रिलीज़ करोगे तो अब आपको 7 को मौका मिलेगा, ठीक, तो आपका इतना रिलीज़ हो गया ना, दैट इज़ 7 - 4, जो भी आपका 7 - 4 में आएगा, 3 वैल्यूज़ आपकी रिलीज़ हो गई, विच इज़ 4, 5 एंड 6, तो आपकी 7 से लेकर 9 तक में 6 - 3 विच इज़ 3 वैल्यूज़ हैं, विच इज़ 7, 8, 9, ठीक, अब आप आगे और बेसिकली इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो आई थिंक हाँ वही स्लाइडिंग विंडो का जो श्रिंक और ग्रैब वाला लॉजिक होता है, आई थिंक दैट विल वर्क।
मतलब दैट शुड वर्क. और आप बेसिकली ये कैलकुलेट भी कर सकते हो कि कितनी वैल्यूज़ आपकी एक्चुअल में बीच की यूज़ हो रही हैं. आई थिंक कुछ तो ऐसा कर सकते हैं हम. भाई साहब वी ऑलरेडी हैव अ 5.5 घंटे की स्ट्रीम. इसीलिए मेरा थोड़ा थोड़ा दिमाग काम करना बंद भी कर चुका है शायद. आई थिंक वी शुड टेक सम ब्रेक. और आई थिंक हम 5 बजे से फिर से एक स्ट्रीम कर सकते हैं जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन देख सकते हैं. क्योंकि वही है अभी मतलब नॉन स्टॉप करने में वही है कि भाई टाइम ज़्यादा ही लगने वाला है. थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे तो आई थिंक फिर हम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक हम इसको यहीं पे थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं. आई थिंक स्ट्रीम बंद कर देता हूँ मैं. इसका पार्ट 2 करके स्टार्ट कर दूंगा दूसरी स्ट्रीम. है ना. मतलब आई थिंक 12-13 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम मतलब अगर करने पे आए तो कर देते. पर हाँ अब देखो बाद के क्वेश्चंस मीडियम और इजी टाइप के ही बचे हुए हैं. तो हम ट्राई करते हैं कि अगर शाम को स्ट्रीम करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर पाएँ. बाकी कुछ ही हार्ड दिख रहे हैं मेरे को. 2-3 ही हार्ड है इसमें. ठीक है तो आई थिंक अभी के लिए इस स्ट्रीम को हम बंद कर देते हैं. एंड देन मतलब थोड़ी देर बाद आई थिंक अराउंड 5 आई वुड स्टार्ट द स्ट्रीम अगेन. ठीक है तो भाई जिसने भी स्ट्रीम देखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया. बट दिस इज़ जस्ट अ पार्ट 1. अभी हम फिर से करने वाले इसकी स्ट्रीम 5 या फिर 6 बजे से हम फिर से इसका पार्ट 2 करने वाले जिसमें अभी देखो हमने यहाँ तक कहाँ तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं. अभी हम बेसिकली यहाँ पर कहीं पे हैं है ना. बट करेंटली हम इम्प्लीमेंट भी करते चल रहे थे. बट अब नीचे के क्वेश्चंस जो है वो देखो इजी वगैरह ज़्यादा हैं. तो आई थिंक हम थोड़ा बहुत ऊपर से डिस्कस कर लेंगे तो भी चल जाएगा. मतलब एक बार ऐसा हो जाए कि हाँ सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं तो थोड़ा सही लगेगा. ठीक है तो भाई अभी के लिए आप लोग भी थोड़ा बहुत ब्रेक ले लो क्योंकि इतना ज़्यादा एक साथ दिमाग में घुसना भी शायद मुश्किल ही हो जाएगा. ठीक है और मेरे लिए भी थोड़ा सा वही हेक्टिक हो जाएगा. तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद दोबारा से स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ. ठीक है भाई चलो भाई बाय बाय. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस.